और जो हाईलाइट है उनकी बैटिंग का, उन्होंने वक्त लिया, प्रॉपर जो स्ट्रोक्स थे अपने वो खेले और ग्राउंड के चारों तरफ इवन कि उन्होंने जो फुटवर्क था वो बड़ा ज़बरदस्त यूज़ किया। कवर की जानिब उनके अच्छे शॉट थे, जहाँ जहाँ उन्हें बुरा बॉल मिला वो हवा में भी गए, जिसकी वजह से जो शो करता है कि वो कितने कॉन्फिडेंट थे कल। इवन के प्रेशर बहुत था लेकिन उन्होंने उस सिचुएशन से अपनी टीम को निकाला और अच्छी बैटिंग की। हारिस सोहेल ने बात की थी अली यूनुस से, आइए आपको दिखाते हैं। हारिस, एक्सीलेंट वाइट बॉल फॉर्म और यहाँ पे भी रेड बॉल में भी फॉर्म आप कंटिन्यू कर रहे हैं, कैसा फील कर रहे हैं? देखिए, आप कोई भी फॉर्मेट हो, जब आपसे परफॉर्मेंसेस हो रही हैं और आपकी टीम अच्छा कर रही हो तो फिर डेफिनेटली आप अपनी परफॉर्मेंस को एंजॉय करते हो। और मेरी कोशिश यही होती है कि मैं जहाँ पे भी खेलूँ वहाँ पे अपना 100% दूँ और अच्छे से अच्छा परफॉर्म करूँ। एज अ क्रिकेटर हारिस, आप मिडिल ऑर्डर में बैटिंग करते हैं, परफॉर्म भी करते हैं, तो अफसोस होता है कि पाकिस्तान टीम स्ट्रगल कर रही है मिडिल ऑर्डर में और आप वहाँ नहीं हैं? देखिए, जिस मुल्क ने आपको इतनी इज़्ज़त दी होती है, इतना प्यार दिया होता है और आपकी कोशिश होती है कि आप जो हमारे पास प्लेटफॉर्म जो है इस वक्त डोमेस्टिक क्रिकेट है, और मैंने जिस तरह आगे भी आपको बताया कि मेरी कोशिश है कि मैं इसको अच्छे से अच्छा यूज़ करूं और जिस तरह की मेरी फॉर्म लगी हुई है इसको कंटिन्यू रखूं। देखें, परफॉर्मेंस हमारे हाथ बस में जो है ना, हम परफॉर्मेंस कर सकते हैं लेकिन सिलेक्ट करना वो सिलेक्टर्स का काम है। और मेरी कोशिश यही होगी मैं जहाँ जहाँ खेलूँ अपना 100% दूँ और अच्छे से अच्छा परफॉर्म करूँ ताकि जो सिलेक्टर हैं उनकी नज़र जो है ना वो मेरे पे आए। इस सीज़न की बात करते हैं, अच्छा स्टार्ट हो गया, 100 भी हो गया, 50 रन भी हो गए हैं, तो आप कितने और रन करेंगे कि आप सिलेक्शन के लिए आपको करेंगे, कंसिडर करेंगे? देखें, मैंने जिस तरह आपको कहा, जिस तरह की फॉर्म लगी हुई है मुझे जहाँ जहाँ भी मौका मिलेगा मैं कोशिश करूँगा कि बैक टू बैक रन्स करूँ ताकि जो सिलेक्टर्स हैं वो मुझे मौका दें फिर से पाकिस्तान टीम आने में। इस मैच की बात करते हैं, कल अच्छी इनिंग खेल रहे थे, पिच कैसा खेल रहा है? देखें, पिच अगर आप देखें, आपने पिछले मैच भी कवर्स किए हैं कि अगर आप अच्छे एरियाज़ को हिट करें तो वहाँ से डेफिनेटली कुछ ना कुछ होता है और फास्ट बॉलर्स के लिए यहाँ पे बहुत कुछ है, लेकिन डिपेंड करता है कि आपके एरियाज़ जो हैं वो कौन से हैं। और अगर जिस तरह देखें, हम लोगों ने आई थिंक 250+ स्कोर कर दिए हैं और हमारी कोशिश है कि इसको जितना मैक्सिमम कर सकें ताकि दूसरी टीम जब बैटिंग करने आए उनको प्रेशर में आए। चलिए, थैंक यू वेरी मच एंड ऑल द बेस्ट हारिस सोहेल। थैंक यू वेरी मच सर। वेल, हारिस सोहेल कह रहे थे कि बैटिंग और बॉलिंग दोनों के लिए इस सरफेस में बहुत कुछ मौजूद है अगर अप्लाई किया जाए खुद को। और यकीनी तौर पर जिस अंदाज से उन्होंने बैटिंग की, उन्होंने दिखाया, शो किया कि जो स्किल, जो टैलेंट है उनके पास, उन्होंने बॉलर्स को अच्छा खेला। और बॉलर्स की अगर हम बात करें सिंध के, तो अर्लियर ऑन बड़ा जम कर खेले, उनकी बॉल हिल भी रही थी जिसकी वजह से आप देख सकते हैं जो इकॉनमी है टॉप पे, मोहम्मद उमर ने अच्छी बॉलिंग करवाई, गुलाम मुदस्सिर बड़े ज़बरदस्त अंदाज में नजर आए, 2 विकेट उन्होंने हासिल किए 69 रन के एवज। और पिक ऑफ द बॉलर अबरार अहमद जो कि 30 ओवर में एक मैराथन स्पेल करवाया, 93 रन के एवज, 3 विकेट हासिल किए। वेल, सिंध की टीम को नील जॉनसन ने ज्वाइन किया था, उन्होंने बात की शाह फैसल से, आइए उनकी तरफ चलते हैं। It's my pleasure to have you, Neil Johnson. You've just joined the Sindh team here for this season, and you'll be here for the entire first-class season and the white ball cricket. How are you looking forward to this? Oh wow! Just look at the weather here; it's incredible. You know, this is where you want to play cricket, and it's been absolutely amazing. These months that I'm going to be spending here is going to be such an incredible time mixing with the boys and just seeing such unbelievably talented players. It's just amazing for me. And you're familiar to the Pakistani conditions, and the Pakistani audience are familiar with you. You had great pedigree when you played. How is it different, the change of roles from a top class player now into coaching? Yeah, no, it's a big difference. Well, when was I here? About 20 years ago, so it was quite a long time ago that I played. But it looks the same. It's just a beautiful place to play cricket. So actually being here, coaching guys and that it's amazing. And what coaching really, most of these boys are so good anyway, so you just try and give them a little bit of something that I know. Okay, and like I said, your playing days, you visited back in the day here and you won that famous test match. We did. Any memories that you can recollect? It wasn't here, but it was out in Peshawar. That was absolutely amazing. We were very lucky. We got a bit of a green top and our boys bowled beautifully on it, and then we played a few shots and managed to win that test, which was an incredible
day for all of us. So yeah. Indeed it was. And looking ahead to this game, first day, you boys got 5 wickets. The new ball was due. It wasn't taken. How are you looking forward to this game? Yeah, what did we have them? We had them about 140 odd, 150 for 5. For 5. That's right. And so we had them. We created some chances still. The boys have bowled beautifully, but that's a good deck. That's a great deck to be batting on. Day 1, day 2 will probably still be very good, and you'll see the game just accelerate from here. But it's an incredible place to play cricket. It just really teaches you to grind it out, and really, if you get in on a pitch like this, there's a big double 100 waiting for you. So how did we do? We did very well yesterday. We put down a few chances, which was a pity, but we're still right in this game, big time. Okay, well, looking forward to seeing you around, and have good luck, and have a great day. Thank you very much. It's wonderful to be here, man. Thank you very much. एक्सीलर नील जॉनसन गो के उनका एक शॉर्ट कैरियर था, 3 मैन ऑफ द मैचेस 1999 क्रिकेट वर्ल्ड कप। और शाह फैसल मौजूद हैं पिच रिपोर्ट के साथ, आइए उनकी तरफ चलते हैं। It's another glorious morning here at the Rawalpindi Cricket Stadium. The sun is out. You could feel the change in weather. The mornings are slightly cooler and players will enjoy that. But if you look at the wicket, we saw 5 wickets fall on day 1. And if you look at day 2 pitch, a close inspection is dried out pretty nicely. You see that the little bit of moisture that was there is gone, and the tinge of green grass is not as green as it was yesterday. Sun was beating on it all day long. Day 2 and day 3 traditionally are the best batting days here in this season. So we look forward to seeing plenty of good batting. New ball will be the key for the Balochistan team because it was due overnight and it wasn't taken. So that is the only thing the batters need to look for, and other than that, they can have a good day here. शाह फैसल बता रहे थे कि नया बॉल की फैक्टर होगा आज के इस मैच में। हुसैन तलत इस वक्त आ चुके हैं सेंटर में, और जो पार्टनरशिप है इनकी वो बेहतरीन रही। 133 बॉलिंग खेल चुके, काफ़ी वक्त इस्तेमाल किया 55 रन में। अच्छी बैटिंग और प्रेशर सिचुएशन में उन्होंने ये साबित किया कि वो अच्छे ऑलराउंड क्रिकेटर है। हसीबुल्ला उनके साथ हैं जो कि नॉट आउट हैं 57 रन पर, 58 इनफैक्ट। 116 बॉलें इन्होंने खेली। जो मुश्किल वक्त था वो भी हसीबुल्ला ने अच्छा खेला हुसैन तलत के तजर्बे के साथ, और लोहा मनवाया। बड़े कूल काम और अपनी स्किल्स दिखाते हुए रहे। और अभी अर्लियर ऑन सेशन का आगाज़ होने को है, और किस अंदाज से वो आगाज़ करेंगे, क्योंकि दूसरी जानिब से एक्सपीरियंस मोहम्मद उमर जो कि गो के विकेट लेस हैं लेकिन एक्यूरेट इनफ। उनका इकॉनमी देखिए, कंटेन किया उन्होंने रन्स को, प्रेशर लाया बैटिंग लाइन पे। फिलहाल अभी नया बॉल नहीं लिया, और इसके साथ साथ आपको फील्ड दिखा रहे। एक स्लिप है, एक गली है, डीप पॉइंट है, कवर, एक्स्ट्रा कवर, मिड ऑफ, और ऑन साइड पे मिड विकेट का फील्डर मौजूद है। काफ़ी स्पेस है ऑन साइड पे, और इसके साथ ही मिड ऑन का फील्डर भी स्क्रीन पे नमूदार हुआ। तो इसके साथ आज के दिन का आगाज हुआ चाहता है बलूचिस्तान वर्सेस सिंध। इमरान जावेद की जानिब से कॉल है प्ले की। पहला बॉल होगा आज के दिन का, सेकंड डे 5वां मरहला। Here we go। मेरे साथ कॉम बॉक्स में इस वक्त टेस्ट क्रिकेटर यासिर हमीद। गुड मॉर्निंग, वेलकम जी। गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू। साजिद आफरीदी। अच्छा मैच रहा दोनों अंपायर्स के लिए, और ये नया बॉल भी ले लिया गया है। जी हाँ, और देखना यह है कि इस नए बॉल की यूटिलाइजेशन कैसी होगी, क्योंकि अर्लियर ऑन कल भी हमने देखा सुबह का सेशन जो है वो बॉलर्स के लिए बड़ा मददगार रहा। और लेग साइड पे आगाज किया। गो के इस वक्त यहाँ से लूजनर भी है, सुबह थोड़ा सा स्टिफनेस होती है क्योंकि जो मौसम है जो पिछले मैचेस की निस्बत अब कुछ सर्द है।
जी हाँ बिल्कुल, और हवा में थोड़ी नमी है, थोड़ी सी ठंडक ज़्यादा हो गई। और कल इन्होंने बहुत अच्छी बॉलिंग की नए बॉल से, उमर ने और गुलाम मुदस्सिर ने भी। आज फिर नया बॉल इनके हाथ में, लेकिन कल बिल्कुल फ्रेश थे। आज थोड़ा सा ये है कि इनकी बॉडी कल के मुकाबले में आज थोड़ी सी स्टिफ होगी डेफिनेटली, लेकिन नया बॉल है, फिर भी अपना काम करके दिखाएगा। ओवर का ख़त्म हुआ 258 पे 5। पार्टनरशिप किसी भी मरहले पे बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं यासिर, और इस कार्ड को देख के क्या एक्सपेक्ट करते हैं मजीद? जी अच्छा बैटिंग कार्ड है। इमरान भट्ट, उन्होंने 60 रन किए। अजीम घुमन अगेन मिस कर गए, वाहिद भी मिस कर गए। असद शफीक अच्छा स्टार्ट मिला लेकिन उसको कैपिटलाइज नहीं कर सके। हारिस सुहेल ने अच्छा 50 किया। अब ये पार्टनरशिप जो है बहुत अच्छी है बलोचिस्तान के हवाले से। गुलाम मुदस्सिर कल बहुत अच्छा नया बॉल किया इन्होंने, 2 विकेट्स हासिल की एक ही ओवर में, और उसके बाद विकेट लेस रहे। मुदस्सिर के लिए 2 स्लिप हैं, एक गली है कवर पे, मिड ऑफ, मिड ऑन, मिड विकेट। फाइन लेग का फील्डर डीप में है, बहुत बाहर, टोटल इन कंट्रास्ट। और वाइट बॉल भी साजिद आफरीदी की जानिब से सिग्नल। टोटल कंट्रास्ट आगाज कल की निस्बत। जी कल नया बॉल, पहला दिन, फोकस्ड, ज़्यादा बॉडी भी फ्रेश थी। आज नया बॉल है लेकिन इन्होंने ऑलरेडी कल 18 ओवर्स किए हैं, तो ऑब्वियसली उस तरह फोकस होता नहीं है। थोड़ा फोकस करना पड़ेगा इन्हें, अपने एरियाज़ को फाइंड करना पड़ेगा। थोड़ा सा बेहतर, थोड़ा सा अंदर आए, लेकिन बेहतर यही होगा खिलाएं उन्हें। नया बॉल है। जी हाँ, एक्यूरेट इनफ। अबरार का जो स्पिन है, 3 विकेट हासिल किए, और एक कॉन्फिडेंस होता है कैप्टन को अपने बॉलर्स पे। तो ये उस तर्ज के बॉलर हैं कि आप किसी वक्त भी आप इनको बुलाएंगे, कुछ ना कुछ करके दिखाएंगे। सऊद शकील यकीनी तौर पर कॉन्फिडेंट होंगे अपने पेसर और स्पिनर से। अच्छा बॉल था ये। ये अच्छा बॉल है बिल्कुल, ये बहुत अच्छी बॉल, बहुत अच्छी जगह है यहाँ से, क्योंकि बॉल बाहर निकलेगा लेफ्ट हैंडर को। थोड़ा स्टंप के अंदर से करें तो इनको रिजल्ट मिल सकता है, लेकिन इस बॉल पे, इस लाइन पे ज़्यादा बॉल करने हैं, क्योंकि यहाँ पे अगर कंसिस्टेंटली बॉल करेंगे तो इनको विकेट मिलेगी। अगर एक बॉल बाहर एक बॉल अंदर तो उस तरह बैट्समैन सेट हो सकता है। जी एग्जैक्टली। और इससे पहले भी हमने देखा जो पहला इवन दूसरा बॉल था, उसने थोड़ा सा बाहर या अवे बॉल खेला। इस दफा फिर थोड़ा सा मूवमेंट था, लेकिन अच्छा खेल गए और रन हासिल किया। और ये बेहतर है कि जिस अंदाज से इस वक्त है बॉलर्स के लिए, बड़े साजगार हालात हैं, तो हुसैन तलत मैक्सिमम सामना करें, क्योंकि कल भी हमने देखा जो मुदस्सिर का बॉल था वो पढ़कर थोड़ा सा अंदर को आया था राइट हैंडर के लिए। हुसैन तलत कल बहुत अच्छा खेले, काफ़ी टाइम लिया, 136 बॉलें, लेकिन किस तरह ये इस फॉर्मेट में अपने आप को होल्ड करते हैं, क्योंकि T20 में एग्रेसिव प्लेयर हैं ये, और इस फॉर्मेट में एकदम से चेंज करना बड़ी बात है। और अच्छा बॉल, बहुत ही अच्छा बॉल। ये लाइन होगी जिस पे मुदस्सिर को कंसंट्रेट करना चाहिए। लाइन में पिच हुआ, बाहर निकला, खेलना पड़ता है बैट्समैन को इस जगह से। बहुत ही अच्छी डिलीवरी। जी अगर इसी लाइन पे ये बॉल करें, इसी लेंथ पे करें, तो एक और बीच में एक स्लिप भी ले सकते हैं कवर के फील्डर को हटा के, या शॉर्ट मिड विकेट।
ये बहुत अच्छी डिलीवरी, एक बार फिर अच्छी बॉलिंग, थोड़ा सा और अंदर से आए। ये जो मिड विकेट का फील्डर है, ये अगर बॉल इधर ही कर रहे तो ये मिड ऑन को वाइड कर दें, फाइन लेग को थोड़ा सा बाहर करके और मिड विकेट के फील्डर को स्लिप में लेके आ सकते हैं, जो कि अच्छा आइडिया होगा, क्योंकि यहाँ से अगर एज निकलता है तो गैप में से जाएगा तो फिर अब बहुत अफसोस होगा इन्हें। जी हाँ, अर्लियर ऑन इन गैप्स को फिल अप करना होगा एक्यूरेट फील्डिंग के साथ। इस दफ़ा मिडल किया और अच्छा ओवर इख्तिताम पजीर हुआ। 85 ओवर हुए, 260 पे 5। क्वाइड-ए-आज़म ट्रॉफी सीजन 2022, इस वक्त जो बाकी मैचेस हैं, सेंट्रल पंजाब वर्सेस ATF सदर्न पंजाब, जो कि फैसलाबाद के स्टेडियम में हो रहा है। फ़हीम अशरफ 67, 61 पे, अजहर अली टोटल 244, 6 के नुकसान पे। और इसके साथ एबटाबाद क्रिकेट स्टेडियम पे खैबर पख्तूनख्वा वर्सेस नॉर्दर्न मध्य मुकाबल है। 175 रन पे खैबर पख्तूनख्वा के लिए और सिर्फ 39 ओवर का खेल हुआ। वेट आउट फील्ड थी। आगे पड़ा हुआ बॉल, इसको ड्राइव किया, गो के इतना अच्छा टाइम नहीं था, लेकिन इम्प्रोवाइज उन्होंने किया, 2 रन हासिल किए। हुसैन तलत की आप बात कर रहे थे यासिर के, जिस अंदाज से उन्होंने खुद को एडजस्ट करेंगे, तो ऑलरेडी एक सेंचुरी स्कोर कर चुके, 115 रन नॉर्दर्न के खिलाफ। अच्छा शॉट था ये। हसीब ने भी बहुत मैच्योर इनिंग खेली है। हुसैन तलत तो खैर काफ़ी अरसे से हैं इस पूरे इसमें, और सर्कल में, लेकिन हसीब का जो है ये पहला सीज़न है और काफ़ी इम्प्रेसिव बैटिंग कर रहे हैं। अच्छा बॉल अंदर आया, अच्छा मैनेज किया आखिर में हसीब ने। काफ़ी प्रोएक्टिव सी इनकी पर्सनालिटी है, विकेट कीपर भी हैं और यंगस्टर अंडर 19 वर्ल्ड कप खेले थे लास्ट। अच्छा प्रॉस्पेक्ट है, ये लोकल प्लेयर हैं बलोचिस्तान के और एक अच्छी इनिंग खेल रहे हैं, मैच्योर इनिंग खेल रहे हैं, इनसे इनको बहुत फ़ायदा होगा। अच्छा बॉल, एक बार फिर थोड़ा सा मूवमेंट जो है इनकी, ज़ाहिर है पुराना बॉल खेलें तो अब नया बॉल है, इसमें थोड़ा सा इनको एक्टिव खेलना पड़ेगा, थोड़ा लेज़ी खेलें इस बॉल को। स्टंप्स की तरफ जा रही थी, लकी रहे कि बॉल पाँव के साथ लग गया। जी यासिर, जो बॉल का डिफरेंस है, कल जो उन्होंने खेला ओल्ड बॉल था, इस वक्त नया बॉल है, शाइन, इसकी हार्डनेस, तो उस हिसाब से खुद को जल्दी एडजस्ट करना होगा। एक और बहुत अच्छी डिलीवरी, स्टंप टू स्टंप की बॉल स्विंग होकर अंदर की तरफ आ रहा था। लकी रहे, गैप नहीं बना। मोहम्मद उमर, बड़ी इनकी ये क्वालिटी है, स्टंप्स में बॉल करते हैं एक्यूरेसी के साथ। और एक बार फिर अच्छा बॉल, अच्छा ओवर कर रहे हैं उमर। और सिंध की टीम इस वक्त यही देख रही होगी, अगर इनको 300 के अंदर रिस्ट्रिक्ट कर लें किसी तरीके से तो अच्छा होगा बहुत। अगर थोड़े से ऊपर भी हो जाते हैं रन, क्योंकि लास्ट मैच जो खेले हैं वो, उससे उनको ये आइडिया हो गया कि हम लीड लेके किसी भी टीम को प्रेशर में लेके आ सकते हैं। इनके पास एक स्पिनर बहुत अच्छे, आउटस्टैंडिंग, अब्रार अहमद, मोहम्मद उमर एक्यूरेट हैं। बहुत ही अच्छा बॉल और अच्छा छोड़ा। 262 पे 5।
जी हाँ, बहुत ही उम्दा बॉलिंग उमर की, जैसे यासिर बात कर रहे थे, एक्यूरेट इनफ, बहुत क्लोज था और पीछे जाकर अंदर की जानिब हुआ। विकेट कीपर ने इसको अच्छे हाइट पे टेक किया। तो इस वक्त इस नए बॉल को प्रॉपर यूटिलाइज करना होगा। 262 पे 5, 86 ओवर्स के बाद। मुदस्सर भी मुतलाशी हैं अपनी पहली विकेट की आज के दिन के। ओवरऑल उन्होंने 2 कामयाबियां समेटी थी, स्पेयर हेड, और उनके पास ये एबिलिटी है कि अर्लियर ऑन इस नए बॉल से वो 1-2 विकेट हासिल कर पाए, और वो माइट बी स्विंगिंग डिलीवरी से। इस दफ़ा बॉल थोड़ा सा बाहर रखा। वैसे यासिर, क्या बेहतर है कि जिस तरह से आप अभी बात कर रहे थे कि ऑफ स्टंप से थोड़ा सा बाहर, या फिर विकेट टू विकेट? विकेट टू विकेट करना चाहिए, क्योंकि बॉल जो है इनका बाहर निकल रहा है, वहाँ से अगर थोड़ा सा स्विंग उसको बैट्समैन फॉलो करता है तो चांस है कि स्लिप्स की तरफ जा सकता है बॉल। बाहर से करेंगे तो वो बाहर, क्योंकि बॉल बाहर निकल रहा है तो बैट्समैन के लिए आसान है वहाँ से छोड़ना। तो ऐसी जगह से करें जहाँ से बैट्समैन को खेलना पड़े, स्टंप से करना चाहिए बॉल। अगेन 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 फिर बाहर है बॉल, और ये जैसे यासिर अभी कह रहे थे कि विकेट टू विकेट बेहतर लाइन है कि वहां से अगर कोई बॉल मूव होता है तो माइट बी बैटर के लिए सरप्राइजिंग फैक्टर हो। ये देखिए यहाँ से आसान है हुसैन तलत के लिए, क्योंकि एक तो उनका विकेट के बहुत करीब से कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। इस तरह उनकी आई साइड सेट होगी इस नए बॉल से। अगर बल्ले से खेलेंगे तो वो इस डाउट में रहेंगे कि यार कहीं स्विंग ना हो जाए, तो बल्ले से खिलाना बहुत ज़रूरी है। और एक आध बीच में बाउंसर भी कर सकते हैं थोड़ा सा सरप्राइज़ करने के लिए। ये चीज़ हमने बिल्कुल नहीं देखी नए बॉल से। और ये आगे किया बॉल, पहला बॉल जो उन्होंने स्टंप्स में किया, बाहर की तरफ निकले बॉल बाहर की तरफ निकला और ऑफ स्टंप को हिट किया। और इस तरह गुलाम मुदस्सर ने एक अच्छा ब्रेक थ्रू दिया सिंध की टीम को। ये देखें, आप ऑन खेलने चले गए थे। यही चीज़ मैं जो कह रहा था कि आगे बॉल करें, स्टंप्स के अंदर करें तो सरप्राइज़ मिलेगा। तो वो सरप्राइज़ जो है वो हासिल करने में कामयाब हुए गुलाम मुदस्सर। हुसैन तलत 55 रन बना के आउट हुए, 262 पे 6। Needed. काशिफ भट्टी नए आने वाले बैटर, अच्छे ऑलराउंड क्रिकेटर है, लेकिन इस वक्त जिम्मेदारी होगी उन पे। 104 मैचेस, 3400 रन है उनके पास, 158 बेस्ट। और जो इस वक्त सबसे मेन बात है वो है इस सेशन को गुजारना, बीइंग अ बैटर, कि आप किस तरीके से कोप करते हैं सिचुएशन को, क्योंकि बॉल हिल रहा है। और गुलाम मुदस्सर बड़ी अच्छी फॉर्म में हैं। कल भी इन्होंने अर्लियर ऑन 2 खिलाड़ी जल्दी आउट किए, इस वक्त भी 1 विकेट ले चुके। कॉन्फिडेंस लेवल इनका हाई है और इन्हें इस चीज़ का अंदाज़ा है कि बॉल आगे रखेंगे विकेट टू विकेट तो उनको ज़्यादा रिजल्ट ओरिएंटेड मौके मिलेंगे। स्विंगिंग डिलीवरी काफ़ी अपील करते हुए गए, लेकिन दरमियान में रुक के उन्हें आइडिया हो गया कि लेग साइड पे बॉल जा रहा था। क्या देखना होगा, बिल्कुल लेग स्टंप के बाहर था, ऊपर थोड़ा शायद हाइट का भी था। ये अच्छी लाइन है, थोड़ा सा और 1 फुट और इधर से अगर करें ऑफ स्टंप से तो ये फिर अंदर आता हुआ बॉल को काशिफ भट्टी काफ़ी इनको प्रॉब्लम होगी। काशिफ भट्टी अपना तीसरा मैच खेल रहे हैं इस सीज़न का, ट्रॉफी का। अमंग द रन्स नहीं है,
इस दफा स्विंग जरूर हुआ लेकिन नो बॉल अंपायर की जानिब से। साजिद आफरीदी और मुदस्सर की जो बॉलिंग है बहुत जबरदस्त अर्लियर ऑन, जो पेस जो स्विंग इनको मिल रहा है। या देखिए ऑन खेलने गए थे क्योंकि वो डिसीव हो गए थे स्विंग में, बहुत आगे गिरा हुआ बॉल था, उनके बाद डिसीजन लेने का टाइम नहीं था। सीधा खेलते तो शायद बच सकते थे, लेकिन वो कमिट कर गए थे। वो समझे कि लेग स्टंप पे बॉल, तो ये फ़ायदा होता है आगे बॉल करने का अगर आप बाहर निकाल रहे हैं तो। दोबारा अपील करते हुए, लेकिन लेग साइड पे इम्पैक्ट होगा शायद इस बॉल का भी। अच्छी एम्पायरिंग साजिद आफरीदी की, क्योंकि अर्लियर ऑन बॉल जो है इस वक्त काफ़ी ज़्यादा मूव हो रहा है और काशिफ शायद चेक खेलते हुए देखें थोड़ा सा एयरबॉर्न भी हुए। जब फिर बॉल जो है वो मिडिल स्टंप से स्विंग कर रहे हैं तो लेग स्टंप पे जा रही है, थोड़ा सा ऑफ स्टंप से आए अगर तो स्विंग तो इनको मिल रहा है। इस वक्त 2 स्लिप और 1 गली है। अगर शॉर्ट लेग की पोजीशन पे एक फील्डर कैचिंग पे आए तो माइट भी कहीं ना कहीं इस तरह का जो बॉल है जो कि वो लेग स्टंप पे ड्रिफ्ट कर रहा है थोड़ा सा, इसमें प्रोडक्टिव हो। फ्रंट फुट निकाला जरूर था इस दफा, लेकिन बल्ले का कनेक्शन हुआ। जी हाँ बिल्कुल, और ये कवर का फील्डर भी मेरे ख्याल से स्लिप में जाना चाहिए और शॉर्ट मिड विकेट का फील्डर शॉर्ट लेग पे आना चाहिए। ये थोड़ी सी फील्ड एडजस्टमेंट्स हैं। देखें इनकी टांग बिल्कुल इस तरफ आ रही है, क्रॉस आ रही है, अच्छे चांसेस हैं शॉर्ट लेग के भी। ले लिया है शकील, आ गए हैं सऊद। और ये ओवर जो है वो इख्तिताम पजीर हो गया। आई गेस 263 पे 6। बहुत बाहर हसीबुल्ला को रखते हुए बॉल। उमर ये अच्छे बॉलर हैं, इन्होंने कंटेन किया कल, गो के विकेट नहीं ले पाए लेकिन एक्यूरेट इनफ थे। और इस वक्त जो नया बॉल है दोनों पेसर्स को चाहिए, जैसे यासिर अभी बात कर रहे थे कि अगर विकेट टू विकेट रखें और उन्हें रिजल्ट भी मिला तो उस चीज़ से सीखना होगा अर्लियर ऑन, क्योंकि 60 मिनट माइट भी 120-30 मिनट के बाद जो बैटिंग है वो सहल हो सकती है। एज हुआ इस दफ़ा लेकिन सॉफ्टली इसको खेल गए डेलिबरेटली नीचे की तरफ, इतना ज़्यादा हार्ड एज नहीं था। ऐसा जो बॉल होता है वो स्लिप के जो फील्डर होते हैं उनके हाथ पे जाके जब लगता है तो काफ़ी नीचे होता है, लेकिन बहुत अच्छा रोका साद ने। अच्छी कैचिंग की है इन्होंने स्लिप में, अच्छे फील्डर हैं स्लिप के साद खान। ये भी अच्छा बॉल था लेकिन अच्छा खेले, और साद कुछ देर बाद हाथ जो है उसको हिला रहे थे, जो आपने बात की कि बॉल लगती है जात के। और यहाँ पर प्रॉपर बॉल को इस्तेमाल करना होगा। ये देखिए काशिफ को जो बॉल की है अभी लेग स्टंप पे पिच हुई। जी बिल्कुल, अभी भी इनकी जो लाइन है वो मिडिल स्टंप से है। इसको इनको और इस तरफ से, ये बॉल ठीक था, बेहतर था, अच्छा बॉल था। थोड़ा सा और आगे करें, इनवाइट करें स्टंप्स के अंदर से, वहाँ से इनको स्विंग मिलेगा और वहाँ से चांसेस हैं। अच्छा छोड़ा आखिर में। उनको भी चाहिए कि ये भी स्टंप्स के अंदर बॉल रखें, क्योंकि न्यू बॉल जो है वो बड़ा काउंट करता है ऐसी सिचुएशन में। अभी 10 ओवर्स तक इफ़ेक्टिव होगा
और इसके अंदर ही इनको आउट करना चाहिए। जी हाँ, 2 स्लिप 1 गली, पॉइंट कवर, मिड ऑफ, मिड ऑन, मिड विकेट और डिफाइन लेग। ये अच्छा बॉल था और इतनी अच्छी शॉट, एक्सीलेंट, सीधा बल्ला और उसके साथ टाइमिंग बहुत खूबसूरत थी। 4 रन बटोरे। बहुत ही अच्छा शॉट, फुल फेस ऑफ द बैट, और ये ऑलवेज अच्छा शॉट होता है ये वाला, स्ट्रेट डाउन द ग्राउंड। गुड टू सी, बहुत ही अच्छा शॉट। इस बार थोड़ी सी लाइन जो है वो लेग स्टंप पे थी, 1 रन हासिल किया। जो इनिंग्स आगे बढ़ रही है, हसीबुल्ला का एतमाद भी बढ़ रहा है। 268 पे 6। खुरम शहजाद, नजीबुल्ला को आना बाकी है, लेकिन काशिफ भट्टी को यहाँ पर अब शराकत बनाना होगी, क्योंकि देखिए अब बॉलर भी थोड़ा थोड़ा सा वक्त दे रहे हैं बैटर्स को, बॉलें बाहर रखकर इसको इम्प्रोवाइज करना होगा। बड़े कूल कस्टमर हसीबुल्ला खान, लेकिन दूसरी जानिब देखना होगा कि कितना मूवमेंट मिलेगा इस ओवर में। मुदस्सिर को ये बॉल गो के आगे फेंका और देखिए थोड़ा सा ऐसा लग रहा है कि जैसे आप पहले भी बात कर रहे थे कि हसीब ने जो वक्त गुजारा है वो आप बॉल को आसानी से देखना शुरू हो गए। जी सेम सॉर्ट ऑफ डिलीवरी थी जो हमने हुसैन तलत को देखा, यहीं पे बॉल गिरा था, लेकिन वो ये शॉट देखें जी, ऑन ड्राइव जो हसीबुल्ला ने के अंदर आ रहा था बॉल। ऐसा शॉट जब अर्ली ऑन बैट्समैन मारते हैं तो बहुत अच्छा फील करते हैं। वैसे यासिर आपकी भी ऑन ड्राइव बहुत पॉपुलर थी और थोड़ी सी झलक नजर आई जब बल्ला सीधा और हाई एल्बो था। कमबैक किया, बहुत अच्छी डिलीवरी इस बार जी इजाज, बिल्कुल मिडल होता है ये बॉल, और ये बॉल देखें बहुत ही अच्छा स्टंप्स में पिच हुआ, बाहर की तरफ निकला, लेंथ ऐसी थी कि उन्हें हाफ कॉक ही खेलना पड़ा। वेल यकीनी सोच में है कि एक और विकेट निकाल पाए, लेकिन अदर एंड से आपको तारीफ और दाद देना होगी हसीबुल्ला की कि यंगस्टर जो कि इस फर्स्ट क्लास क्रिकेट के हॉरिजन पे आया और अब तक छाया है 66 रन पे, वॉचफुली, बहुत वॉचफुली। और वही बात इस वक्त जो हमने देखा कि जो ऑन ड्राइव है यासिर, जो हमने अभी कुछ देर पहले ऑन ड्राइव देखी, सीधा बल्ला, इंग्रेडिएंट्स क्या होने चाहिए एक अच्छी ऑन ड्राइव के? बॉल का वेट करें और टाइमिंग बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इसमें ऑन ड्राइव में ये है कि जिस तरह बॉल स्विंग हो रहा है, थोड़ा सा अगर आप मिस टाइम करेंगे तो इनसाइड एज हो सकता है। आपका फुल फेस होना चाहिए बैट का, आपका बैलेंस अच्छा होना चाहिए, वेट अच्छा होना चाहिए, फोर्स होनी चाहिए पीछे से। जो आपका ये फ्रंट एरिया है, जिस तरह शोल्डर हो गया, फ्रंट एल्बो, क्योंकि ये इससे अपर हैंड से लगता है ये शॉट। और या सर कोई फ़र्क होता है, जैसे हम इंग्लिश ग्राउंड देखते हैं थोड़ा सॉफ्ट ग्राउंड होता है, एशियन थोड़े हार्ड हैं, इसमें भी जो फ़र्क पड़ता है स्ट्रोक्स खेलते हुए पिचेस पे? इनफैक्ट जी डेफिनेटली सॉफ्ट पिच पे ये है कि आपको इस तरह की शॉट्स सॉफ्ट पिचेस पे मुश्किल से लगती है, क्योंकि उसमें बॉल होल्ड होता है, और जिस तरह हमारी पिचेस हैं यहाँ पे ये शॉट्स खेलना आसान है। इस दफ़ा डाउन साइड सिर्फ देख सकते हैं कि किस तरीके से इस वक्त बैटर्स जो हैं वो एंजॉय कर रहे हैं लग्जरी ऑफ मोमेंट।
आसान है बैटिंग, और इसलिए कहा जाता है कि शायद जो लाइन है देखें ऑफ द पैड्स कि एशियन बैटर जो हैं वो ऑन द पैड अच्छा खेलते हैं। ये बॉल सीधा रहा थोड़ा सा और स्विंग नहीं हुआ इस बार, और अच्छा उसे मैनेज किया आखिर में हसीबुल्ला ने। मैं सोच रहा था अगर एक एंड से, अभी तो बॉल नया है बट काशिफ भट्टी जो है वो नए नए आए हैं, तो इब्रार को भी ट्राई कर सकते हैं। अगर एक्यूरेसी वो नहीं है क्योंकि एजेस निकलने चाहिए, नया बॉल है, हमें पता है थोड़ा सा टाइम मिल रहा है इस वक्त, उस तरह रिजल्ट्स नहीं आ रहे जिस तरह आने चाहिए। एक विकेट तो ले ली है बट ये बहुत ही क्लोज होगा और ये आउट। काशिफ भट्टी राइट इन फ्रंट, एक बॉल जो जगह पे घिरी और वही आउट हो गए, वहीं पे काशिफ भट्टी आउट हुए। दो बॉल्स ऐसी की हैं जो कि विकेट वाली बॉल्स थी, दोनों पे विकेट मिली। गुलाम मुदस्सिर को चौथी विकेट हासिल की अपनी इनिंग्स की। ये देखें आगे का बॉल था, पीछे खेलने गए, कोई फुटवर्क नहीं था, सिर्फ बल्ले से खेलने गए थे और आसान डिसीजन साजिद आफरीदी के लिए। काशिफ भट्टी कोई रन बनाए बगैर पवेलियन वापस 269 पे 7। खुरम शहजाद इस वक्त नए आने वाले बैट्समैन हैं, नंबर 9, और एक अच्छा मौका है गुलाम मुदस्सिर के लिए अपनी 5 विकेट्स हासिल करने का। चौंतीसवां मैच, 482 रन। अब देखना यह है कि कितना वक्त स्पेंड करेंगे। सऊद शकील खैरियत दरियाफ्त कर रहे हैं और ओवर का हुआ था इख्तिताम जिसकी वजह से नॉन स्ट्राइकिंग एंड पे हैं। और विकेट लेने के बाद कॉन्फिडेंस लेवल अप होना चाहिए। गो के इस वक्त हम देखें कि उमर जो है विकेट लेस हैं, उनके पास एक अच्छा मौका है कि यहाँ पर कामयाबी समेट पाएँ, लेकिन हसीबुल्ला सीधे बल्ले के साथ इवन स्विंग को भी अच्छा खेल रहे हैं। आगे पड़ा हुआ बॉल, शॉट ऑफ लेंथ, एक फील्डर हमें डीप पॉइंट पे नजर आ रहा है। इस तरह आउट हुए काशिफ भट्टी। आगे घिरा हुआ बॉल, पीछे खेलने गए और बीट हुए और स्टंप्स के सामने बिल्कुल एक आसान फैसला साजिद आफरीदी के लिए। अच्छी बॉलिंग गुलाम मुदस्सिर की। Beautifully driven, but straight to the fielder. It's been that kind of a morning for Hasibullah. He's hitting them well, but straight to the fielders. 269 for 7 Balochistan. They've lost 2 wickets early on with the new ball. Both wickets going to Ghulam Mudassir. Some beautiful bowling by him. But Hasibullah has stood tall for his 67 runs as I've been joined by Shah Faisal alongside me. A very good morning, Faisal. Very good morning, Ali, and very good morning all. He's bowled him, the wicket that he's been searching for since morning. Umar, he's bowled beautiful line and length, and this time it has paid off. Off stump goes Kilwa, goes for a walk.
Yeah, that angle is very difficult to handle for the left armers. The ball coming in and then straightening off the straight. Wide of the crease, that angle, he was always playing inside, and the right foot never come across to cover the line of the ball, and this off stump came right out of the ground. Umar celebrates. He deserves the wicket. He's been the most consistent bowler for Sindh. Hasibullah playing a very good hand. He's now been dismissed for 67, 269 for 8. Najibullah, the new batter in, although he's in the team for his bowling capabilities, but he's got a job to do with the batter, because Balochistan have lost 3 quick wickets without adding much runs here in this morning session. Just 269 for 8 now. It's up to these two. Kashif Bhatti also lost his wicket. It's Khurram Shahzad and Najibullah, the 2 fast bowlers in. They've lost 3 wickets in space of 7 runs. 267 for 5, 269 for 8 now. Both the batters, they haven't faced a single delivery. Not much credentials with the bat for Najibullah. His best of 5. There must be some cheap wickets around for these bowlers who've worked really hard, especially Umar. 1 for 36 of his 21.3 overs now. That's a good ball. Right within the wickets. That's where you need your fast bowler to be, especially with that new ball. Just make the batter play. Yes, as you said, Umar has bowled really well. This one was the latest victim, Hasibullah. Just a touch outswing after pitching. Just enough to beat that outside edge, because Hasib was lining up for the in-swinger, although his footwork was not good on the walk. But that angle away was enough to defeat him. Splendid delivery. Another one, knocked him over. Beautiful bowling. That is top class by Umar. 2nd wicket of the over. Wow, what a pitch. An absolute waste on a number 10. It could have really knocked out any top order batter. It was that good. Splendid bowling once again. Umar angling the ball in and straightening it now in the other direction. And Najib played down the wrong line. Top of off, this is what the bowlers aim for. Top of off, this is what he hit. Najib gone for a duck, 269 for 9. Akif Javed is the last man in for Balochistan. They've lost 4 wickets now since morning. A quick visit to pitch from Najibullah goes without scoring. And now it's up to these two. But it has been such a wonderful morning for Sindh bowlers. Both of them getting 2 wickets each. Ghulam Mudassir 4 for 73. Mohammad Umar 2 for 36. Fantastic. Yeah, that new ball
was meant to do the damage, and it has, thanks to some brilliant bowling. Best of 20, Aqib Javed. A bit better than Najib, but still he's batting at number 11. This could all come down to a very quick close here. 3 slips now in place. New ball doing the trick every now and then for Sindh. The new ball bowlers have been brilliant. Ghulam Mudassir deserves a fifer. He's taken 4, but so does this man. He's bowled beautifully well too. Akif. Oh, that's a good one. Right in that channel. Disappointed length, not quite right. It's 269 for 9. What an eventful last over we just witnessed. Mohammad Umar has been brilliant throughout the season. This was the latest. This one, Asifullah played all wrong line. The next one, Najibullah beaten by pace and line also. That is wonderful bowling. This is what Saud would be hoping from his new ball bowlers, and they have delivered with the new ball. Sindh, you feel, will be in the driver's seat now. 269. They're ahead on the count for the bonus points as well. They get this last wicket very cheaply. They would have earned 4 bowling points. What was that? Trying too hard, Ghulam Mudassir. Relax, you got 6 deliveries to get this tail-ender out. Got enough deliveries. It's just a matter you had to bowl in that line and length within the wickets is the key here. Ghulam Mudassir has been a revelation in this game. He played in round 3 and then set out the next game because of an eagle, replacing Mir Hamza in this game. He's really stood up tall and responded to the call of his captain. Especially with the new ball. Got 2 wickets with the first new ball, and he struck early this morning. Absolutely, and how many times we've seen that new ball doing something for the bowlers. Ghulam Mudassir, as you just said, a couple of wickets with the first new ball, and then with the second new ball this morning, taking a couple of wickets, important wickets. Hussain Talat, the first one. That was a beautiful delivery. I got rid of Hussain Talat. Almost. Another one. Indeed. Well, if you're looking ahead, well, before that, Ghulam Mudassir, you're talking about his contribution with both the new balls this morning. Remember, the partnership was 110 runs overnight, but this was absolutely terrific. Look at that late movement and that full length. Castled, and this one also good movement and that fuller length, paying rich rewards. Sajid Afridi had to make an easy decision. Change of angles, round the wicket to Khurram Shahzad. Was there a need of changing the angle at this moment? I wouldn't have thought so, because he's getting the ball to shape in. You've dismissed top order batters, and now for a tail ender, just keep it simple. Just execute your plans like you did to the top orders. If top order can't face you, I'm sure the tail ender will find it harder. Maybe he's looking to get through those defenses with the angle. That's what he can think of. Saim Ayub, he will be thinking, because he will be out there very soon if nothing heroics happens from Balochistan tail-enders. He's bowled him. A fifer, a well-deserved fifer for Ghulam Mudassir. He's been brilliant throughout this inning. With both new balls he has delivered. It's an exceptional fast bowling spell from an exceptional bowler. He thoroughly deserved it, and he's got that. Wow, wonderful. Great scenes here. This young bowler, he's been in the wars, not always
remaining fit and the opportunities have been limited. But he's delivered wide of the crease and into the pads and onto the stumps. And the Pfeiffer, which was really impactful Pfeiffer. And that's what helps the team to win matches. And this is what Ghulam Mudassir has done for his side. Yeah, the credit has to be given to Umar also, who's hugging him at the moment, because it was him that put pressure from one side and Ghulam Mudassir got the wickets from other side. He has finished with 2 wickets and Ghulam Mudassir finishing it with 5 wickets. 3 wickets going to Abrar Ahmed. It has been such a thorough professional performance by Sindh side, bowling out Balochistan on 269. There was a long conference in the middle as well from Sindh. Probably they weren't sure what kind of roller they want to take because they've rolled over Balochistan inside 40 minutes of this second morning. But the plaudits will be taken by Ghulam Mudassir. He's got the ball. He's leading his team out of the park. Thoroughly deserved. Yeah, we all expected the wickets to fall, but that quick, that early, that was not expected. 5 wickets going down inside first hour of the play. Courtesy to this man on your screen. He's got 3 wickets this morning. Got the 5er alongside Mohammad Umar, who got 2 wickets this morning. It has been a brilliant performance by Sindh side, and they will definitely feel that they are in a commanding position in this game. That's how the scorecard looks like. 27 by Asif Shafiq, 50 by Haris Sohail, 55 by Hussain Talat, Sibullah scoring 67 and 60 by Imran Bar, top of the order. But look at those last 4, 0, 0, 0, 0. I think that has been the real disappointment. The tail not showing any resistance against this quality fast bowling of Sindh and bundling out on 269. 5 ducks in the innings. Balochistan's innings. This is the first one. Azim Ghumman, slight unlucky that catch, but this was a peach. Bangalzai was new at the crease, didn't know what hit him. Asad Shafiq really threw it away. So did Imran Butt. Got too close to the ball. That shot wasn't on. And same can be said about Haris Sohail. After looking so good, he just gave it away. And this is this morning. You cannot fault Hussain Talat for that. Neither Kashif Bhatti. Those were absolute pearlers. So was this. Hasibullah was fighting hard. Since bowling has been magnificent this morning, no shame in being dismissed by such quality bowling, especially if you're a lower order batter. And a much deserved Pfeiffer. And a good thing is that by getting dismissed so early, like we see Umar now 2 for 36, 5 for 73 for Ghulam Mudassir, the standout bowler, and 3 for 93 for Abrar. The game has moved on very quickly this morning, Ali. Yeah, also what this bowling card has done is that they've not put much pressure on Abrar Ahmed. There are other bowlers taking 5ers, couple of wickets to Mohammad Umar. So Abrar Ahmed can take that relief. It's 269 is Balochistan could manage. We're going to take a short break. We'll see you in a bit.
Welcome back to the beautiful Rawalpindi Cricket Stadium. It's round number 5, day 2, Balochistan taking on Sindh. A lot has happened this morning. 5 wickets going down. This is how the scorecard looks like. Imran Butt losing to Abrar, 60 runs he scored. 27 was scored by Asif Shafiq. Haris Sohail scoring a 50 and losing his wicket to Santalat, also scoring 55. 67 for Hasibullah. Rest, you can all see. Let's have a look how the wickets fell for Balochistan. The first one to go was Azim Kuman, and then it was a peach of a delivery. That was a wonderful delivery by Ghulam Mudassir, just nipped back in. Ibrar Ahmed then taking Asad Shafiq's wicket. It was a loose shot, not just one, couple of them. Imran Butt also, a loose shot by him. Haris Sohail also just wanted to dominate Ibrar. That was not a good idea, losing his wicket. And then this morning, Ghulam Mudassir happened to Balochistan side, bowled a beautiful line and length. This was the delivery of his spell, just nipped back in enough. And Mohammad Umar joining Ghulam Mudassir in those wickets. A beautiful delivery to get rid of these two batters. Najibullah also. This one was the last one. Changing the angle, Ghulam Mudassir taking the much deserved fifer. He's bowled beautifully throughout this inning of Balochistan. That's the bowling card. 2 wickets for Mohammad Umar, 3 wickets for Abrar, but the star was Ghulam Mudassir taking 5 wickets for 73. And Balochistan was all out for 269. Well, Umair bin Yusuf is at the top of the order because Khurram Mazur now is not playing. We've seen Umair open before, so not new to opening the innings. 550s and 700s. Look at that conversion rate. Just getting past the 2,000 runs in the previous game. He's coming off the back of 200s. But Ali, let me just say this, that it's not too bad for Balochistan to be bowling that early in the morning with still that cold weather around and the new ball. Probably they can make inroads as well inside the first hour on day 2. Absolutely. And Khurram Shahzad is the right sort of a bowler for these conditions. 34 matches, 94 wickets. Best of 6 for 37. Yeah, we're just inside the first hour of the play. It was not expected that Balochistan would be bowling that early in the inning. Courtesy to a wonderful spell by new ball from Umar and Mudassir. Here's Khurram Shahzad bowling the first delivery to Umar. Right on the target. Right on the target. Yeah, Balochistan played here in the second round, so they will have a fair idea of these conditions. It just needs to be seen that how good the execution is. This man must be a happy man, Neil Johnson. He was the one who could use the new ball himself. He'll be proud of his bowlers, the way they use the new ball. And also he's brought some luck for Sindh, I tell you. The performance has changed since he has joined. It's a good start by Khurram. So definitely the credit has to be given to Neil Johnson. The first day he joined the team, Sindh won. And now in the second game, first day, it is all happening. They bundled out Balochistan on 269 in a commanding position. They must not lose this grip. Yeah, the conditions are good. They just have to see the new ball through. And then they have so many stroke players. They can really bat big. Day 2 and day 3, traditionally good here for batting in this season. But Khurram is up against Umair bin Yusuf, who's been in wonderful touch. He's just been the player to watch out in this tournament. He scored lots of run. Not just red ball cricket, but he was wonderful in that National T20 Cup, in white ball cricket, and he is continuing that form here in red ball. Couple of hundreds there in this ground. But that 100, Shah Faisal, that he scored against Southern Punjab in the 4th inning of this game, I think that was a wonderful inning. Match saving, definitely. He's shown that courage. And he won't mind opening the inning because he's used to it. He's already done that. And when I spoke to him in the previous game, and he was of this opinion that I can open. I have opened at under 19 and list A also. So it might not be a bad change. He's technically so correct that he can play anywhere in the order. And as a modern day batter, especially making your way into reckoning,
of national team. If you show that versatility, it definitely gives you an edge over your peers. First run for Sindh. Umar bin Yusuf is off the mark. So is Sindh. He seems like a player of all formats. And she's showing that how important the defense is to any player. Because once you are solid in defense, you can play any sort of cricket. And best example is Umar bin Yusuf. Yeah, you're absolutely right. He's solid. And also the range of strokes that he has. He's very good off the back foot. Horizontal bat strokes. But this man has definitely caught the eye of everyone with the white ball, now with the red ball. Scintillating passage of play if he gets going. Straight away runs for him. This is what he's so good at. Always searching for runs, always looking for runs. He's got that flair in him. We have to say this. He's an absolute star. In the first delivery, he's looking to hit on the up. He's got to be a bit careful at the beginning of the innings. We've seen that you can hit through the line on this pitch as the season has progressed, but still you'd have to give about half an hour to that new ball before you can do that. And on this Pindi pitch, you can do that. 3 for none. He will have to be spot on, Asad Shafiq, the Balochistan captain, with his decisions. Because they have not scored many runs. It's up to this man, Najibullah. He's got a fifer already in this tournament. 11 wickets for him. Still new at this level, but he's got something in him. Najibullah. You remember we saw him last year, and he did have some promise. Be interesting to see how he's developed over that 1 year. And like you just mentioned, he's already got a fifer in the last round. These conditions, he didn't play last time around here. So these conditions, he would love bowling here, especially with this new ball. Keep an eye. He's well built. He looks like a good athlete. No ball. No ball. This is where they should be very careful. Because they have not scored many runs. You got to be on target every time. You don't want to be getting a wicket of a no ball. Wickets are hard to come. It's not easy. Close look at his run up in action. Good gather. Slow to start off, but then it's pretty rhythmical. Gathers in pace as he hits the crease. Slightly falls away. Slightly bend on that front knee. This is what we saw last year as well. And also we saw that he was falling away on the crease when he hit the crease. Last year it was a bit more pronounced. This year he's worked on it. It's not as much. But we'll have to keep an eye as he gets tired. Will he do the same? That means that he will push the ball to the leg side and he will lose his consistency. Spot on. Touch high. It's a good start from Najibullah. Is making the ball move a little. It's going to be such a big challenge for these two batters. This one again nipping in with the angle. Wide of the crease, it looks like in swing. Here's his stock delivery. But that was pretty significant, the way he fell away and had to bowl from wide of the crease. He's got a job to do with this new ball especially. A couple of early wickets. It's all Asad Shafiq is asking for as a captain. He's got 3 slips placed, a gully, point, mid-off, mid-wicket also in place.
The problem that Balochistan bowlers will face is the defense of Umair bin Yusuf. He's been so good with that. He's technically very correct, temperament also there, skill is definitely there. And when the time comes, the flair is also there. We know that he's capable of scoring quick runs also. Oh, absolutely. Like I said, he's got a range of strokes, very solid and tight defense. At times he chases those wide deliveries early in his innings, but looks like he's tightened up on that too. Leaves the ball too. Umair bin Yusuf. This partnership of Umair and Saim, how does that look like? Umair bin Yusuf, of course, replacing the great Khurram Manzoor. It's not easy. What do you make of this pair? Very exciting. Definitely. Stroke players, pleasing on the eye, and very, very watchable if they get going. They run well. Wasn't that far from the wicketkeeper. End of the over. 4 for none. खुर्रम शहजाद मीडिया एंड से अपनी बॉलिंग जारी रखेंगे। उमैर बिन यूसुफ आज ओपनिंग कर रहे हैं। खुर्रम मंजूर इस मैच में नहीं है। खुर्रम मंजूर ने सेंचुरी स्कोर की थी अगेंस्ट केपी और यहाँ पर एक चीज़ देखनी है कि आकिफ जावेद नई गेंद से बॉल नहीं कर रहे। नजीबुल्लाह को बॉलिंग के लिए लाए दूसरे एंड से। यासिर हमीद फॉर्मर टेस्ट क्रिकेटर मेरे साथ कॉम बॉक्स में है। वेलकम यासिर। शुक्रिया आसिफ। अच्छा बॉल, अच्छा एरिया। यासिर, खुर्रम की बात की जाए तो जो नए गेंद के साथ हेल्प लेनी है, बैटर्स को डिस्टर्ब करना है, अब तक पहले 2 ओवर्स में ऐसा नज़र नहीं आया। या शायद थोड़ा सा जोर लगा रहे हैं कि नए बॉल को थोड़ा सा छोड़ के करना होता है, थोड़ा एयर देनी होती है। जो पहला घंटा था उसमें सिंध के बॉलर्स ने अच्छी बॉलिंग की, वो ज़्यादा क्रूशल होता है। नया बॉल भी होता है, नया बॉल भी था उनके पास। और आकिफ की बात कर रहे थे, आकिफ लेफ़्ट आर्म फास्ट बॉलर हैं, तो ये अच्छा आइडिया था अगर उनको एक एंड से नया बॉल दिया जाता, क्योंकि उनका बॉल अंदर आता है तो उनको ऑप्शन मिल जाती, क्योंकि दोनों एक तरह के बॉलर हैं जो बॉल कर रहे हैं, आउट स्विंगर्स। असद शफीक, आपने जो बात की यासिर, आकिफ जावेद की बॉलिंग में देखा जाए तो जो अर्ली ऑन नए बॉल के साथ स्विंग मिलता है उनको, वो इनकी टीम के लिए इस वक्त बहुत कारगर साबित होगा। ये भी हो सकता है पहला मैच नहीं है, सीज़न का 5वां मैच है, तो कप्तान शायद इस चीज़ उन्होंने देखा हो गया नए बॉल से, और इस बार ऑन खेलना चाह रहे थे। एज हुआ 1 रन के लिए, तो शायद आकिफ जावेद ने पिछले मैचेस में किया हो नया बॉल और उस तरह वो नहीं कर पा रहे हो, या उनकी लाइन नहीं बन रही हो, या शायद हो सकता है उन्होंने बाय चॉइस जो है वो कोई बॉलर्स होते हैं वो सेमी न्यू बॉल के साथ बॉल करना ज़्यादा अच्छा समझते हैं, तो शायद ऐसी कोई बात हो।
लेकिन जिस तरह से आज सिंध के फास्ट बॉलर्स ने पहले 40 मिनट में बॉलिंग की, गुलाम मुदस्सिर और उनके साथ उमर ने बहुत ही शानदार बॉलिंग का मुजाहरा किया। लेकिन इस वक्त थोड़ा सा अच्छा बल्ले पे आ रहा है, ये अच्छा बॉल, अच्छा छोड़ा साइम ने, 6 पे कोई नहीं। और ये हैं नील जॉनसन और उनके साथ अली राहिम जो उनके असिस्टेंट हैं। इस वक्त ग्राउंड में मुख्तलिफ जगहों पर बैठकर और ये इस इनक्लोजर में बैठकर इस मैच को एंजॉय कर रहे हैं। ये वीआईपी इनक्लोजर है रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम का। नजीबुल्ला की अगर आपसे मैं बात करूं, नजीबुल्ला को इस एंड से बॉलिंग दी गई है, फार एंड से जो हम बात कर रहे थे कि आकिफ को क्यों नहीं लाया गया, तो आपने कहा कि एक ही वजह हो सकती है कि शायद कैप्टन जो है वो उन पर ट्रस्ट नहीं कर पा रहे, लेकिन जब कॉन्फिडेंस कम हो तो ज़्यादा कॉन्फिडेंस देना चाहिए। लेकिन इसकी एक वजह ये भी हो सकती है, नजीबुल्ला ने पिछले मैच में 5 आउट किए और उन्हें नए बॉल से बॉल किया था, तो शायद उनको वो मौका दिया गया है कि वो दोबारा उस तरह की शायद कोई परफॉर्मेंस रिपीट करें। ये जगह अच्छी थी। लेकिन सिंध की टीम बड़ा ज़बरदस्त कमबैक किया आज उन्होंने, और एक अच्छी जो चैम्पियन टीम है उनकी तरह खेल रहे हैं इस टूर्नामेंट में। और मेरे ख्याल से जितनी भी टीम्स हमने देखी हैं उनमें सबसे ज़्यादा जो प्लान एग्जीक्यूशन है इनका अच्छा है। उमर बिन यूसुफ ने अच्छी बैटिंग की थी और उनका ऑर्डर प्रमोट किया गया है। ओपनिंग के लिए उनको लाया है खुर्रम मंजूर जो इस मैच में नहीं है। जी आखिरी मैच में इन्होंने 100 किया, बड़ी अच्छी शॉट्स खेली, सारी अच्छी क्रिकेटिंग शॉट्स थी, बल्ला बॉडी के करीब रखते हैं अगर एज भी निकल जाए तो, और ये पूरा फ्लैश किया था इन्होंने। थोड़ा से किसी ट्रिकी खेले थे लेकिन इन दी एंड इन्होंने 100 किया। उससे पहले इनिंग में भी 100 किया, तो बैक टू बैक 100s किए हैं इन्होंने इस टूर्नामेंट में। इस दफ़ा इसको स्टीयर किया टुवर्ड्स थर्ड मैन, यहाँ पर रन्स मिलेंगे और ये नो बॉल हुई है, यहाँ पर बहुत क्लोज कॉल थी। आप जिस तरह बात कर रहे थे उमर बिन यूसुफ की बैटिंग की, बहुत सीधे बल्ले से बैटिंग करते हैं और बहुत क्लोज खेलते हैं, अच्छी टेक्निक है जी, अच्छा स्टांस है, बल्ला उठा के खेलते हैं और इनकी जो बड़ा स्टिल खेलते हैं, कोई मूवमेंट नहीं होती, अगर आप देखें कोई ट्रिगर मूवमेंट नहीं है। और ये इसमें यह है कि खेलते लेट है, शॉट्स भी अच्छी हैं इनके पास, अच्छे प्लेयर हैं, अच्छे प्लेयर हैं, शॉट्स बड़ी स्टाइलिश शॉट्स खेलते हैं। पिछले मैच में जो हमने देखा एक पुल शॉट किया था इन्होंने, इस बार स्क्वायर लेग पे खेले और 2 रन हासिल किए। तो अगर देखा जाए तो इस तरह स्विंग नहीं मिल रहा इतना कोई बॉलर्स को, स्पेशली नजीब थोड़ा सा हार्ड लेंथ पे बॉल कर रहे हैं और डेक को हिट कर रहे हैं हार्डली। मेरे ख्याल से नया बॉल है, इसको यूटिलाइज करना चाहिए
क्योंकि बाद में बहुत प्रॉब्लम्स होंगी। इस वक्त कोई स्विंग नहीं हो रहा, सीधा सीधा बॉल हो रहा है। कोई जी हाँ, जिस तरह गेंद पुराना होता जाएगा बैटर्स के लिए आसानियां बढ़ती जाएंगी। और इस दफा इसको बैकफुट पर पंच किया है, यहाँ पर रन्स मिलेंगे और 2 रन्स आसानी से हासिल कर लिए। बहुत अच्छी बैटिंग का मुजाहरा। और एक दफा फिर ये नो बॉल हुई है। नजीबुल्ला इस ओवर में दूसरी नो बॉल और पंच बहुत अच्छा किया इसको बैकफुट पे। जी अच्छा, बैकफुट पे इन्होंने पंच किया इसे और 3 रन्स हासिल किए। कोई स्विंग नहीं हो रहा तो उनके लिए इजी है इसको मैनेज करना। साइम अयूब के लिए ये फील्डिंग सेट की गई है। 3 स्लिप्स और 1 गली। साइम अयूब भी बहुत ही ज़बरदस्त टच में थे पिछले मैच में, बहुत अच्छी बैटिंग की। इस डॉट डिलीवरी के साथ इस ओवर का इख्तिताम 15 बगैर किसी नुकसान के। और यहाँ पर तेज़ी से 1 रन हासिल किया। सॉफ्ट हैंड से खेले उमैर बिन यूसुफ। खुरम शहजाद अगर इस नई गेंद के साथ स्विंग की तरफ जाते हैं, बैटर्स को डिस्टर्ब करने की कोशिश करते हैं। ये देखिए गेंद बहुत पीछे किया था। इस इनिंग में उमैर बिन यूसुफ ने ज़्यादा बॉलें फेस की हैं, 25 बॉल्स फेस की हैं और साइम ने सिर्फ 3 बॉलें फेस की। ज़्यादा जो है उमैर ने फेस किया है इस इनिंग में और अच्छा नेगोशिएट कर रहे हैं वो दोनों बॉलर्स को। साइम जो कि अच्छे प्लेयर हैं बहुत। इस बार आगे घिरा हुआ बॉल से ड्राइव करना चाह रहे थे थ्रू कवर, लेकिन बॉल पॉइंट की जानिब गई। बहुत अच्छी शॉट्स रेंज है इनके पास। इनकी भी अगर आप देखें तो पोजीशन बड़ी स्टिल रहती है। मैच रेफरी इकबाल शेख, हैदराबाद से इनका ताल्लुक़ है, काफ़ी पुराने मैच रेफरी हैं, अच्छे मैच रेफरी। साइम अयूब एक दिल लुभाने वाले अंदाज से बैटिंग करते हैं, स्टाइलिश। अच्छी गेंद थी इस दफा, अंदर लेकर आए खुरम शहजाद। राउंड द स्टंप में बॉल की क्रीज को भी यूज़ किया, बहुत बाहर से अंदर लाने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन वो उनको स्विंग नहीं मिल रहा। इस दफा इसको कवर्स में खेला और तेजी से 1 रन हासिल किया। फील्डर इस बॉल को कलेक्ट नहीं कर पाए। अच्छी रनिंग बिटवीन द विकेट, दोनों एक दूसरे को बहुत अच्छी तरह कॉम्प्लीमेंट करते हैं।
यंगस्टर्स, हालांकि हाथ में बॉल था, थोड़ा सा ये राइट साइड पे था, लेकिन बहुत अच्छी रनिंग। दूसरी जानिब उमैर बिन यूसुफ बहुत पुरएतमाद नज़र आ रहे हैं। जिस तरह पिछले मैच में सेंचुरी स्कोर की थी, उसी फॉर्म को कंटिन्यू करते हैं। इनको पुरएतमाद रहेंगे। उमर ने आज बहुत अच्छी बॉलिंग की अर्ली ऑन। जो पहले 40 मिनट थे उसमें गुलाम मुदस्सिर के साथ साथ ज़बरदस्त बॉलिंग का मुजाहरा किया, और जो गेंद इन्होंने हसीबुल्लाह को की, आई थिंक मेरे लिए वो अब तक की इस मैच की सबसे बेहतरीन गेंद थी। जी हाँ, बिल्कुल। स्पेशल बात ये थी इस बॉल की कि सारी बॉलें अंदर करे तो उस बॉल को बाहर निकाला इन्होंने, एक ही बॉल बाहर निकाला और वो उस पर विकेट हासिल की। और इस दफ़ा इसको मिड विकेट की जानिब खेल दिया है शानदार तरीके से। बेहतरीन टाइमिंग यहाँ, और ये बाउंड्री हासिल की। आकिब जावेद ज़रूर गेंद के पीछे भागे थे, लेकिन कोई मौका नहीं। 4 रन्स। जी, खूबसूरत शॉट उमैर बिन यूसुफ का। बॉल लेग स्टंप पे था, अच्छा रिस्ट वर्क, ऑफ द टोज, अच्छे प्लेयर हैं। पांच ओवर्स के इख्तिताम पर 21 बगैर किसी नुकसान के। एक कवर में आ जाओ। हाँ जी, कवर चाहिए ना जी, कवर चाहिए। ये ले इमरान भाई। साइम अयूब सामना करेंगे नजीबुल्लाह का। ये अच्छा मौका है साइम के पास, क्योंकि बॉल ज़्यादा स्विंग भी नहीं हो रहा, और नजीबुल्लाह जो है उस तरह जो डिमांडिंग है, कंडीशंस की जो डिमांड है उस हिसाब से थोड़ा सा मेरे ख्याल से पुराने बॉल पे अगर ये शायद अच्छी बॉलिंग करें जब बाउंसर्स करने हों या इस किस्म का प्लान हो, क्योंकि आगे से बॉल इनका इतना स्विंग नहीं हो रहा। बैट्समैन अगर खेलते रहे तरीके से तो काफ़ी रन्स कर सकते हैं। और इसको कट करना चाहते थे, बहुत क्लोज मामला हो सकता था, और यहां पर गेंद हल्का सा राइज किया, बॉडी से दूर खेले इसे। जी, अच्छा बॉल किया इन्होंने, नया बॉल है, ऑब्वियसली कुछ ना कुछ तो डेफिनेटली होगा। ऑफ स्टंप के बाहर बॉल था बहुत, और बॉल राइज हुआ, इतना अच्छा शॉट नहीं था। ऑल्दो ये शॉट खेलते हैं, थोड़ा सा देख के खेलें, थोड़ा सा टाइम लें, क्योंकि शॉट पे जल्दी ना करें। जो स्लॉट में हो उसके लिए जाएं। इस दफा बहुत ही खूबसूरत दिलकश स्ट्रोक एक्स्ट्रा कवर की जानिब। 4 रन्स। खूबसूरत शॉट साइम का, ऑन द अप, और ये इनकी स्पेशलिटी है। फुल फेस ऑफ द बैट और गैप में खेलें, बस इन शॉट्स का वेट करें जो इनकी शॉट्स हैं। ये स्कोरिंग शॉट्स हैं, ठीक है, कट शॉट वो खेलते हैं, लेकिन कट शॉट पे थोड़ा सा बॉल राइज हो रहा है तो उसको अवॉइड करें। जो बॉल मुंह में उसको खेलें। बहुत खूबसूरत शॉट। जी हाँ, इस शॉट में माजी के अजीम बैटर सईद अनवर की एक झलक जरूर नजर आई। जी बिल्कुल। बड़ी अच्छी फॉर्म में है।
वेल प्लेड। अपने अच्छे स्टार्ट को लंबे रन्स में कन्वर्ट करें साइम, बहुत ज़रूरी है, क्योंकि एक 95 डेब्यू पे इन्होंने 70 कुछ किए थे, वो दोनों पक्के 100 थे इनके। जो 95 पे आउट हुए वो भी नर्वस 90s का शिकार हुए थे। अब आराम से सुकून से खेलें। ये देखें शॉट, ये वो बॉल था जिस पे वो बीट हुए, इस शॉट से अवॉइड करना चाहिए। और इस दफा इसको पुल करना चाहते थे, गेंद नीचे रही। जी बिल्कुल, बॉल थोड़ा नीचे रहा। जो इनकी शॉट होती है इस पे जाते ज़रूर हैं, ये अपने आप को उस तरह होल्ड नहीं करते, ये भी अच्छी बात है, अपनी शॉट्स खेलते हैं। लेकिन शॉट की सिलेक्शन बहुत ज़रूरी है, कौन सी शॉट है जिस पे वो जाएं, कौन सी शॉट है। अब देखें बाउंसर लिया हुआ है पीछे, कोई मसला नहीं, अगर आप छोड़ दें, जाने दें। डीप स्क्वायर लेग लिया हुआ है एक। इस दफ़ा इसको हल्के हाथ से खेला ऑन साइड पर और एक रन हासिल किया साइम अयूब ने। 6 ओवर्स के इख्तिताम और सिंध ने 25 रन बनाए हैं बगैर किसी नुकसान के। खुरम के पिछले ओवर में कुछ स्विंग देखने को मिली थी। एक दफा फिर राउंड द स्टंप्स और फील्डर ने दाएं जानिब डाइव करके इस गेंद को रोका। एक और आला शॉट साइम का, बैक फुट पे जाके पंच किया, उसे सीधे बैट के साथ खेले ये शॉट, एंगल किया था बल्ले को और अच्छी फील्डिंग, यकीनी 4 रन रोके अजीम घुम्मन ने। अजीम घुम्मन ने यकीनी तौर पर 2 रन बचाए और फील्डिंग में तब्दीली की है उमर बिन यूसुफ के लिए। शॉर्ट स्क्वायर लेग को डीप स्क्वायर लेग पर प्लेस किया है। 2 स्लिप, 1 गली। चलो सही है, 9 कर दिए। बलोचिस्तान की बॉलिंग में कोई एग्रेशन नज़र नहीं आ रहा और वो चीज़ जो कि अर्ली ऑन इनको कामयाबियां हासिल करनी है ताकि मैच में रहें, क्योंकि जैसे ही ये गेंद पुरानी होगी तो ये मुश्किलात बढ़ेंगी। जी नए बॉल को इतना अच्छा यूटिलाइज नहीं किया उन्होंने, स्विंग पे बिल्कुल फोकस नहीं किया। और इस दफा इसको खेले मिड विकेट की जानिब, पुल किया। फील्डर जरूर डीप स्कोर लेग पर मौजूद हैं, लेकिन यहां पर 4 रन हासिल किए। एक अच्छा शॉट उमर बिन यूसुफ की जानिब से। जी हाँ, एक और शॉट डिलीवरी और बहुत अच्छा उसे मैनेज किया, मिड विकेट की तरफ खेले जहाँ पे कोई फील्डर नहीं था। उमर बिन यूसुफ 4 रन हासिल किए। बाउंसर किया लेकिन हाफ हार्टेड सा था, आराम से मैनेज किया उसे। और इस दफा कदरे बेहतर गेंद खुर्रम मंजूर की और ये वो लेंथ है जिसको मिस कर रहे हैं बलूचिस्तान के दोनों ही बॉलर्स। यहाँ से विकेट टू विकेट और हल्का सा स्विंग की जाए
ऐसा लगता है कि आकिफ जावेद जो है बॉलिंग के लिए तैयार हो रहे हैं, वार्म अप कर रहे हैं और देर आए दुरुस्त आए। अगर इसके बाद आकिफ जावेद को बॉल मिलती है, थोड़ी सी सनसनी देखने को मिल सकती है। और इसको सीधे बल्ले के साथ खेला। जी आकिफ जो है वो लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर है, उनका जो नेचुरल जो स्विंग है, जो नेचुरल एंगल है वो इन स्विंग होता है राइट हैंडर्स को, और इस वजह से हम कह रहे थे कि इसको उनको नया बॉल दिया जाए। अब पता नहीं पुराने बॉल से क्या करते हैं, उस तरह स्विंग होता है कि नहीं। और ये है फील्डिंग, 2 स्लिप 1 गली। इसको सॉफ्ट हैंड से खेला, शॉर्ट मिड विकेट की जानिब 1 रन हासिल किया। इस ओवर में 6 रन बने 7 ओवर के इख्तिताम पर, 32 बगैर किसी नुकसान के। और बलोचिस्तान ने पहले बारी की, 269 रन बनाए, जिसमें हसीबुल्ला ने और इमरान बट दोनों ही अपनी सेंचुरी से मुकम्मल ना कर सके। और ज़बरदस्त बात, गुलाम मुदस्सिर ने 5 विकेट्स हासिल किए, बरार ने 3। और इस वक्त सिंध ने 32 रन बनाए हैं, 237 रन की दूरी पर है अभी। बॉलिंग चेंज, लेफ्ट आर्म ओवर। जी हाँ, आकिफ जावेद को बॉलिंग के लिए लाए हैं। अगर इनकी 22 विकेट्स हासिल की हैं 11 मैचेस में, इनको अर्ली ऑन अटैक करवाया जाता तो फ़ायदा मिल सकता था। और लाइन अच्छी थी लेकिन बॉल कोई स्विंग नहीं हुआ, शायद ये बाहर निकालेंगे क्योंकि अब थोड़ा सा बॉल पुराना हो गया, तो मेरे ख्याल से शाइन के साथ रिवर्स करने की कोशिश करेंगे। 2 स्लिप्स 1 गली, पॉइंट कवर मिड ऑफ। और जुआ, और इस तरह ये पहली विकेट हासिल हुई। और ये वो लेंथ थी जो मिस कर रही थी बलोचिस्तान के फास्ट बॉलर्स। आकिफ जावेद को लाए और आकिफ ने आते ही खतरे की घंटी बजा दी। जी बिल्कुल, और आते ही उन्होंने दोनों अंपायर इस वक्त कंसल्ट कर रहे हैं कि आया ये कैच प्रॉपरली लिया गया है या नहीं। यहाँ से तो यही लग रहा था कि ये सीधा हाथों में गया है, और बिल्कुल हाथों के अंदर। अच्छा कैच हारिस सोहेल का, फर्स्ट स्लिप में सीधा हाथों में, बहुत ही आराम से लिया। आगे बॉल घिरा हुआ, थोड़ा सा मूव हुआ बाहर की तरफ। जो बात हम कर रहे थे कि बाहर निकालेंगे, कि सीम से बॉल करते हैं। उमर बिन यूसुफ 19, सिंध 32 पे 1। और सिंध के कप्तान सऊद शकील बैटिंग के लिए आए हैं। सऊद शकील एक बहुत ही मुस्तनद बैटर हैं। 4 बॉलें बाकी हैं। जी हाँ, सऊद शकील
54 मैचों में 3738 रन किए, 18 50, 1300 कन्वर्जन रेट बहुत अच्छा है, 174 बेस्ट है और 49 की एवरेज, बहुत ही अच्छी एवरेज। सही है। आकिफ जावेद दूसरी गेंद पर कामयाबी हासिल की, उमैर बिन यूसुफ को ड्रेसिंग रूम भेज दिया। एक शानदार डिलीवरी और अच्छा आगाज किया है सऊद शकील ने। जी हाँ, आगे गिरा हुआ बॉल था और थोड़ा सा बल्ला उसे चेक शॉट खेल रहे थे, पूरी तरह बॉल के पीछे नहीं थे, लूज शॉट सीधा स्लिप के हाथ में। अच्छा कैच हारिस का, हारिस ने कोई गलती नहीं की, वेल जज कैच। आकिफ ने फोर्थ स्टंप को टारगेट किया अगेंस्ट उमैर बिन यूसुफ और उसका कारगर साबित हुई है हिकमत अमली। जी बिल्कुल, यही एरियाज़ होते हैं नए बॉल के साथ या 4 डे क्रिकेट में, आपने आगे बॉल करना है। ये चीज़ मिसिंग नज़र आई हमें, हालांकि खुरम शहजाद जो हैं वो काफ़ी सीनियर बॉलर हैं, लेकिन जब आप और एक बार फिर बाहर की तरफ निकला, अच्छा बॉल एज हुआ लेकिन कैरी नहीं हुआ स्लिप में। तो आपका पार्टनर अगर इस तरह की बॉलिंग करे कि वो थोड़ी फ्लैट बॉलिंग कर रहे हो तो आप दोनों एंड से स्विंग बंद हो जाता है। सॉफ्ट हैंड से खेले थे सऊद, थोड़ा ओपन हुए। और बहुत अच्छे तरीके से इसको खेला, आगे गिरी हुई गेंद थी। इस डॉट डिलीवरी के साथ ओवर के इख्तिताम 32 एक विकेट के नुकसान पर। Balochistan managed to break through. The dangerous Umair bin Yusuf has been taken care of by Akif Javed. Bit of a surprise that Akif didn't bowl with the new ball. But 2 slips in a gully. Saim Ayub is in. Thick inside half of the bat. 2 sweepers on the onside. Looks like Khurram will try some short pitch stuff against Saim. We'll have to see if he keeps the same field for Saud Shakil. No, he's just brought that fielder back in. So again, 2 very eye-catching players in the middle. If they get in, we can see stroke play of the highest order. That's better though. I like 3 slips on this pitch. 3 slips in a gully. Good run. These 2 will run quick. And much sharper, much more relaxed and ready. Good morning, Ali Yunus. A very good morning to you too. It's been the morning full of wickets, full of authority from the fast bowlers. That's a rarity in this tournament. This one was a good single, just played it with soft hands, right in between the 2 fielders. They run well. This is what we'll see, these 2 youngsters. Saim, absolute star. Square leg is back for him. Nicely played, beautifully timed. Just getting on top of the bounce, just using the pace.
Yeah, no movement whatsoever. Just stand and deliver. That is what Saim has done. Let the ball come to you. Plays it late. Plays it right between the two fielders. Fantastic batting. That is why he's so pleasing on eyes. Saim Ayub has got variety of shots under him. It's just fantastic prospect for Pakistan cricket. Might be too early to say it. Well, he's a prospect. There is no doubt about it. And a lot of people are watching him. He just needs to strengthen his case by scoring piles and piles of runs. Wide of the crease. Easy run available. Yeah, this is what happens when we see a young batter come through. We saw in PGL, which just finished last evening, this Basit Ali. Everyone is talking about him. South Shakil here in the senior cricket. Saim Ayub. We're not talking about these batters in the world full of bowlers. When we see a young batter come through, it's such a heartening thing for Pakistan. Tayyab Arif, the young 16-year-old. Innocent looking Tayyab Arif. I was most impressed with him. It's just the crop of good batters coming through who are very, very pleasing on the eye. All of them, the names that you mentioned. And probably it is the impact of Quaid-e-Azam era. Absolutely. This man, not a bad stylist at all when at the batting crease. But he was in that era where his type of players were few and far between. Now there are plenty of them. Yeah, if you talk about Asad Shafiq, Misbah-ul Haq, Yunus Khan, Azhar Ali also in that list. They were more technically correct, more patient. But these boys, they've got flair in them. They're the new generation. They've got that X factor. It's 39 for once in. Talking about that X factor that you're talking about, the Quaid-e-Azam factor. We've seen big billboards even in Australia. He's that kind of a global batting star that Pakistan has been missing for quite some time. And now you see there's a stream of them coming through. That balance when he plays on that onside is key. Sweet. Very sweetly timed. Straight to the man. It was that sweet that he didn't even wanted runs out of it. He just wanted it to go straight to the fielder. He's a sweet boy. Nicely timed, beautifully timed with the straight bat once again. This outfield is quite quick. Tantalizing chase, but I think it's gone through. You'll have to wait for the umpire's signal. But such was the timing on the stroke from Saim Ayub. Yeah, you have to give it to Najibullah. It was a good effort. Not pleasing on eyes, but a good effort. Have a look at that. This is what he does. Plays it with straight bat. Just timed it this time. Flick of the wrist. And it was that long teasing chase for the fielder where one cannot give it up till the end. Have a look at that for an effort. He just got confused. Had the slide in front. But the effort, 10 on 10 for that. Yeah, but this is the kind of chase that as a batter you want the fielder to be interested right till the last minute. I think something might have touched the boundary whilst he was in contact with that ball. Probably give him benefit of the doubt for the effort. Awkward bounce. Saud had to really ride that bounce. He's ungainly, but in the end controlled it nicely. This is what Akif can do. He's a very promising bowler. He hasn't hit his traps after that injury. But have a look at this one. Yeah, good bounce.
And good length also. Well directed into the body. Akif, yes, as you mentioned earlier, I was surprised that they didn't give him the new ball. It would have been more effective because of his length. So there's a beautiful driver of a cricket ball. This one not timed as well as he would have liked. But he's getting his innings rolling. The batting will become easy once this ball, the shine of the ball comes off. And Kukubra, we know that it doesn't last very long. Into the 10th over. There you go. Not the big flourish. Probably that's the better way to slide and tackle the ball, field it. Najibullah, were you watching? Yeah, that's Asif Shafiq, the captain. Good leave. Saim Ayub has gradually become good at it during the season. He knows his off stump a bit better now than he did on the earlier rounds. This is good teasing over there from Akif Javed. 43 for 1. He'll be disappointed. Umar bin Yusuf lost his wicket to Akif Javed. Anybody who gets out earlier is disappointed. This man, Iqbal Sheikh, the match referee, a very serious looking, very senior member. See, the weather's changed now, so he's come out of his office, want to enjoy the beautiful weather from outdoors. Just talking about batting becoming slightly easier after lunch, 40 minutes of break, the sun will beat down and the ball will be slightly older after that. So if these two survive this little session before lunch, we may be in for some wonderful stroke play in the afternoon session. That's why it's important for Balochistan to make a breakthrough. Sindh's batting lineup, it's quite a long batting lineup. Asif Mahmood being the all-rounder. Yeah, it can get very long for Balochistan bowlers if they don't get these early wickets. They've got one, but they need more. They need to get to see the back of Saim Ayub, because as long as he stays, he's going to keep searching for runs, quick runs. He's going to take this match away from Balochistan very quickly. So the importance of early wickets, they must realize it. Maybe one more before the lunch, 15 minutes to go. That will make lunch more tastier than for them. Rum Shahzad has gradually found better areas in the last couple of overs. Bangalore. He's looked solid. He's improved his fitness. I think he's working in gym a bit. Remember the first time we saw him last year, the first match at Qaddafi Stadium, scored a 200. He was a baby-faced, very thin boy. Now he's worked on himself. That's a good sign. He's improving. Hasn't scored many runs though, but he's improving. Another man who's improved immensely, Akif Javed. Tall, lanky, fast bowler. Yeah, talking about the promise of this boy from Balochistan. He hasn't hit his straps yet, but he's a very exciting player and an attractive player as well. This is the stream of players we were talking about, the batters in particular. He's also a very eye-catching player himself. But this season is big for Saud. He's been knocking on the door for that test side for Pakistan. He's been traveling with the squad, and with 5 test matches coming, a couple of question marks against the senior men at the end of the last international season. Yeah, some healthy competition as far as the batting is concerned in Pakistan test side.
This is silky. Saud Shakil on the up. Beautifully played. Wonderful. The placement, the timing, the execution, everything was spot on by Saud Shakil. This is why he's rated so high at this level. 45. Look at that. Just weighted enough, all hands. On the up, it was beautifully timed through the gap. He's talent. Saud Shakil. You can do that on this pitch now. We've seen increasingly you can hit on the up. But Saud likes to take his time. We saw that 100 in the last game. He's prepared to take his time now and just wants to pile on the runs. 200s under his belt already this season. Another great opportunity for him on this very good pitch. Talking to Neil Johnson this morning, he said, down the ground, the bounce took it over the head of Akif. Won't go to the fence. Asad Shafiq still very lively, very agile. You're talking about Neil Johnson. He said there's a big double 100 in this wicket if somebody gets in. Saim Ayub, I really want him to get it. Much needed for him. This isn't batting. These two are well capable of doing that. So watch again. Look at how hard this pitch is. Into the pitch, the drive, and then over the head of Akif, who's quite tall, incidentally. It's such a beautiful strip that if you don't play a false shot, you play every ball on merit. They are full of runs. This pitch is, and with Saim Ayub, the type of shots he has, like he has that ability to do that 200. It's about time that we see him from him. We have seen enough of 40s, 30s, even 60s. It's time to get a big one. Definitely, double 100 is something that everybody will sit back and take notice, even if it's Saim or Saud, both of them. We've seen a glorious double 100 here in this, at this venue. Abdullah Shafiq made that. It was an absolute treat to watch. This is magnificent. This is absolutely glorious straight drive from Saim Ayub. Can see that all day long. That is fantastic. Just doesn't get any better than this. Look at that. That on drive, straight bat. The balance and the poise and the pose. Called it correctly, Ali. You can watch this all day long. This is right out of the textbook. This boy, he makes you sit and watch him. That's what he does to you. Don't go anywhere. One of the over. Aggression from Akif Javed. Such a fast bowler thing. You hit down the ground, you reply back with a quick bouncer. Akif Javed. Yeah, every time I see Saim Ayub play, it reminds me of this batter from Gujranwala. In my younger days, I used to play with him, Ali Bajwa. He was a right-hander though. Couldn't play big cricket because of his responsibilities, but he was equally good as Saim Ayub is. He was a right-hander. Now lives in Lahore. He's a banker now. But a fantastic player he was in his younger days. Just like Saim Ayub. Slight fumble there from Hasib. He struggled here previously at this venue, Hasibullah. The ball wobbles around after it passes the batter, not making it easy for the wicket keeper. You're talking about Saim's pedigree. I mean, like, we've seen so much of him this year. White ball, red ball. You just don't want to miss when he's at the crease. Absolutely. Because of the flair, he makes us sit and watch. That's the quality, and that is what is missing. That is what we want to see from these young batters. All those youngsters in Sindh's side has really looked like
It has actually made them a very watchable side. Come back, talk about it. 54 for 1. Yeah, we've been talking about this new sensational Sindh side. I think the best decision Sindh management made was making South Shakil the captain. I think that really set up the tone for them. That they're in this season with a change. They are in it to win it. They've done that already. National T20 Cup, they've won it. They're looking good here in 4-day cricket also. So a huge shout out to these Sindh management for taking the risk. Away from the body, off the thick outside half of the bat, will still collect a boundary. Saim is going at the rate of knots. Better than a runner ball now. It all works if you're brave. Anything pitched in that zone, he's going to go after that. A bit in the air, but safe. There is no fielder. It was finer from that fielder at deep point. Although not in control, but he will get it. Every time he sees room now, I think he feels that he's in. So he's going after the deliveries with, if he gets just a hint of room, he doesn't need a lot anyway. Now that this time that gully fielder has been moved slightly finer. Khurram Shehzad had his own point of view about what Saim is doing. Look at that. Once again, angled face of the bat. Khurram Shehzad rather. He's a fiery character. Like all the fast bowlers, he wants to let the batter know he's around. He's set the fielder set for that short pitch delivery as well. This is where Saim was just looking. 2 fielders in the deep on the onside. A bit of more heat on it. Saim too expensive on that occasion. But beautifully bowled. Khurram Shehzad. Good line in good length. At a length that Saim felt that he can play it, but it was away from him. He's got to avoid these deliveries. Wider of the crease, angling in and just straightening up a little. Beautiful bowling. These are nothing short because of the bounce and the length. Slightly fuller than that, probably you can still hit through the line. But that length, the ball was always climbing on him. Good heat from Khurram Shehzad. It's a good contest. This is a tempter and a teaser. This time his discipline was good. Yeah, that's better. You got to let these ball go to the wicketkeeper. That's as simple as that. If you're looking to make your name in red ball cricket, you just can't be fetching everything outside the off stump. These are quality bowlers. They're going to come at you. So you got to learn to leave these deliveries outside the off stump. The plan is set. There's a fielder at deep square leg and fine leg. So you must be prepared for that bouncer too. This is where the learning is. Khurram Shehzad is making him wait for that short delivery. In a few words, that's good to see. I think that's what he's saying. There's no one there at deep cover. Go after it. Hit me there. But don't. Saim Ayub, don't. Don't lose your wicket this time. See that wide of the crease. Interesting thing is that the bounce on the pitch, you see this quite fuller, and look where Haseeb is taking that ball, carrying pretty nicely. Another fumble from Haseeb behind the stumps. 58 for 1. Slightly long spell there from Khurram Shehzad. He had to do that because Najibullah couldn't find his radar. Interesting times for the skipper Asad Shafiq. How long will he continue with Khurram? Well, just 5 minutes to go to lunch, so probably one more over before the lunch rather. Yeah, the trouble with Balochistan bowling side is
that they don't have an X factor like Sindh had in form of Abrar, that every time a partnership forms, they can always go to Abrar. There is Kashif Bhatti available, but he's an orthodox left-arm spinner. There's nothing X factor about him like Abrar has. So that's where the trouble is for Balochistan. If they don't get these batters out with the new ball, they're in for a long, long day. Well, I agree. It's an absolute gift though, but well done. Kashif Bhatti, the man we were talking about, helping out his bowler. That was a hit-me ball and South missed out there. You're talking about Kashif Bhatti, he's a very good performer. He's a very good spinner, but his job is mainly on this wicket will be to tie one end up. But being Sindh having so many left-handers, that will negate his threat as well. So more problems there for Balochistan, and you called it rightly. They're looking at a long day in the field here. Oh, South Shakil. For a moment, he was searching for that ball. He thought it was going towards the stumps. Yeah, because he played it so late. They could almost dragged it back to the stumps, South Shakil. Yeah, we were talking about Kashif Bhatti. Well, we've not seen many spinners, finger spinners being successful. Even Yasir Shah in the last game when Balochistan played here struggled. So there's nothing much off the pitch for spinners. You got to be different. You got to have some X factor. There's like slip in place now. Change of plans for Akif. So it's very strong in that area. Once again, good hand from Kashif Bhatti. Oh, there's another misunderstanding. Just a single. This is what good fielding may cause. Excellent work, Kashif Bhatti. Yeah, the plan was set for that leg side-ish bowling, but too full from Akif this time. Easily negotiated by South Shakil. Too full. Look at that. Half stop by Bhatti. Good commitment. It's a strange plan though. We've known South for quite some time. He's very strong off his pads. They're persisting with the same field for Saim Ayub as well. Now the thick edge. Looking for two. Azim Ghumman gives the chase. It seems that they cannot stop the flow of runs. Not entirely in control all the time, Saim Ayub. But he will keep the scoreboard moving. See, that's where consistency comes in, Shah Faisal. You got field set towards leg side. There's a leg slip. There's a square leg. There's a deep square leg. There's fine leg. There's mid-on. There are 5 fielders on the onside. And you're bowling that offside-ish line. That's never going to help the captain and the plan. You got to stick to one. See, in a short little session, you may feel, what happened here? He was jumping to avoid the ball. Did he get in first? Umpire has given him. That would be some replay. Saim Ayub was avoiding the throw from Asad Shafiq, which hit the stumps. Did he get in first before he jumped? We'll have to wait and see. Drama. What an unfortunate way to get out. Saim Ayub and Imran Javed took so much time to give him out. He's disappointed, rightly so. What happened there? We're going to watch again. But Imran Javed took so much time. Have a look at that again. Played it with soft hand. That's where the trouble is, when he ran straight to the bowler and... Oh, that is very unlucky. That is out there. Very, very unfortunate. That is very unfortunate. Good decision from Imran Javed. He took his time. He recollected his thoughts in his mind, what was happening, because it happened so quickly, and then he made the correct decision. Similar to the one that Misbah ul Haq once got dismissed in India. Look at the umpire. Wonderful umpiring. Yeah, that is a great decision to end the session. Not so great for this youngster, Saim Ayub, but he will learn. He will learn how to drag the bat.
after being given out like this. So 10 on 10 to umpire for giving him out. That's not a good way to end the session for Sindh side. Disappointment, Saim Ayub. Drag the bat or also take the hit. Don't allow the ball to hit the stumps. If it hits you, it may hurt, but you won't be out. That hurts more. Yeah, that's what I was going to say. Just right before the lunch, they've lost Saim Ayub, run out. An unfortunate way to go. 30 scored. Umair bin Yusuf, he scored 19. Asal Shakil is not out on 7. It's 61 for 2 Sindh. Not a pleasing way to go to the lunch. Very disappointing. Saim Ayub, he was looking so good. But Balochistan needed that wicket. Skipper Asad Shafiq did that for them. Khurram Shehzad pulled a longish spell, but Akif was the most impressive and the only one with the wicket as well. 14 overs before lunch, 61 for 2. This session was full of action. Balochistan started with 5 wickets down, an absolute pearler. Bhatti, the second one to go. Another peach of a delivery from Umar. There's been so many of them in this one session. Far too good for a tail ender. And then bit of luck. Richly deserved fifer for Ghulam Mudassir. And then when Sindh came out to bat, you can always see some pleasing strokes. Stroke play initially was good. Saim Ayub at his fluent best. Umair also looked good for a while. But then he lost his wicket. Akif Javed, good catch as well. And then Saim Ayub's stroke play just lit up the Pindi Stadium for a brief moment. We expected a lot more from him. We wished him on for a big one. This was probably the shot of the match. And then this one off the outside half of the bat. And this was the moment that Saim would be thinking about it even now. In Balochistan, happy camp after seeing the back of prolific Saim Ayub. Yeah, this is how the match stands. Balochistan in their first inning, 269. Hasibullah Imran Butt both getting 60s. Ghulam Mudassir was the pick of the bowlers, getting 5 for 73. Abrar Ahmed supported him with 3 wickets. Sindh in reply are 61 for the loss of 2 wickets. Saim Ayub was the last one to go on 30. And Sindh trailing by 208 runs at the moment. Well, it's lunch time here in Rawalpindi Cricket Stadium. We'll see you on the other side.
एक बार फिर आपको रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम में खुशामदीद कहते हैं, जहां पर मैच जारी है सिंध और बलूचिस्तान के दरमियान। सिंध की पहली इनिंग 2 विकेट्स गवा चुके हैं। उमैर बिन यूसुफ ने 19 रन बनाए। साइम अयूब अनफॉर्चुनेट रहे, लंच से पहले आखिरी बॉल पर रन आउट हो गए 30 रन बना के। सऊद शकील 7 रन बनाकर क्रीज पर मौजूद हैं। 61 रन सिंध ने बनाए हैं 2 विकेट्स गवा के। एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सेशन रहा ये दूसरे दिन का पहला सेशन, जिसमें बहुत सारी विकेट्स गिरी। फास्ट बॉलर्स की तो चांदी हो गई, क्योंकि जितनी विकेट्स उन्होंने हासिल की, 1 विकेट हासिल की यहाँ पे आकिफ जावेद ने पहले ही ओवर में। खुर्रम शहजाद और नजीबुल्लाह ने अच्छी बॉलिंग की, लेकिन विकेट अभी तक हासिल नहीं कर पाए हैं। 2 विकेट सिंध ने गंवाई थी लंच से पहले। ये पहले आउट होने वाले बैटर थे उमैर बिन यूसुफ। अच्छा कैच हारे सोहेल की जानिब से, और ये एक अनफॉर्चुनेट तरीका है, ये स्कूल बॉय एरर है। साइम अयूब ये जंप गलत टाइम पे ले गए और डायरेक्ट थ्रो लगी असद शफी की जानिब से, और अपनी विकेट गवा बैठे। एक अहम विकेट हासिल की बलूचिस्तान ने लाइन से पहले। मेरे साथ फॉर्मर टेस्ट क्रिकेटर, एक बहुत ही बेहतरीन इंसान यासिर हमीद। यासिर, इससे अनफॉर्चुनेट तरीका हो नहीं सकता था रन आउट जिस तरीके से साइम अयूब आउट हुए। जी हाँ बिल्कुल, वो कहते हैं ना द लास्ट थिंग दैट दे वांट टू हैपन, तो बिल्कुल आखिरी चीज़ जो वो चाहते हैं हो, तो वो यही इसी तरह का रन आउट था। तो मेरे ख्याल से बहुत अनफॉर्चुनेट। साइम अयूब बड़े प्रॉमिसिंग क्रिकेटर, अच्छी इनिंग खेल रहे थे, लग रहा था कि बड़ी इनिंग खेलेंगे, लेकिन अनफॉर्चुनेटली फराज देखिए, एक बात तो यासिर तय है कि ये एक लर्निंग कर्व होगा साइम अयूब के लिए, कि आपको कैसे बैट को ड्रैग करना है, जंप नहीं मारनी है, क्योंकि ऐसी क्रिकेट में जब 2 टॉप क्लास टीम्स खेल रही हो तो मार्जिन ऑफ एरर बहुत लिमिटेड होता है। जी हाँ बिल्कुल। सैयद फराज 40 मैच खेल चुके हैं, 1657 रन हैं इनके। पहली दफ़ा मौका मिल रहा है इनको इस सीज़न में खुर्रम मंजूर की जगह। सही कह रहे हैं आप अली, और मेरे ख्याल से पूरी उम्र याद रखने वाला लेसन होगा उनके लिए, क्योंकि इस तरह करना नहीं चाहिए। इतनी अच्छी इनिंग और इतना अच्छा स्टार्ट। यहाँ काफ़ी समझाने वाले लोग मौजूद हैं कैंप में, काफ़ी बातचीत चल रही होगी कि आपको कैसे खेलना चाहिए, लेकिन ये बेसिक स्कूल बॉय एरर था। ऐसा हो जाता है हीट ऑफ द मोमेंट सिचुएशन में, क्योंकि शायद वो एक्सपेक्ट भी नहीं कर रहे थे कि असद शफीक डायरेक्ट थ्रो कर देंगे, लेकिन उनको नहीं भूलना चाहिए कि ये टॉप क्वालिटी क्रिकेट है, दोनों साइड्स में बेहतरीन क्रिकेटर्स मौजूद हैं, तो वो आपको ऐसे मौके तो वो ढूंढ रहे होते हैं कि कहीं गलती हो और विकेट हासिल की जाए। जी बिल्कुल, लास्ट ओवर था लंच से पहले, कुछ बॉलें थी, ये सिंगल उन्होंने लिया, स्ट्राइक रोटेट किया, और अनफॉर्चुनेट ही कह सकते हैं, वेरी अनफॉर्चुनेट। चलिए आगे चलते हैं, फराज की बात करते हैं। पहली बार हम इन्हें देख रहे हैं, सिंध को रिप्रेजेंट कर रहे हैं इस फॉर्मेट में। नेशनल T20 में हमें नज़र आए थे, 2-3 अच्छी इनिंग्स देखने को मिली थी, लेकिन बड़ी इनिंग नहीं खेल पाए हैं। यहाँ पे अच्छी अपॉर्चुनिटी है, नंबर 4 पे बैटिंग करने आए हैं, कप्तान सऊद शकील साथ मौजूद हैं, कंडीशंस आसान हैं। अगर आप रेगुलर मेरिट पे बैटिंग करते चले जाएंगे तो रन आते चले जाएंगे। अपील, जी हाँ, बहुत ही शानदार विकेट हासिल किए यहाँ पे नजीबुल्लाह ने। लंच से पहले स्ट्रगल कर रहे थे, लेकिन ये एक शानदार आगाज है। फराज ड्राइव करने गए, बॉल हल्का सा बाहर निकला और बाहर ही किनारा लेते हुए हसीबुल्लाह के पास बॉल गया, और पहली विकेट लंच के सेशन के बाद हासिल की बलूचिस्तान ने। जी हाँ, दूर का बॉल था और उसे ऑन दी अप खेलना चाह रहे थे, बॉल को रोकना चाहिए था, जिस तरह वो खेल रहे थे उसी तरह खेलते रहते। अभी चौथा बॉल था और एकदम उन्होंने गियर चेंज किया, बाउंड्री लेने की कोशिश की, अनफॉर्चुनेट। कोई रन बनाए बगैर पवेलियन लौट गए 61 पे 3। ये नई सिचुएशन नहीं है फवाद आलम के लिए, क्योंकि जल्दी 2 विकेट्स गिर गई हैं। आखिरी 2 जो गिरे, साइम अयूब और फराज,
अब जिम्मेदारी आन पड़ी है फवाद आलम पे। जी हाँ, सिंध इस वक्त थोड़ी सी मुश्किलात का शिकार हो गई है और फवाद आलम उसी टाइम पे अंदर आए हैं बैटिंग के लिए जहाँ पे यूजुअली आते हैं। 14,088 रन्स 196 मैचेस में और 66, 50, 4200, 296 हाईएस्ट, 55 की एवरेज, ग्रेट रिकॉर्ड। जहाँ जो कन्वर्जन रेट है 50 से 50 का वो बहुत ही लाजवाब है। वो शो करता है कि अगर ये 50 रन बनाएंगे तो 100 के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं, इसलिए बेहतर है जितनी जल्दी इनको आउट कर लिया जाए बॉलिंग साइड के लिए। और इस तरह की कंडीशंस में बहुत अच्छा भी खेलते हैं। लेट्स सी आज कैसा खेलते हैं, लेकिन ज़्यादातर इनके स्कोर हैं इसी तरह की सिचुएशन में होते हैं जहाँ पे ज़्यादा इजी हो जाती है सिचुएशन, तो वहाँ पे ये भी थोड़े रिलैक्स हो जाते हैं। लेकिन जहाँ पे इनकी टीम मुश्किल में होती है वहाँ पे ये स्टैंड अप करते हैं। बहुत स्पेशल होते हैं ऐसे प्लेयर जो मुश्किल हालात में रन्स करते हैं, और फवाद आलम में डेफिनेटली ये अहलियत मौजूद है कि मुश्किल सिचुएशन पे रन्स करें। लेकिन दो बहुत ही सॉफ्ट डिसमिसल, डिसअपॉइंटेड होंगे सिंध का कैंप। दोनों ऐसी विकेट जो नहीं गंवानी चाहिए थी। साइम अयूब की भी, फराज की शॉट भी पुश करने चले गए, अभी चौथा बॉल खेल रहे थे। ये कैमरा इस तरफ भी होना चाहिए, एक पिच। एकदम एक जान सी आ गई है बलूचिस्तान की टीम में, क्योंकि लंच से पहले ऐसा लग रहा था जैसे थोड़ा फ्लैट हो गए हैं। लेकिन आखिरी बॉल पे जिस तरीके से साइम अयूब आउट हुए, अब फराज आउट हुए, दोनों विकेट्स ने बहुत जान फेंक दी है। जी हाँ, बिल्कुल नया बॉल किया था नजीब ने और इस दफ़ा पुराने बॉल से बॉल किया और रिवर्स स्विंग हासिल की। बाहर निकला बॉल थोड़ा सा और बड़ा थिन एच। सेमी न्यू बॉल है, शाइन के साथ स्विंग होता है। साइड स्क्रीन से खुश नहीं थे फवाद आलम, और ये हमने पहली बार नहीं देखा है। ऐसा अक्सर होता है और अक्सर यही वजह होते हैं ये जो इंसान आपको नजर आ रहे हैं स्क्रीन पे। और नाम मेरा लगा दिया, हम तो अंदर बैठे हुए हैं, हम तो नजर ही नहीं आ रहे और खुद और इख्तिताम पजीर हुआ 61 पे 3। अच्छा ओवर नजीबुल्लाह का। नजीबुल्लाह का साथ निभाएंगे आकिफ जावेद, जिन्होंने पहली विकेट हासिल की थी उमैर बिन यूसुफ की। थोड़ा हैरान कुन डिसीजन था इनको नया बॉल ना देना, क्योंकि हम जानते हैं कि नए बॉल से बहुत शानदार बॉलिंग करते हैं। आज फर्स्ट चेंज पे बॉलिंग करने आए, रिलेटिव नया बॉल है, अभी शाइन बाकी है। आप देख सकते हैं जो हाथ में उन्होंने पकड़ा है, एक साइड तो बिल्कुल ही नई लग रही है। अभी इवन वो मार्क भी है, 15 ओवर्स ही हुए हैं अभी। अच्छे एरियाज में बॉल करते हैं। जी हाँ, अच्छे एरियाज में बॉल करते हैं। और ये दो डिसमिसल्स जो हुए, एक ये लंच से पहले साइम अयूब अपनी क्रीज पे पहुंच चुके थे और यहाँ पे आके इन्होंने ये हरकत की। और ये जो दूसरे आउट हुए फराज, अभी अभी आए थे क्रीज पे, चौथा बॉल था, पुश करने गए, अपने आप को कोस रहे थे। अगर इस बॉल को सॉफ्ट हैंड से खेलते तो आराम से बल्ले में आना था। एक मॉडर्न डे बैटर जो कि पुश करने चाहते हैं, रन्स की तलाश में रहते हैं, लेकिन इंटेंट दिखाने का ये मतलब नहीं कि आप रेकलेस हो जाएं। आपको रिस्पेक्ट तो अभी भी देनी है बॉलर को। आपको हर बॉल मेरिट पे खेलना है, बुरे बॉल का वेट करना है। ये इंटेंट है कि आप बुरा बॉल जब आपको मिले उस पर रन्स किए जाएं, वो ब्लॉक नहीं होना चाहिए। और ऐसी पिच पे अली मार्जिन ऑफ एरर फास्ट बॉलर्स के लिए भी कम होता है, जहाँ पे बॉल अच्छा बल्ले पे आ रहा हो, थोड़ी सी लाइन आपकी इधर उधर हो तो वो रन्स ही रन्स हैं। हमने देखा है इधर काफ़ी सारे मैचेस में जो बैट्समैन अपनी लिमिटेशंस में खेलते हैं वो रन्स करते हैं। और लाजवाब तरीके से खेले हैं, स्टैंड एंड डिलीवर। सऊद शकील आज शानदार फॉर्म में नजर आ रहे हैं और इस शॉट से अंदाजा लगा सकते हैं आप कि कितना अच्छा बॉल उनका नजर आ रहा है और कितना अच्छा बॉल बल्ले पे आ रहा है। थ्रू द कवर्स 4 रन हासिल किए।
जी हाँ, पेट शॉट है इनका। स्लॉट में बॉल हो तो बहुत अच्छा टाइम करते हैं, हैंड आई कोऑर्डिनेशन बहुत अच्छा था, और हेड पोजीशन, फ्रंट लेग क्लियर होती है इनकी, ज़्यादा मूवमेंट नहीं करते अपनी अगली टांग को, पिछली टांग से लाइन में आके और अगली टांग को अलाइन करके शॉट खेलते हैं। बहुत ही अच्छा शॉट, ये रेगुलरली हमने देखे लास्ट इनिंग में जो इन्होंने 100 किया है, रेगुलरली ये शॉट खेला इन्होंने। ये इस चीज़ की मिसाल है कि बैट्समैन बॉलर आपको खुद बॉल देगा। ये वो बॉल था, अब ये बॉल पीछे का बॉल है, आराम से आके उन्होंने खेला। जहाँ बहुत ही टैलेंटेड हैं साउथ शकील, पाकिस्तान टीम के आसपास तो बिल्कुल फिर रहे हैं, लेकिन अभी तक प्लेइंग 11 में उस तरीके से जगह नहीं बना पाए हैं। ऑलमोस्ट 1 साल से टीम के साथ ट्रैवल कर रहे हैं। किस नंबर पे आपको लगता है ये नंबर इनके लिए सूटेबल होगा? नंबर 3, जहां पे अजहर अली इतने फॉर्मेडेबल बैटर हैं। एज, लेकिन ये बॉल चला जाएगा फील्डर्स के दरमियान से 4 रन के लिए। अगर आप बहादुर हैं तो किस्मत भी आपका साथ देती है। थोड़ा फ्लैशी जरूर थे, थोड़ा रिस्की जरूर थे, लेकिन काम कर गया उनके लिए। ये बहुत क्लोज था ये बॉल, और कट वाला बॉल नहीं था। लकी रहे कि गैप में गया बॉल, एयर में था लेकिन गैप में था। चौथी स्लिप बिल्कुल उनके हाथ में होती, अगर चौथी स्लिप होती तो। ये जो सेकंड स्लिप का फील्डर है, ये मेरी लाइकिंग में इधर ही होना चाहिए, इधर के आसपास, थोड़ा सा राइट साइड पे, थोड़ा सा बाहर होना चाहिए इसको, क्योंकि बड़ा ये इस एरिया में बहुत बॉल जाते हैं। जब आप विकेट्स लेने की तलाश में हो तो शायद तीसरा स्लिप अर्ली ऑन लंच के बाद बैटर्स का भी उस तरीके से मूवमेंट हो नहीं रही है, तो आप रख सकते हैं। इसकी एग्जांपल अभी हमने आखिरी बॉल देखा, जो अगर तीसरी स्लिप खड़ी होती रेगुलर पोजीशन पे तो सीधा रेगुलर कैच था। ये लकी रहे साउथ शकील। यहाँ पे ओवर का इख्तिताम हुआ 69 पर 3 सिंध। सिंध का बैटिंग कार्ड, उमैर बिन यूसुफ ने आज ओपन की, 19 रन किए। साइम अयूब रन आउट हुए अनफॉर्चुनेटली 30 रन बना के, और सैयद फराज अली कोई रन स्कोर ना कर सके। सऊद शकील और फवाद आलम अभी अभी क्रीज पे हैं। 69 फॉर 3 सिंध। जो ट्रेल है वो एग्जैक्ट 200 रन की है सिंध की। एक भारी जिम्मेदारी है फवाद आलम और सऊद शकील पे कि यहाँ से अपनी टीम को इन मुश्किलात से कैसे निकाला जाए। और बहुत जल्दी सिचुएशन चेंज हुई है सिंध की। लंच से पहले बहुत स्मूथ नज़र आ रहे थे, जब साइम और साउथ खेल रहे थे कोई मुश्किलात पेश नहीं आ रही थी। अच्छा बॉल है ये, 1 रन हासिल किया, ऑफ द मार्क हुए फवाद आलम। ये नजीबुल्लाह पुराने जो बॉल बिल्कुल नया था, थोड़ा सेमी न्यू बॉल है, इसके साथ थोड़े इफेक्टिव लग रहे हैं। और जिस तरह हमने देखा फराज को भी आउट किया, ये बॉल भी थोड़ा सा अगर आप देखें तो मूवमेंट नज़र आई हमें। या लेंथ थोड़ा ज़्यादा आगे थी, मुंह में बॉल कर दिया, क्योंकि अब तक एहसास हो जाना चाहिए कि थोड़ा खिंचा हुआ बॉल ही इस पिच पे कामयाबी दिलाएगा आपको। बहुत ही एलिगेंट लगते हैं साउथ शकील जब ऑन साइड पे खेलते हैं। रिस्टी है, ऑफ साइड पे भी ड्राइव्स अच्छी मारते हैं। अच्छा प्रॉस्पेक्ट है, नीट खेलते हैं। जी हाँ, टेक्निकली करेक्ट है, बिल्कुल नीट खेलते हैं, अच्छे प्लेयर हैं। शॉट्स की रेंज अच्छी है इनकी 4 डे क्रिकेट के हिसाब से। और आपको लगता है कि कप्तानी मिलने के बाद एक चेंज सा देखने में मिला, एक मैच्योरिटी सी आई है साउथ शकील में? एक बार फिर लाजवाब तरीके से ड्राइव जरूर मारी थी, लेकिन गैप नहीं तलाश कर पाए। यंग बैटर पे अगर जिम्मेदारी यासिर डलती है, जैसे साउथ शकील है, यंग है सिंध के लिए, और इतनी बड़ी जिम्मेदारी हो, इतने बड़े प्लेयर्स आपके अंडर खेल रहे हो, तो कई प्लेयर्स के लिए ये काम करता है, कई के लिए नहीं भी काम करता। जी हाँ, मोस्टली जो इस तरह के प्लेयर्स होते हैं, जो टैलेंटेड होते हैं, अपकमिंग होते हैं, उनके लिए तो डेफिनेटली करता है, क्योंकि जो मिसिंग एलिमेंट्स हैं वो उनको जो है वो फिल करना शुरू कर देते हैं अपनी वो
बैटिंग में ज़िम्मेदारी से काफ़ी फ़र्क पड़ता है, क्योंकि उनके ऊपर बोझ होता है, उनके ऊपर जिम्मेवारी होती है, उससे निखार आता है उनके खेल में और सिलेक्शन अच्छी हो जाती है शॉट्स की। और उल्टा भी पड़ता है बैटर्स पे, यंग बैटर्स पे। कभी ऐसा एग्जांपल आपने देखी हो कि कप्तानी दी गई और अपनी बैटिंग पे इफेक्ट आ गया हो? जैसे सचिन तेंदुलकर एक बहुत बड़ी एग्जांपल है हमारे सामने दुनियाई क्रिकेट में, कि जब उनको कप्तानी दी गई तो उनके अपनी बैटिंग पे बहुत इफेक्ट आ गया, तो उनको कप्तानी छोड़नी पड़ गई थी। सचिन आई थिंक बड़े हाई एक्सपेक्टेशंस थी उनसे, तो शायद वो एक डबल प्रेशर हो गया उन पे, तो ये भी एक चीज़ है। शॉट बहुत ही अच्छा शॉट ऑफ द टोज, 4 रन्स हो जाने चाहिए मेरे ख्याल से। इनका फुट जो है वो बाहर हो गया था, बहुत ही अच्छा शॉट। या ऑन साइड पे खेलते हुए तो कमाल लगते हैं। ये आगे भी हम बात कर रहे थे कि लाजवाब तरीके से टाइम करते हैं, बड़े एलिगेंट लगते हैं। करीब आने दिया बॉल और गैप में खेले, और ये ऐसा टीजिंग सा ये चेज था कि फील्डर को हमेशा लगता है कि वो रोक लेंगे, लेकिन इन पे नाकाफी हो जाती है ये चेज। खुरम शहजाद अच्छी स्प्रिंट लगाई थी, लेकिन बॉल जीत गया। 4 रन हासिल किए, 19 रन पर पहुंच गए हैं साउथ शकील। अच्छा छोड़ा, ओवर का इख्तिताम हुआ 74 पे 3। इधर क्या है तुझे? जहाँ हम बात कर रहे थे यंग कैप्टन्स और रिस्पॉन्सिबिलिटी देने की बात, साउथ शकील ने तो शानदार तरीके से निभाई है, अपनी लीडरशिप क्वालिटीज़ दिखाई है इन्होंने। जिस तरीके से उन्होंने नेशनल T20 में सिंध को लीड किया, चैम्पियन बनवाया सिंध को। और मैंने तो बहुत करीब से इनको गौर किया, क्योंकि इंटरव्यूज़ यूजुअली जब टॉस पे मैं ही करता था, तो कॉन्फिडेंस दिन ब दिन इनका बढ़ता ही चला गया। मीडिया हैंडलिंग शानदार रही, आंसर्स बहुत कमाल के रहे, स्पॉट ऑन आंसर्स रहे। तो हम कह सकते हैं कि सिंध को एक बहुत सेंसिबल कप्तान मिल गया है, जो कि लंबे अरसे तक कप्तानी करेगा। और ये तो लंबे अरसे से खेल ही रहे हैं, बल्कि बहुत लंबे अरसे से खेल रहे हैं। 14,000 से ज़्यादा रन्स बना चुके हैं इस लेवल पे। एक बहुत ही ग्रेट कहेंगे क्रिकेटर पाकिस्तान डोमेस्टिक क्रिकेट के अंदर। यहाँ पे चांस हो सकता है, नॉन स्ट्राइकर पे लकी रहे, बॉल बैक साइड पे ज़रूर लगी है, लेकिन विकेट बच गई है। जी हाँ, डायरेक्ट हिट। यार डायरेक्ट हिट जरूर लगी, लेकिन जगह गलत थी, बॉडी में लग गई, विकेट्स में लगनी चाहिए थी। हाँ जी, विकेट्स पे लगती तो शायद कोई अपील का चांस बन सकता था। ये अच्छा किया जंप नहीं लगाई उन्होंने। यहाँ साउथ शकील की आप बात कर रहे थे कप्तानी के हवाले से, और उनकी अपनी बैटिंग में भी निखार है। उनकी टीम बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही है इस वक्त। जो सिंध की टीम है, उनका इंटेंट ऐसा है कि वो यही लग रहा है कि अब देखें, इनका एक प्लान है जो पिछले मैच में इन्होंने किया, 100 रन की लीड, और फिर इनके पास अबरार अहमद हैं जो किसी भी टीम को आउट कर सकते हैं। तो ये एक इनके पास बहुत बड़ा एडवांटेज है। फिर T20 में इन्होंने बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दी, साइम अयूब की सूरत में, उमैर बिन यूसुफ की सूरत में। इनको एक ऐसे प्लेयर्स मिल गए जो बड़ी अच्छी टोन सेट करते हैं टॉप ऑर्डर पे। कोई भी क्रिकेट हो, 4 डे हो या T20 हो, तो इससे टीम के मोराल बड़ा बढ़ जाता है। या और एक और कैप्टन, एक और यंग कैप्टन जो हमें नजर आए, वो थे कासिम अकरम। नेशनल T20 में उन्होंने कप्तानी की, और जब से उन्होंने कप्तानी संभाली थी तब से तो किस्मत बदल गई थी सेंट्रल पंजाब की। मैचेस जीतना शुरू हो गए थे। एक अच्छे ऑलराउंड प्रोस्पेक्ट है कासिम अकरम भी। तो अच्छा सीजन रहा है ये यंग कैप्टन्स के लिए। तेज बाउंसर है ये, फील्डर से परे है, 4 रन के लिए चला जाएगा। लकी बाउंड्री फवाद आलम के लिए, अच्छा डायरेक्ट किया हुआ बाउंसर था।
जी हाँ, मैं तो अच्छा शॉट कहूँगा इसे, क्योंकि जो बॉल था जिस हाइट पे था उनको पता था इसने अंदर ही जाना है। ये एक्सपीरियंस है इनका। उन्होंने ऐसी शॉट खेली जो अंदर गई, दो ये एज हुआ बट अच्छा शॉट। अच्छा प्लेस्ड एज कह सकते हैं। रन चाहिए जैसे मर्जी आए। 80 रन पर पहुंच गए हैं सिंध की साइड, 3 विकेट्स के वाक़े। ट्रेल जो है वो 189 की है। रन अवेलेबल हैं, लेने वाला होना चाहिए। इसे भी अच्छे तरीके से गाइड किया है कलाइयों की मदद से। 2 रन तो यकीनी मिलेंगे। जी, सिंध की टीम को एक अच्छी पार्टनरशिप की ज़रूरत है अगर वो लास्ट मैच की तरह रिजल्ट्स हासिल करना चाहते हैं। एटलीस्ट कुछ लीड बोर्ड पे हो तो वो बलूचिस्तान की बैटिंग पे प्रेशर डाल सके। इन दोनों का खड़े होना बहुत ज़रूरी है। एक आध सेंचुरी हो इन दोनों में से किसी की, बड़ी इनिंग हो। सऊद शकील अच्छा खेल रहे हैं और फवाद आलम हम जानते हैं उन्हें बारी लेने में बहुत माहिर हैं। अगर सबसे ज़्यादा मैंने किसी को मसाइल में देखा है तो वो फवाद आलम है, इसमें कोई शक नहीं है। अक्सर हमने देखा है कि साइड स्क्रीन से खुश नहीं होते हैं, लेकिन शायद इस बार साइड स्क्रीन का मसला नहीं था, लेकिन इनके साथ ही होते हैं सब मसले। मसला ये है अच्छा, इस बार मक्खी आ गई थी एक पिच पे। बयासी पर 3। एक 187 रन ट्रेल है सिंध की। 82 पर 3 विकेट्स गवा चुके हैं अपनी पहली इनिंग में। साइम अयूब ने 30 रन बनाए, अनलकी रहे। सऊद शकील 20 रन पर करीज पर मौजूद हैं। पहली इनिंग में 269 रन बना सकी थी बलूचिस्तान की टीम। 260 रन बनाए हसीबुल्ला और इमरान भट्ट ने। गुलाम मुदस्सिर के शानदार 5 विकेट्स। डेढ़ 150 रन की बड़ी इनिंग खेल चुके हैं इस सीज़न में अभी तक सऊद शकील, लेकिन यहाँ रावलपिंडी में हमें देखना होगा बड़ी इनिंग। अजीम घुमन बहुत ही टैलेंटेड, बहुत वक्त गुजारा उन्होंने पिछले मैच में यासिर हमीद के साथ, और उसका रिजल्ट हमें देखने को मिला इस मैच में। जो चीज़ मैंने उन्हें समझाई थी उस चीज़ पे उन्होंने फिर भी अप्लाई नहीं किया। इस वजह से कहते मेरे पास टाइम नहीं, तो वो चीज़ ठीक करेंगे तो टाइम गुजारेंगे, क्योंकि इनका हेड जो है वो घिर रहा है। अगर इनकी हम डिसमिसल देख सकें एक दफ़ा। या बहुत ही टैलेंटेड और एक्सपीरियंस्ड प्लेयर हैं अजीम घुमन, काफ़ी अरसे से खेल रहे हैं, और आई एम श्योर जितनी बात यासिर से करते रहेंगे इम्प्रूवमेंट आती चली जाएगी। अच्छी बात ये थी कि हाँ हाँ तो इस तरह कर रहे थे, मुझे लग रहा था कि 50 और 100 तो कहीं नहीं गया। ये देखें, ये अब ये इन्होंने जो बॉल खेला, इनको ये लगा ये ऑफ स्टम्प का बॉल है, वो 6 स्टम्प का बॉल था। एक रन हासिल किया सऊद ने। 100 से ज़्यादा फर्स्ट क्लास गेम्स खेल चुके हैं घुमन, तो क्या इस लेवल पे भी यासिर आप टेक्निक चेंज कर सकते हैं, या सब साइकोलॉजिकली आप सिर्फ एक दो बात बताएं और सब चेंज हो सकता है? देखिए, ये चीज़ें तो आपको एडजस्टमेंट्स करनी पड़ती हैं अच्छी फॉर्म में रहने के लिए। रन करने के लिए आपको टेक्निकली ठीक रहना पड़ता है, क्योंकि आपकी कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ प्रॉब्लम हो रही होती है, इस वजह से रन नहीं होते। बड़ी छोटी माइनर एडजस्टमेंट्स होती हैं, लेकिन जब आप फॉर्म में होते हैं तो आप वो सारी चीज़ें बेहतर कर रहे होते हैं। जब आप आउट ऑफ फॉर्म होते हैं वो छोटी सी चीज़ भी बड़ी लगती है। फवाद आलम जो कि
अनऑर्थोडॉक्स इनका स्टांस है, लेकिन जब इनका जिस वक्त ये बॉल को फेस करते हैं उस वक्त इनकी पोजीशन बिल्कुल ठीक होती है, हेड सही होता है, रेडी होते हैं और इनका पॉइंट ऑफ कांटेक्ट भी बिल्कुल ठीक होता है, तो इस वजह से इतने कंसिस्टेंट है। जहाँ दाद तो देनी होगी फवाद आलम को भी, इतने अनऑर्थोडॉक्स एक्शन के साथ इतने ज़्यादा रन्स कर दिए, ये कमिटमेंट लेवल है। गैप में बॉल गया है, देखना होगा कि रेस कौन जीता है, अजीम घुमन या बॉल। अच्छी एफर्ट है ये, शानदार एफर्ट, कमाल की एफर्ट, कमिटमेंट लेवल कमाल का। ये यासिर हमीद का असर है, मैं कह सकता हूँ। चले कुछ तो फ़ायदा हुआ मेरी बातों का, और बहुत ही अच्छी फील्डिंग, बहुत अच्छा शॉट था, खूबसूरत शॉट, बहुत अच्छा टाइम किया था, काफ़ी टाइम मिला उनको शॉट खेलने के लिए। बहुत अच्छी स्प्रिंट अजीम की, और ये हो जाना चाहिए था। अच्छी एफर्ट अजीम की। शानदार एफर्ट, वेल डन यासिर हमीद। अजीम घुमन तकरीबन 10 साल से खेल रहे हैं फर्स्ट क्लास क्रिकेट, काफ़ी पुराने सीजनल प्लेयर हैं। काफ़ी कमिटमेंट क्रिकेटर हैं, काफ़ी फर्स्ट क्लास से खेल रहे हैं, पाकिस्तान अंडर 19 को भी रिप्रेजेंट किया, अच्छे शानदार बैटर हैं। सतासी पे 3। काशिफ भट्टी को अभी तक हमने बॉलिंग में नहीं देखा है, लेफ्ट आर्म स्पिन ऑप्शन अवेलेबल है बलूचिस्तान के पास, अभी तक फास्ट बॉलिंग पे ही मुनसर रहे हैं। नहीं हमेशा हमेशा। देखिए साइम अयूब, साउथ शकील, फराज, फवाद आलम, साद खान, 5 लेफ्ट हैंडर्स, लेकिन ऑफ स्पिनर की ज़्यादा ऑप्शन मौजूद नहीं है। असद शफीक खुद कर सकते हैं, एक ऑप्शन है कि असद शफीक खुद बॉलिंग पे हैं, ऑफ स्पिनर हैं, 2 लेफ्ट हैंडर्स हों क्रीज पे तो, लेकिन अभी 2 फास्ट बॉलर सही काम कर रहे हैं। ये अच्छा रन है, ये तेज़ रन है, ये एक्सपीरियंस है। बहुत अच्छी रनिंग बिटवीन द विकेट्स। फवाद आलम जो कि प्रोएक्टिव होते हैं क्रीज पे, कोई भी ऐसा मौका जाने नहीं देते हाथ से रन्स का। देखा फील्डर थोड़ा दूर और तेज़ी से भाग के एक रन हासिल किया। ये पार्टनरशिप बहुत इम्पॉर्टेंट है सिंध के पॉइंट ऑफ व्यू से। एक और अच्छा रन, काशिफ भट्टी एक ऑप्शन है, हुसैन तलत एक ऑप्शन है, असद शफीक भी अच्छी ऑप्शन है, ऑफ स्पिन करते हैं, हारिस सोहेल लेफ्ट आर्म स्पिनर है, ये भी एक ऑप्शन है। तो काफ़ी ऑप्शंस अवेलेबल हैं, बॉलिंग ऑप्शंस। मेरे ख्याल से काशिफ भट्टी को लाना चाहिए, थोड़ा सा स्पिन इंट्रोड्यूस करें, क्योंकि 20वां ओवर है, 1-2 ओवर्स में मेरे ख्याल से इनको ज़रूर लाना चाहिए, और उससे ये होगा कि थोड़ा गेम का मोमेंटम चेंज होगा, उससे फास्ट बॉलर को भी हेल्प मिलती है, कभी कभी विकेट हासिल करने के लिए माहौल बन जाता है। ये क्योंकि अभी तो दोनों अच्छे तरीके से मैनेज कर रहे हैं फास्ट बॉलिंग को, फवाद आलम भी, साउथ शकील भी,
राउंड द विकेट अब ट्राई करें, इसे अच्छी तरीके से पुल किया है, फील्डर मौजूद है लेकिन पहुंच नहीं पाएंगे, ये बॉल 4 रन के लिए चला जाएगा। फवाद आलम आहिस्ता आहिस्ता अपने मूड में आते हुए। बहुत अच्छा शॉट, और एक बार फिर वो जानते थे कहाँ पे वो शॉट मार रहे हैं। स्क्वेयर का फील्डर ऊपर था, फाइन लेग खड़ा है और बहुत बड़ा गैप 4 रन के लिए। बहुत अच्छा शॉट। अच्छा स्टार्ट फवाद आलम का, और मेरे ख्याल से यहाँ से लंबी इनिंग्स खेल सकते हैं। अगर इसी तरह की बॉलिंग होती रही तो इनको काफ़ी चांस है इनका कि रन्स कर जाएं। राउंड तो विकेट बॉलिंग कर रहे हैं आकिफ जावेद, किस तरीके से अनकंफर्टेबल करना चाह रहे हैं फवाद आलम को, क्योंकि इस तरीके से एलबीडब्ल्यू तो मिलेगा नहीं मोस्ट ऑफ द टाइम। आई थिंक वो गैप तलाश कर रहे हैं, शायद वो आउट बोल्ड करने के चक्कर में, लेकिन वो ओवर द स्टंप आ गए। अब नहीं, राउंड ही कर रहे हैं। शायद आउटसाइड द ऑफ स्टंप ड्राइव खिलवाना चाह रहे हैं, लेकिन उनको नहीं भूलना चाहिए कि फवाद आलम बहुत एक्सपीरियंस्ड हैं। वो ऐसी सिचुएशंस में बहुत बार रह चुके हैं, बहुत बार उन्होंने अपनी टीम्स को, जिस भी टीम से वो खेले, मुश्किलात से निकाला है। 93 पर 3 आउट हैं फवाद आलम के लिए, ये टेलर मेड सिचुएशन है। उनको ऐसी सिचुएशन में बैटिंग करनी आती है, और ये आगाज़ जो है 14 बॉलों पे 16 रन, ये कॉन्फिडेंट आगाज़ है, इसमें तीन बाउंड्रीज शामिल हैं, तो काफ़ी कॉन्फिडेंस मिलेगा फवाद को। अभी तक हमें बड़े रन्स नहीं मिले हैं, क्या ये वो इनिंग है जहाँ पे हमें फवाद के बड़े रन्स मिलेंगे? जी हाँ, रन रेट भी बहुत अच्छा है 4.69, और अख्तिताम पजीर हुआ 93 पे 3। Just a joke. Already a breakthrough in the session for Balochistan. The wicket of Faraz. After lunch, Najibullah has found a much better rhythm after lunch. See that ball carrying very nicely. South is probably following the same game plan that he had in the previous game. Taking his time, digging deep. And Fawad Alam, by contrast, he started off in a bright and breezy fashion, looking to play his strokes. Two slips in a gully. Pretty regulation field for Najibullah. It's a magnificent cut shot, but the protection is there. So this is a very good all-round player. It's a good time to welcome along in the comm box for the first time this afternoon. Very good afternoon, K. Asif. Thank you, Shafaisal. It was a very good-looking cut shot. Protection is there. Skipper of Sindh and Fawad Alam, both of them, the batters are very experienced, seasoned, and performer as well for Sindh. Fawad Alam has been around for quite some time now, and he's seen these situations many times before. The third slip has been sent in. That cover gap it's been shown to Fawad Alam if he's willing to hit the ball through that gap. There's a sweeper at backward point, but look at that, acres of space on the offside in front of square. Sorry, yaar. Sorry, bhai. Fawad Alam once again not happy, and Najib showing his frustration.
Is any movement behind the side screen? Fawad is a very, very fussy character. He wants everything to be in the right position. Yes, look at that. There was a slight fun from Najibullah. And yes, even both of them, they enjoyed. I think he's asking now everything is fine for Fawad Alam. Three slips in a gully. He's showing that leg stump to Najibullah, but good enough to clip it neatly for a couple of runs. Asif, if you look at the slip cordon, the staggering of the slip cordon is something that I don't like. They're too close for my liking. And they're not covering enough area. Now the third slip has come out. It was there just for the one ball. Yes, that's right. But see, if we talk about the slip fielding, especially when Fawad Alam is playing, yes, there is no gap. See now, they're really close to each other. Haris Suhail is an excellent slipper. He can ask the man at the second slip to just go a little wide, because Haris is a left-hander as well. More aggression from Najibullah. See that second slip? He's a fair way ahead of Haris, which is a good thing. But the distance, the gap is not big enough. As far as concerned, Fawad Alam's form and his batting was struggling against in-swingers. And Najibullah isn't coming round the stumps, just coming over the stumps. Sindh coach Neil Johnson is right behind the bowler's arm. He's found a good vantage point for himself. Probably will be getting a great view from there. Just underneath our cameras. Looking to find that leg stump, but Fawad Alam having good balance today. That's the key to his batting today. He's looking in good order. 96, 97 for 3. Yes, if you're talking about the line of attack from the Balochistan bowlers, you know, we've seen a lot of Fawad Alam recently. He's really struggled against right-arm bowlers bowling around the wicket to him and the left-arm bowlers bowling over the wicket to him. We've seen a complete contrast. Last over, Najib was bowling over the wicket and Akif was bowling round the wicket. We've seen Stark and Cummins bowl to Fawad Alam and present him with a lot of trouble. Completely different angles though, what Balochistan is employing against him. I think now he's coming over the wicket. That is a better ploy. Five-4 field. It's been constant short pitch bowling there from Balochistan bowlers against Fawad. He's certainly working on a plan here. If you see again that the way he is bowling not confidently, if you could see that, because see the face isn't behind the bat. Look at that. Yeah, I mean, head behind the bat, yeah? This is what I was asking to you.
This bounce is good on this pitch, so you can really trust the bounce and play the horizontal bat strokes. Last game when we talked to Khurram Manzoor, who scored a magnificent 100, this is what he said. So Asad Shafiq is thinking differently. This is his line of attack. You see that fine leg has gone back and it's really fine. So there's 3 sweepers now on the onside. But this is way out in front. So this picking the length a bit better. Couple of runs for the Sindh skipper. Azim Guman was there. Wasn't in good mood, in good touch. It's Hussain Talat. Warming up, probably the all-rounder will be required to bowl at some stage in this session. Keep an eye on him because he had a little shoulder niggle last night. With on offer, disappointed Saud Shakil. You heard that grunt. You feel he missed out there. He wanted to cut that, but wasn't in a good position. Saud Shakil not out on 25 on 44 deliveries. Had a good game against KP, and of course that when you're winning, getting some confidence. Bit sharper, but too high to bother Saud, and in fact a wide being given. Like I said, Saud made that 100 in the last game. He wasn't at his fluent best, but he was prepared to take his time, and exactly the same he's trying to do here. This was too high. Saud is not a tall man. Look at how short Akif dig that one in. Lovely bowling, Akif. Do you agree with this tactic of bowling exclusively short when there is some movement still for the bowlers with that fuller length? He already taken a wicket in his first over on the second delivery. Omar bin Yusuf. Khurram Shehzad is also stretching him there. I think that Saud Shakil is a very good puller of ball. Khurram Manzoor getting ready. "22 gone, 101 for 3. तगड़ा चाहिए था थोड़ा अच्छी जगह तो See how far up are Neil Johnson and one of his coaching staff there, keeping a close eye on the proceedings. The best angle, really, right behind the bowler's arm. We were talking about the Pindi Cricket Stadium yesterday and how good a view it offers to the spectators. This is not bad either. Could do with some chairs there in that stand and it would look very pretty, very comfortable, and also great view. Hussain Talat, he was stretching and getting ready for bowling in the last over, so he's been given the ball. Handy all-rounder, 44 wickets at an average of 36. He's coming up with one slip, gully, a short cover there, short point. Attacking, fielding for the Fawad Alam. It's exactly the similar field set that
Sindh had yesterday in the afternoon session for Balochistan. Deep point is also in place. That's the fielder in deep. That's the line of attack. Clear give away from this field. Slip in a gully, short point catching. A man in 15 yards from the bat at extra cover. And then there's an extra cover, regulation extra cover, hanging back. Just the two fielders on the onside. Hussain Talat, first two deliveries, targeting just outside the off stump. He has taken a feeder in the deep square leg as well. Quaid-e-Azam must be expecting bounces from Hussain Talat. That's the fielder on the onside, occupant of huge real estate. And there's another one on the onside. Just the two fielders on the onside. A wide mid-on, clearly wants to bowl outside the off stump. Just bore the batters out, I think. No. If Hussain Talat could help out his captain Asad Shafiq, and for Quaid-e-Azam, if he's getting 30, 35, then he'll be in good position because he's got plenty of experience that how to finish the game. Imran Butt, an excellent catcher, now occupying the short extra cover. Generally he's at slip. He made his name for himself playing for Pakistan. At this venue, Rawalpindi, he took some memorable catches in the slip. Hassan Ali was on fire on that occasion. So was Shaheen Afridi. Pakistan ending up winning that test match. Very rare to see a good slip catcher coming out of Pakistan, or a specialist slip catcher. There's plenty of decent ones, but he was the best. I don't want to praise him too much because, you know, the commentators curse hits all the time. What is happening here? Hussain Talat celebrating just the maiden over, I think. Wow, 101 for 3. A lot of discussion about stance, batting stance of Quaid-e-Azam. Unorthodox, I beg your pardon. Quite similar to Shivnana Chandapal. You talk about weird stances for Quaid-e-Azam, Shivnara Chandapal. Both of them, they made it work for themselves. Chandapal obviously did a lot longer at the international level. Fawad kept doing it at the domestic level year after year, and then eventually when he got his call up, he did pretty well for the national side. Still part of the Pakistan test squad, but this is a good change. Khurram Shehzad bowled a longer spell of 7 overs with the new ball. It'll be interesting to see what plan he operates, because he's got two men. This is silky smooth from South Shakil. Stand and deliver. No ball to go with it as well. It's a glorious cover drive from South Shakil. An over pitch delivery, and look at this elegance in this shot. He got that slight bend on the front knee.
he doesn't really bend that front knee, but he's got such lovely hands and that balance. His head is so beautifully lining up the ball that when it strikes the bat, it's just glorious to see. Being better, what was your favorite shot, Shah Faisal, when you used to play cricket? Well, I wasn't good at many of those, that's why I didn't play a lot. Yeah, I used to like the inside-out drive, or just the flick of the wrist as well on the onside. Not anything like this though. He looks very, very elegant. This time the timing is not as good as on the previous one. Still will collect a couple of runs. Good batting from Saud Shakil. Quaid-e-Azam bit struggling with his line. Again, a fuller delivery, fuller length delivery, and placed nicely by Saud Shakil. Like I was mentioning earlier on this pitch, as the season has progressed, once you get in and the ball is slightly older, you can afford to drive through the line. These two things that I mentioned, this is a cracking stroke. Sweeper will come around though. Yeah, the two things that I mentioned when I say hitting the ball on the up on this pitch, you got to get in first. And we saw Faraz Ali made the mistake. He wasn't in. It was only his fourth delivery when he played very loose, way out in front of his body, and he paid the ultimate price for that. But what Saud is doing is that, look at the number of balls he's played, 50 deliveries. This young man looks like an early passion. Same thing which you were discussing earlier, that the Quaid-e-Azam is not coming around the wicket for Quaid-e-Azam. And yes, I think he heard, and now he's coming round the stumps against Quaid-e-Azam. Yeah, that's the better line of attack against Fawad. But the line is also important. We've seen Balochistan bowl 2 straight to Quaid-e-Azam, so he's been able to clip them away easily on the onside. Plenty of runs available, plenty of acreage as well. As you can see now, 2 sweepers still on the onside. That is better. That's experience for you. Chance of an overthrow. Easily done. A gentle push from Quaid-e-Azam, and it was quick throw but wasn't on the target. And look at this again. You see good technique from Quaid-e-Azam. Have a look at how he quickly changes the hand on the grip so he can see the ball, and he wasn't blindfolded towards where the ball went. You may get a chance again from the other angle. But this is good for youngsters if you're watching. That's where you're just ready to capitalize on any error by the fielding side. Nelson's on the board. Again, it's not an action replay. It's the same, similar kind of stroke. Another run. 112 for 3.
Asad Shafiq is really not happy with his fielder, the way they conceded the extra overthrow in the previous over. Have a close look at how Quaid-e-Azam changes the bat from different hand. There you go. See, so he's watching the ball at all times, and he knew there was an opportunity. That is very, very good. Excellent running between the wickets, good awareness and good technique. It's good cricket from Quaid-e-Azam. Some close singles, and then there was a wrong throw. Took an extra run and overthrow. Hossain Talat was so happy with his first batting over. See if he does it again. No, sir. Quaid-e-Azam rotates to strike on the first delivery. It's good proactive batting from these two. Yeah, this is good tactics also because the field is packed on the offside, so there are not many gaps that they can go for the boundary. He just played it gently. He knew how hard he'd hit it. Good judge as well of a single. That's also important. Yes, the fielder on mid-off, he was coming right from the circle, the edge of the circle. There's no circle in four-day cricket. So mid was on his heels, and it was good technique to play with the gentle and soft hand and take singles. Yeah, judging a single is also an important skill. And as a batter, when you hit the ball, you know how hard you've hit it, and then you keep an eye on the fielder. If he's not anticipating, a quick call, and you can get the run completed with ease, and that's exactly what these two did. Small little details makes your life easy as a batter. This is what Hossain Talat is tempting Saud rather to play on that offside, and then bowling outside the off stump, and then telling him, why don't you hit me on the onside, where there's only two fielders. Usually it happens when you in the training and then in the nets, the bowlers they just try to play with you, and this is what Hossain Talat is doing right in the match as well. He's trying to play with the concentration of the batter. Obviously it's too wide for Saud to be tempted. Now the change of field. Another man is going on to the onside. Probably Hossain Talat would like to bowl a bit straighter now. In fact, it's going all the way. That fielder. Yes, a deep square leg for Saud Shakil. I think that Saud Shakil is showing good temperament there. Yeah, it was a bounce, a quick delivery, and a fielder already placed in the deep. Looks like Balochistan are trying too many things too soon. You need to cook a plan, as they say. Keep changing their plans. It means that the conviction is not there even in their own mind that what is the best plan that they can apply, because if that was there, they can be persistent with it for about half an hour or do it consistently. Only 24 overs, 24.5 overs this innings. They've changed their plans so many times. Easy single to finish off the over. 114 for 3. Another glorious sunny afternoon here at the Rawalpindi Cricket Stadium. Not a cloud in the sky. Just a gentle breeze as well.
Look at the blue skies. Perfect settings for a game of cricket. This is what Neil Johnson was raving about in the morning when I had a word with him. It's such beautiful weather to play cricket. We've seen some excellent cricket over these 5 rounds of Quaid-e-Azam Trophy. Bit uncertain Saud there, was looking to shape up for the pull shot. It got too big on him. In the end, reasonably well controlled. Again, came up with a short pitch delivery. Managed well by Saud Shakil. Didn't go for pull or hook shot. Just placed towards third man area. See, the second day pitch has good bounce. That's good angle, good line, good length, comfortable carry. No ball as well. Number 6 for the innings. Overstepping is a problem with Balochistan's fast bowler. A tight call. Very tight. But remember, the line belongs to the umpire. It is the right angle from Khurram Shahzad. But see how long he persists with it. That's the key for Balochistan. Big shout. Big shout. Got a little bat on it. This is what Imran Javed was saying. He's been having a great game so far. Umpire Imran Javed. Good effort, Bengal. Look at this. Oh, good delivery. Very close. Was close to the bat. You can't make out from this replay. Did he get it or not? But also not a lot going for this appeal. The angle was taking the ball down, and also the height as well. But it was given as runs, so not sure from that replay. Good call. Good run once again. Another throw, but look at the difference on that occasion. The bat was grounded. We'll have another look. Umpire Imran Javed called into action again. But Saud Shakil is showing Saim Ayub how it's done. Yes, Saim Ayub was jumping on that time, and this is rightly done by Saud Shakil. Ballau. Bat was there actually, and bat was touching the ground. This guy, Imran Javed, well done. Recently we've seen a lot of the debate about the Mankad style of dismissal, which is called run out now. Balochistan has come up with a secret weapon to try and get the batters run out by throwing the ball at them and making them jump or get away from the line of the ball. Look at that. This is perfect. Saud Shakil, he's a smart man. Very smart. Quaid-e-Azam got onto it quickly. Killer is there. Good running though. Good aggressive running. The throw was good, but the running was even better. Not out. Yes, good mutual understanding, good calls, and making it comfortably. Good running between the wicket. Took first run really quickly, and then, yes, Fawad was in good position. Well done by Quaid-e-Azam and Saud Shakil. That is excellent technique for Quaid-e-Azam
Any youngsters watching? That is the way to turn and then get in with the drag of the bat. Another neat clip. Will collect a couple more runs. Will they go for the third one? Yes, they do. Excellent running once again. Sindh is putting a lot of pressure on the Balochistan fielders and skipper is not happy. Yes, taken first run really quickly. So Shakil was ready for the third one, and yes, brilliant work from both of the batters, and the drinks coming in as the short break for the drink. 1, 2, 3 for 3. उमर बिन यूसुफ 19 रन बना सके. साइम अयूब अनलकी रहे, 30 रन बनाए. सईद फराज अली की लूज शॉट बगैर कोई रन बनाए आउट हुए, और तब से लेके साइम अयूब साउथ शकील और फवाद आलम की पार्टनरशिप जारी है. 123 पर 3 सिंध. एक विकेट हासिल की इस सेशन में अभी तक बलूचिस्तान के बॉलर्स ने. वो फराज अली की लूज शॉट थी. पहला मैच खेल रहे हैं सीजन को, इस तरीके से आते ही पुश मार देना, ये सेंसिबल क्रिकेट नहीं है, ये लूज क्रिकेट है. अपनी वैल्यू देनी चाहिए विकेट को. यासर हमीद, क्या कहेंगे बॉलिंग लाइनअप के बारे में? जी हाँ, खुरम शहजाद 9 ओवर 51 रन दिए. थोड़ा एक्सपेंसिव रहे, कोई विकेट हासिल नहीं की. एक विकेट नजीबुल्ला ने और एक विकेट आकिफ ने हासिल की. एक रन आउट हुआ. सिंध 146 रन पीछे है इस वक्त बलूचिस्तान से. हुसैन तलत अच्छी हैंडी ऑप्शन है ये. 4-5 ओवर्स बीच में आपको करके दे सकते हैं. स्टेडी बॉलर हैं, विकेट भी हासिल कर लेते हैं एवरी नाउ एंड देन. जी हाँ, बैटिंग कदरे आसान हो रही है सिंध की टीम के लिए. 123 रन कर चुके 26 ओवर्स में. 4.7 रन पर ओवर के एतबार से, और
बहुत आगे गिरा हुआ बॉल था, यॉर्कर लेंथ। तो इस तरह अगर सिंध की टीम आज पूरा दिन बैटिंग करती है तो अभी भी इसके बाद एक सेशन पड़ा है पूरा, तो ये लीड उतारने के करीब करीब आ जाएंगे। यहाँ आखिरी बार जब यहाँ पे सिंध की टीम खेल रही थी केपी के खिलाफ, तो खुर्रम मंजूर ने एक धुआंधार आगाज़ दिया था, जिसकी वजह से बहुत शानदार मोमेंटम हासिल हो गया था, जो अर्ली रन्स तेज़ कर दिए थे। इस वजह से लंबी लीड लेने में कामयाब हो गई थी सिंध की साइड। लेकिन यहाँ पे भी साइम अयूब अच्छा खेले, लेकिन आगाज़ उस तरीके से कंटिन्यू नहीं कर सके। अब जो जिम्मेदारी है वो फवाद और साउद पे है कि कितना लंबा लेके जाते हैं इस इनिंग को। जी हाँ, खुर्रम की उस इनिंग ने बहुत मोमेंटम दिया और अपलिफ्ट किया सिंध की लास्ट मैच की परफॉर्मेंस को, और उसमें उन्होंने अपने शेल से निकले खुर्रम, और उसका फ़ायदा ये हुआ कि 100 रन्स की लीड ली। बट केपीके ने 390 रन्स किए थे उस इनिंग में, 382 या 84, 100 रन्स की लीड ली। तो इस मैच में जो बलूचिस्तान की टीम है उन्होंने 200 और 80 रन्स किए हैं आई गेस। तो इस एतबार से अगर देखा जाए तो फिर वही चांस इनके पास बन सकता है लास्ट मैच वाला, लाइक वही चीज़ रेप्लिका कर सकते हैं, अपनी परफॉर्मेंस रिपीट हो सकती है इनकी लास्ट मैच वाली। क्या रिजल्ट आना बहुत मुश्किल है, क्योंकि क्वालिटी क्रिकेट है, दोनों तरफ क्वालिटी क्रिकेटर्स मौजूद हैं। 6 टीमें हैं पूरे पाकिस्तान की, जिसमें पाकिस्तान के बेस्ट क्रिकेटर्स मौजूद हैं। तो ऐसे रिजल्ट्स तो आएंगे, क्योंकि दोनों तरफ से आपको बहुत तगड़ी क्रिकेट देखने को मिलती है। तो अगर उसमें से भी अगर आपको एक कहीं ना कहीं मौका मिल जाए मैच जीतने का, तो आपको वो गंवाना नहीं चाहिए, क्योंकि विकेट्स मुश्किल हैं, टॉप बैटर्स हैं, टॉप बॉलर्स हैं। जी हाँ, टीम की फॉर्म लगी हुई है अभी, और ये इसको जितना मैक्सिमाइज कर सकते हैं इनको चाहिए कि मेक द मोस्ट ऑफ इट। और क्योंकि अब नज़र आ रहा है इनके पास अबरार की सूरत में एक ऐसे बॉलर हैं कि जो किसी भी टीम को आउट कर सकते हैं आखिरी दिन में, तो एक बहुत बड़ा एडवांटेज है इनके पास। यहाँ से सिंध के अलावा भी बाकी टीम्स भी बहुत बैलेंस्ड हैं, बहुत अच्छी टीम्स हैं, इसीलिए शायद रिजल्ट्स मुश्किल से आ रहे हैं। दोनों तरफ हर तरफ क्वालिटी क्रिकेटर्स हैं। जैसे जब आप लोग बैटिंग करते क्रिकेट खेला करते थे तो बहुत सारी ऐसा होता था कि आप वीक टीम भी आपको मिलती थी, लेकिन यहाँ पे वीक टीम्स नहीं हैं। यहाँ पे पाकिस्तान के बेस्ट क्रिकेटर्स हैं इन 6 टीमों में, इसलिए जो आप देखते हैं ज़्यादातर ड्रॉज होते हैं, वो उनकी मेन वजह यही है क्योंकि क्वालिटी प्लेयर्स हर तरफ मौजूद हैं, हर टीम में मौजूद हैं। जी हाँ, यहीं पे जो पॉइंट सिस्टम का है वो आता है सामने, तो इस पर हम बात करेंगे अगले ओवर में। 123 पे 3। जी हाँ, ये पॉइंट टेबल है आपके सामने। नॉर्दर्न जो है 4 मैचेस में 2 मैचेस जीते हैं, 2 ड्रॉ हुए हैं। इनके टोटल पॉइंट है 68। सेकंड नंबर पे सिंध की टीम 4 मैचों में 1 मैच जीती है और 3 ड्रॉ हुए हैं। इनके 51 पॉइंट्स हैं और पंजाब बिल्कुल उनके साथ है। नॉर्दर्न की टीम को देखना इंटरेस्टिंग होगा कि वो कैसी क्रिकेट खेल रहे हैं। सिंध की टीम तो बहुत अच्छा क्रिकेट खेल रही है। और एक चीज़ जो बड़ी इम्प्रेसिव है वो सेंट्रल पंजाब के बोनस पॉइंट्स हैं, 15 बैटिंग के और 15 बॉलिंग के, इसलिए वो मैच जीते नहीं हैं लेकिन फिर भी सिंध के करीब करीब हैं। वो जो पॉइंट्स टेबल की आप बात करके बोनस पॉइंट्स कितने इंपॉर्टेंट है, वो यहाँ पे सेंट्रल पंजाब दिखाते हुए कि अगर आप मैच नहीं भी जीते हैं फिर भी आप उस टीम के मुकाबले पे हैं जो मैच जीती हुई है बोनस पॉइंट्स की वजह से। और केपी तो सरप्राइज़ है कि आखिरी नंबर पे हैं, 26 पॉइंट्स हैं टोटल। या पिछले मैच में भी एक बोनस पॉइंट सिंध की टीम ने मिस किया था जब नया बॉल लेके उन्होंने केपी ने जल्दी जो है मेरे ख्याल से कोई इन्होंने स्लो बैटिंग की थी तो केपी ने नया बॉल लिया था जिसकी वजह से एक बोनस पॉइंट इन्होंने मिस किया था। तो इस तरह की चीज़ें इन पे भी नज़र आजकल इस क्रिकेट में तो डेफिनेटली रखनी चाहिए, रखते हैं। सिर्फ एक ही स्लिप है, थोड़ा नीचे रह गया बॉल, लकी रहे कि बर वक्त नीचे आ गए। केपी आखिरी नंबर पे है,
इस बारे में बात करेंगे यासिर आपसे। ये बॉल थोड़ा स्लो भी था, नीचे भी रह गया, लेकिन अच्छा एडजस्ट कर गए थे एंड पे साउथ शकील। जहाँ ट्रिकी हो जाता है कभी कभी ऐसा बॉल, स्टम्प्स में चला जाता है, लेकिन सऊद ने अच्छा एडजस्ट किया। खुरम शहजाद काफ़ी एक्सपेंसिव रहे हैं, 10वां ओवर कर रहे हैं, 52 रन दिए, कोई इंटेंट इनकी तरफ से भी नज़र नहीं आई, नया बॉल भी स्विंग नहीं हुआ इनका, रन भी काफ़ी दिए। जहाँ 5 की रन रेट से ऊपर बॉलिंग कर रहे हैं, इकोनॉमी इनकी खुरम शहजाद की 4 डे क्रिकेट में ये ज़्यादा है। जैसे आप कह रहे हैं कि विकेट्स भी हासिल नहीं किए हैं, रन्स भी दिए हैं, तो जब आप लीडिंग बॉलर होते हैं एक टीम के तो आपसे इससे बेहतर तवक्को की जाती है। जी हाँ, मेरे ख्याल से थोड़ा सा आउट ऑफ द बॉक्स सोचना पड़ेगा अच्छा शफीक को। स्पिनर्स भी हैं इनके पास, अभी तक हमने काशिफ भट्टी को नहीं देखा बॉलिंग करते हुए। 28वां ओवर हो रहा है इनिंग्स का और अभी तक उन्होंने बॉलिंग नहीं की, जो कि स्ट्रेंज है थोड़ा सा। 2 रन मिल जाएंगे फवाद आलम को। काफ़ी डिसअपॉइंटेड हुए हैं फवाद आलम, क्योंकि शायद वो समझते थे कि 3 रन मौजूद थे, लेकिन सऊद शकील तो किसी मूड में नहीं थे, तो बहुत रिलैक्स्ड खड़े थे नॉन स्ट्राइकर एंड पे। लेकिन फवाद के अकॉर्डिंगली शायद ये 3 रन हो सकते थे, 2 ही पे अब गुजारा करना होगा। अच्छे तरीके से गैप पे खेले थे फवाद। जी हाँ, फवाद चाहते थे ये 3 रन हों। बहुत ही लेजी एफर्ट और लेजी सा थ्रो कर दिया था नजीबुल्लाह ने। तो यासिर केपी की बात करते हैं, डिफेंडिंग चैंपियंस हैं, ऑलमोस्ट सब इवेंट्स ही जीतते चले आ रहे हैं, लेकिन इस बार नेशनल T20 से अगर आगाज़ करें, ठीक है वो फाइनल में पहुंचे, लेकिन फाइनल वाली परफॉर्मेंस नहीं थी उनकी। अपनी ग्रिट और अपने पैशन की वजह से पहुंच गए, लेकिन मसाइल बहुत हैं इस बार हमें नज़र आए। कोऑर्डिनेशन हमें नज़र नहीं आई, कॉम्बिनेशन नज़र नहीं आया, बैटिंग में मसाइल हमें काफ़ी नज़र आए। डिफेंडिंग चैंपियन यही वो प्लेयर थे जो शायद लास्ट ईयर भी खेले थे 1-2 चेंजेस के अलावा। तो कहाँ आपको लगता है कि केपी पीछे रह गया, आखिरी नंबर पे है? जो इश्यूज नज़र आए हैं, एक तो कोई स्ट्राइक बॉलर नहीं उनके पास जो रेगुलरली आउट कर रहा हो, ये बहुत ज़रूरी होता है 4 डे क्रिकेट में। आपका एक बॉलर हो जो 5-5, 4-4 आउट करो हर इनिंग में, तो उससे एक मोमेंटम बनता है। 1 to 7 for 3। और उसके साथ साथ कोई बैट्समैन भी जो हैं उनके उस तरह क्लिक नहीं कर रहे। एक यंगस्टर है वकार, उन्होंने 100 किया, 250 किए, और इसके अलावा जो उनके मेन प्लेयर्स हैं जिस तरह कामरान गुलाम, उन्होंने भी रन किए, लेकिन 4 डे में आपको आउट करने होते हैं, आपको टीम को 2 दफ़ा आउट करके तभी आप मैच जीतते हैं। तो आपके पास अगर बॉलर नहीं है तो आप फिर मुश्किल हो जाएगा। काशिफ भट्टी को हम देख रहे हैं, आए हैं पहली दफ़ा बॉलिंग के लिए इस मैच में। 28 ओवरों के बाद इनको लाया गया, 104 मैचेस खेल चुके हैं मीडिया सेंटर एंड से। अच्छे बॉलर हैं ये, और ये रिकॉर्ड भी बहुत शानदार है। 401 विकेट्स हासिल कर चुके हैं इस लेवल पे, 23 बार 5 विकेट्स हासिल किए और 8 विकेट बेस्ट बॉलिंग है इनके एनालिसिस है। यहाँ पे 2 लेफ्ट हैंडर्स को बॉलिंग करने का चैलेंज होगा, और वो जो मिथ है कि फिंगर स्पिनर, लेफ्ट आर्म फिंगर स्पिनर लेफ्ट हैंडर को उतनी अच्छी बॉल नहीं करते, उसको तोड़ना होगा काशिफ भट्टी को, वहाँ पे विकेट हासिल करनी होगी। ये पार्टनरशिप 66 रन पर पहुँच गई है। जहाँ केपी की हम बात कर रहे थे यासिर, तो क्या एक ये भी वजह है कि क्वालिटी स्पिनर मौजूद नहीं है? या साजिद खान है, लेकिन उस तरीके से वो फॉर्म उनकी नज़र नहीं आई हमें, जहाँ पे वो स्ट्रगल कर रहे हैं, एक वो भी एरिया है। जी हाँ, स्पिनर्स की अगर बात करें तो साजिद खान थोड़ा सा स्ट्रगल नज़र आ रहा है उनकी उसमें। खालिद उस्मान लास्ट मैच नहीं खेले थे, ये मैच भी शायद वो, क्योंकि एबटाबाद में मैच है, ओवरकास्ट कंडीशंस हैं, तो पता नहीं, आई एम नॉट श्योर वो खेले या नहीं खेले।
एक और आसिफ है उनके, वो नहीं है इस सीज़न में, तो थोड़ा सा उनको प्रॉब्लम हो रहा है बॉलिंग साइड में, जिसकी वजह से उनकी परफॉर्मेंस उस तरह अप टू द मार्क नहीं है। जहाँ बहुत शानदार पॉइंट आपने रेज किया है कि लंबी क्रिकेट में, 4 डे क्रिकेट में आपको 2 बार टीम स्काउट करना होता है, तो जब तक आपके पास एक्स फैक्टर बॉलिंग में नहीं होगा, एक विकेट टेकिंग ऑप्शन बॉलिंग में नहीं होगा, आप नहीं मैच जीत पाएंगे। और इसकी एग्जांपल है सिंध, जिनके पास अबरार मौजूद हैं, जिन्होंने 11 विकेट्स हासिल किए, फिर 9 विकेट्स हासिल किए, एक एक्स फैक्टर है, मैच जीते। नॉर्दर्न के पास भी इसी तरीके से हैं, वो 2 मैचेस जीत चुके हैं। जी बिल्कुल, कंपैरेटिवली अगर आप देखें तो इब्रार जो है वो मैच विनिंग बॉलर है, उन्होंने पूरा मैच जिताया उनको पिछला, और उसके साथ फिर फास्ट बॉलर भी उठ गए हैं उनकी परफॉर्मेंस देख के, तो ये एक दूसरे को इंस्पिरेशन मिलती है। जिस तरह बैटिंग में पार्टनरशिप होती है, इस तरह बॉलिंग में पार्टनरशिप होती है। 129 पे 3। जिस तरह पाकिस्तान टीम में 2 Ws होते थे, वक़ा यूनुस जो आपके बड़े भाई हैं और वसीम अकरम, वो एक दूसरे को, वो भी बड़े भाई हैं लेकिन वो ब्रदर फ्रॉम अनदर मदर हैं। तो वक़ा यूनुस जब 5 आउट करते थे तो वसीम भाई क्या कहते थे कि मैंने भी करने हैं। तो वो आपस में जो कंपटीशन होता था वो टीम की परफॉर्मेंस को उठा देता था। तो इस तरह एक बॉलर ऐसा हो टीम में जो आउट कर रहा हो, उसको देख के सारे जो है ना कहते हैं मैं भी कर सकूँ, मैं भी करूँगा। लेकिन यहाँ पे तो 1 विकेट लेना भी मुश्किल हो रहा है अभी बलूचिस्तान के लिए। ये पार्टनरशिप 68 रन पर पहुँच गई है, और अगर हम वो 2 इजी जो लूज विकेट्स गवाई सिंध ने, तो अगर हम वो उनको निकाल दें तो अभी 1 ही विकेट हासिल किए इन्होंने। साइम अयूब एक अनफॉर्चुनेट तरीके से रन आउट हुए, फराज ने गलत लूज शॉट मारा, शानदार तरीके से ड्राइव किया। ये एलिगेंट ड्राइव है, लेकिन फील्डर मौजूद है, 1 रन जल्दी से हासिल कर लिया। बहुत अच्छी शॉट, बहुत अच्छी शॉट, बहुत अच्छा टाइम करते हैं यहाँ पे, इनका कोऑर्डिनेशन बहुत अच्छा है, हैंड आए, सिर्फ टाइम करते हैं, भला दिखाते हैं इस शॉट को पे, जोर से मारने की कोशिश नहीं करते। ये की है इस शॉट की। अच्छी पार्टनरशिप जा रही है दोनों की। 69 रन 87 गेंदों पे, स्ट्राइक रेट भी बहुत अच्छा है। असद शफीक डेफिनेटली चाहेंगे कि यहाँ से कोई सरप्राइज करें हुसैन तलत, क्योंकि बिल्कुल ही कुछ नहीं हो रहा, लेकिन एज ए कैप्टन यासिर हमीद, ओ बैक ऑफ द हैंड डिलीवरी इस दफ़ा हुसैन की तरफ से, कुछ एक्स्ट्रा, कुछ नया, कुछ चाह रहे कुछ हो जाए, मिरेकल हो जाए, लेकिन क्रिकेट में इस तरह नहीं होता, बहुत कम होता है। सिंध की टीम इस वक्त जो डग आउट है काफ़ी रिलैक्स है। मीर हमज़ा जो कि इस मैच में रेस्ट कर रहे हैं, और इन्होंने मौका दिया ग़ुलाम मुदस्सिर को नए बॉल के साथ। अच्छी परफॉर्मेंस दी ग़ुलाम मुदस्सिर ने, 5 आउट किए। इसे कट किया है शानदार तरीके से, स्वीपर वहां मौजूद है, 1 ही रन बन पाएगा। कितना अच्छा बल्ले पे बॉल आ रहा है, इवन अपनी मर्जी से बैटर रन कर सकता है इस पिच पे। तो अगर आपने इस पिच पे विकेट गवाई है तो आप बहुत अनलकी हैं, या बॉलर बहुत शानदार हैं, क्योंकि बॉल इतने शानदार तरीके से आ रहा है कि आप कहीं भी कैसे भी अपनी मर्जी से रन कर रहे हैं। फवाद आलम दिखाते हुए यहाँ पे
JPL का इख्तिताम हुआ यासिर कल, PGL पाकिस्तान जूनियर लीग, शानदार मैच देखने को मिला हमें कल। बहावलपुर ने मैच जीता, आज वर्ल्ड कप शुरू हो रहा है तो बहुत सारी क्रिकेट हमें देखने को मिल रही है। एक्साइटेड हैं आप वर्ल्ड कप को लेके? जी, पाकिस्तान जूनियर लीग का फाइनल हुआ कल, बड़ी हाई इंटेंसिटी क्रिकेट ही, बहुत अच्छा पिच था, बड़े अच्छे यंगस्टर्स की बैटिंग देखने को मिली और अच्छा लगा। फाइनल बहावलपुर की टीम जीती, कॉन्ग्रेचुलेशन टू बहावलपुर फॉर इनॉग्रल विन। ऊपर से खेला सऊद शकील ने, इसे बड़ा स्मार्टली खेले, स्लिप के फील्डर के ऊपर से 4 रन हासिल किए। या एकदम बॉल बाउंस कर गया और इसे लकी रह गई, ये एज फ्लाई कर गया स्लिप्स के ऊपर से। कंफर्टेबल नहीं थे, नीचे को ज़मीन की तरफ खेलना चाह रहे थे लेकिन आउटसाइड एज हुआ और ऊपर से बॉल चला गया 4 रन के लिए, लकी बाउंड्री। जी हाँ, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, नीचे खेलना चाह रहे थे, अच्छा टॉप एज नहीं हुआ और जो हुआ है तेज़ गया है ऊपर से। वर्ल्ड कप की आप बात कर रहे थे, वर्ल्ड कप बिल्कुल आज पहला मैच न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया के माबैन जारी है, जो 200 रन का टारगेट दिया न्यूजीलैंड की टीम ने और बड़ी अच्छी एलियन फिन ने इनिंग खेली, 16 बॉलों पे 42 रन किए, जवाब में 200 के ताकुब में उनकी इनिंग्स जारी है। अगर मुझे आपसे पूछना हो यासिर कि कौन सी 4 टीमें आप सेमीफाइनल में देख रहे हैं तो कौन सी टीम आप चूज करेंगे? 4 टीमें अगर आपसे पूछा जाए। इट्स टू अर्ली, टीम्स का बैलेंस देखते हुए। जी हाँ, और कंडीशंस देखते हुए, क्योंकि थोड़ा सा मुझे ये डाउट हो रहा है कि अल्लाह करे पाकिस्तान की टीम बहुत अच्छा करे, लेकिन ऑस्ट्रेलियंस कंडीशंस में हमारी टीम्स किस तरह खेलती हैं, क्योंकि हमें पता है कि जो वाइट प्लेयर्स हैं वो तो इन कंडीशंस के बहुत अच्छे प्लेयर, हमने स्कॉटलैंड को देखा, आयरलैंड को देखा, उन्होंने क्वालिफाई किया, वेस्ट इंडीज़ जैसी टीम को हराया, 2 दफ़ा चैम्पियन है। लेकिन कल का जो मैच है बड़ा इंपॉर्टेंट है पाकिस्तान इंडिया का, ये एक टोन सेट करेगा हमारी एशियन टीम्स के लिए। अल्लाह करे हम ये मैच जीत जाएं तो एक हमारा इम्पैक्ट है इस टूर्नामेंट में, एक प्रेशर, वो हम क्रिएट करने में कामयाब हो जाएंगे, जो बाकी टीमों पे भी इसका असर होगा। और अगर हम खुदा न खास्ता हारते भी हैं तो पाकिस्तान का पता है अंडरडॉग्स जब भी होते हैं तो वो आउट ऑफ द नो वेयर अच्छी परफॉर्मेंस दे सकते हैं। शाहीन शाह अफरीदी की वापसी हुई है पाकिस्तान साइड में, आई थिंक बहुत ज़्यादा बूस्ट मिलेगा शाहीन शाह के वापस आने से। शाहीन शाह अफरीदी ऑब्वियसली अ बिग थ्रेट, स्पेशली जो इंडियन बैट्समैन है वो लेफ्ट आर्मर्स को इतना अच्छा नहीं खेलते अंदर आते हुए बॉल को, लेकिन उससे बड़ा थ्रेट जो होंगे वो हारिस रऊफ़ होंगे। हारिस रऊफ़ जो कि बहुत अच्छी फॉर्म में है, मुझे उनसे बहुत ज़्यादा उम्मीद है कि वो बहुत अच्छा परफॉर्म करेंगे इस मैच में पाकिस्तान के लिए। या इस मैच के बारे में और बात करेंगे यासिर हमीद से। यहाँ पे ओवर का इख्तिताम हुआ 136 पर 3 सिंध। बैटिंग कॉम्बिनेशन यासिर कैसा देख रहे हैं आप? ओपनर्स तो डेफिनेटली हमारे वर्ल्ड क्लास हैं, उनमें तो कोई चेंज करनी भी नहीं चाहिए। फ़खर की वापसी होगी, शान मसूद और फ़खर में से अगर किसी एक को चूज़ करना हो नंबर 3 के लिए तो आपकी नज़र में कौन खेल सकते हैं? मैं तो डेफिनेटली फ़खर के साथ ही जाऊंगा, क्योंकि उसको उनका जो एक्स फैक्टर है, अगर वो चल गए तो वो फिर बहुत बड़ा डैमेज कर सकती है दूसरी टीम को। शान मसूद अच्छे प्लेयर हैं, नो डाउट, वो अपनी जो उनकी एबिलिटी है, उनकी जो कैपेबिलिटी है उसमें वो अपना रोल अदा करें, इससे ज़्यादा उनसे हम एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। उनका जो स्ट्राइक रेट है मैक्सिमम 130 पे जा सकता है और बहुत कहीं एक्स्ट्राऑर्डिनरी खेले 150 पे जा सकता है, लेकिन फ़खर ऐसे प्लेयर हैं कि जो 200 के स्ट्राइक रेट के साथ भी खेल सकते हैं। और अगर खुशदिल और हैदर अली में से आपको चूज़ करना हो कल के मैच के लिए स्पेसिफिकली? मैं हैदर अली को चूज़ करूँगा, क्योंकि हैदर अली आपको दो रोल्स पे आपको वो लेवरेज और कंफर्ट दे सकते हैं। एक तो अगर विकेट जल्दी गिरती है तो वो
खड़े भी हो सकते, दूसरी उनकी फॉर्म अच्छी है, फाइनल में उन्होंने उनका कॉन्फिडेंस वापस आया, तो मेरे ख्याल से वो कोई इम्पैक्ट क्रिएट कर सकते हैं अगर उन पे बात आती है तो। बड़े मैच के प्लेयर हैं वो, ये फाइनल में रन्स किए तो इट शोज़ के उनमें ये एबिलिटी है कि वो किसी भी बड़े मैच में रन्स करके दे सकते हैं आपको। या हम दुआ गो हैं, कल मैच पाकिस्तान का बड़ा टाकरा भारत के साथ, अपनी वर्ल्ड कप कैंपेन शुरू करेंगे कल। और जैसा ये पूल लग रहा है, अगर पाकिस्तान कल भारत को हराने में कामयाब होता है तो पाकिस्तान के लिए राह बहुत हमवार हो जाएगा सेमीफाइनल के लिए, क्योंकि जिम्बाब्वे और आयरलैंड की टीमें भी हमारे पूल में हैं। बहुत आसान हो जाएंगी, इजी हो जाएंगी। अच्छा शॉट, बड़ा इंपॉर्टेंट मैच है पाकिस्तान इंडिया का, बिग मैच। पूरी दुनिया इस मैच को देखती है और मेलबर्न का ग्राउंड जो है वो खचाखच भरा होगा तमाशाइयों से। यहाँ पे भी हम रिक्वेस्ट करते हैं कि हमारे जो रूम है, सिटिंग रूम, वहाँ पे टीवी लगवाया जाए ताकि हम भी मैच देख सकें। या आई एम श्योर ये आपकी आवाज़ बहुत जगह सुनी जाएगी यासिर, ये वैलिड पॉइंट है, बहुत बड़ा मैच है, कोई भी मिस नहीं करना चाहेगा। और कौन आपको लगता है कि भारत की तरफ से ज़्यादा थ्रेट होगा पाकिस्तान के लिए? भारत की टीम भी बहुत अच्छी है, फुल ऑफ इम्पैक्ट प्लेयर्स। स्काई जो है वो इस वक्त फॉर्म में, रोहित शर्मा, के राहुल, उनकी बैटिंग बहुत अच्छी है, पाकिस्तान की बॉलिंग अच्छी है, तो एक अच्छा टाकरा होगा। पाकिस्तान की बॉलिंग जो है वो हाई क्लास है, उनकी बैटिंग बहुत अच्छी है, तो एक अच्छा मैच देखने को मिलेगा। अगर पाकिस्तान एक रिस्पेक्टेबल टोटल करती है और डिफेंड करती है उसे, दैट विल बी अ ग्रेट मैच टू वॉच। आप खेले मेलबर्न में, इत्तेफाक हुआ? जी हाँ। कितने रन्स बनाए? मैं टेस्ट मैच खेला था और एक इनिंग में मैंने 25 किए थे और दूसरे में मैंने 18। देखिए वहाँ तक पहुँचना, वहाँ पे खेलना ही एक बहुत बड़ा एजाज़ है। कैसा फील होता है जब आप मेलबर्न में बैट करके एंटर होते हैं, इतने अवाम आपके इर्द गिर्द, स्टेडियम का जो फील है? जी, बॉक्सिंग डे टेस्ट मैच था और क्राउड जो था वो, आपको पता है ऑस्ट्रेलिया में बड़ी एंथुसियाज्म है उनमें, क्रिकेट का बड़ा जुनून है, जोश है, अपनी टीम को बहुत बैक करते हैं। और यूसुफ भाई ने वहाँ पे 100 किया था, बॉक्सिंग डे टेस्ट मैच था। और बॉक्सिंग डे टेस्ट मैच बड़ा स्पेशल होता है क्योंकि वो क्रिसमस के बाद जो पहला दिन है 26 दिसंबर को मैच होता है, तो ऑलवेज वेरी स्पेशल टेस्ट मैच। बॉक्सिंग डे एक्चुअली कहते हैं जो गिफ्ट्स मिलते हैं क्रिसमस में, तो वो उनके ओपनिंग का डे जो होता है उसे बॉक्सिंग डे कहते हैं। अली, आपने मुझसे आराम से पूछा तो मैंने बता दिया। थोड़ा इंतज़ार कर लेते तो मैं पूछ लेता। 137 पर 3। अभी बता ही देंगे पीछे से हमें कौन हमारे पीछे हाथ किसके हैं। 137 रन पर 3 सिंध। अगर हम लाइव क्रिकेट की बात करें, कल तो इंशाल्लाह मैच होना है और हम दुआ गो हैं कि पाकिस्तान वो मैच जीते और एक अच्छे तरीके से वर्ल्ड कप कैंपेन का आगाज़ करें। शॉर्ट डिलीवरी, ओवर का अख्तिताम हुआ। 137 पर 3 सिंध। टैक्सी में बैठे थे, टैक्सी वाले ने हमें इतनी गालियां दी थी। किसका? फ्रेंच? ये माइक है क्या? चला के बाहर की तो हम चेक कर लो, हैं? माइक हैं? मैं कमेंट वाली भाई, हम बाहर की तो हम चेक कर लो। मैं तो पूरी कुछ में टीम शिप होगा, कहता कोई बात नहीं कर लो भाई। इधर वाला ओ मिस्टर विकी 137 for 3. Oh, Mitch.
शाबाश 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 137 for 3. Quite a healthy run rate of 4.8 for the innings. Partnership of 76 between these two. Oh, nice. Kashipatti. Nice, nice. Abdul Wahid Bangalzai at short leg. Good reflexes. Oh, nice. Excellent work. Oh, nice, nice bowling. It's a specialist position, the short leg. Shabash boys, shabash boys. Yes, exactly. You need to be on your toes, presence of mind. And you are just saying thanks. Somebody pick me up. Well, things have been really quiet. 3 early wickets, but then again the partnership. This has been the hallmark of this cricket. That batters, they've been trying really good. The surface is so easy to bat on over here at this stage. Oh, nice. See, good technique there from Abdul Wahid Bangalzai. Fielding at short leg. Nice, bhaiya. Good work from the veteran as well. Yeah, outstanding, bhaiya. Leading from the front, Asif Shafiq. On, bhaiya. Crucial spell for Kashipatti because his spell will determine how much control he's able to give his skipper so he can rotate the three seamers. A role that has been done magnificently well for Sindh by Abrar in the previous 3 games. Well, with this dot delivery, over bowled. 33 gone, 138 for 3. बॉलिंग करनी होगी ना फिर Well, good relaxing time. The weather is perfect to play cricket. Ideal conditions. So the players, they're enjoying too. They're all making themselves to have a good time, enjoying. Ayas Tasawwur, the substitute. Good relaxed camp, Balochistan. Couple of wickets and they'll be right back in this game. Santalat, 5 overs, 9 runs. It's just a lot of the times he's bowled the delivery that we just saw. Wide outside the off stump, preying on the patience of the batters. When Quaid-e-Azam is in the house, you make sure there is no movement of any kind behind the bowler's arm. I don't see anyone there, Ijaz. I don't know what is bothering Quaid-e-Azam. Top edge will fall safely and away to the boundary. Fawad has been going for those pull shots, not in control, but he'll take the boundary. Yeah, runs there. Fawad was uncomfortable before that delivery. But here, are just going to play across too high. He has got his bat on the way and getting 4 runs. Though that they have got one fielder at a D-file leg, but it's been pretty wide-ish. So the speed of the ball was pretty good, enough to cross the fence. Fawad generally likes to take his time, but today he's been pretty aggressive. 42 of 62. He
He's now caught up with Saud Shakil, who's batting on 42, but he took 74 balls to get up there. Once again, at that far end, is he asking those people at the rescue bench to just sit down and not move? They're a long way away from the bowler's arm. Fawad's eye line must be catching them the way he stands now. He's looking directly at them before he turns around and gets his attention to the bowler. Yeah, too much concentration. That you were just looking in front. Well, a rescue guys, yes, first aid. I think they were moving a lot. Might be. But they need to keep their chairs away. If you pan and have a look, they're outside, almost on the mid-off line. They're nowhere near behind the bowler's arm. But like I say, when Fawad is set up, probably he's looking directly at them right now, at this stage. That's why he didn't want them to move. Collects another single. Yes, exactly. It's a far away, but you're right. When he was just on his stance there, when a bowler is having a go at him at that stage, he might be looking towards that point. There you go. See, that's how far away they are, and when Fawad sets up, you can see that he will be looking in that direction. No such problem for Saud. Yes, he's batting well. He's going through his time that they're killing here. And I think that the most important thing, the partnership, 83 between Fawad and Saud. So that's why they've been settled in. Look at those, that rescue 1122. There you go. That gives you a better picture. But these guys have learned their lesson now, not moving. Good line. Good line on that short pitch delivery from Hussain Talat. 34 gone, 144 for 3. कितना टाइम है 18 minutes. Beautiful view of the great Faisal Mosque at the foot of Margalas. In the air. Did it get a touch on it? Pangalzai lost it completely on that occasion. It looped very close to him. Yeah, already spoken. This is really a key place. Ball may be coming straight away to you. Nice, you need to be on your mark, on your toes every time when you are nearby, in very dangerous place as well. Lots of times the ball has been hitting quite dangerously and badly, traveling a lot. Nicely swept. So there was a gap, just using the pace of Kashif Bhatti. Saud is a very good player of spin, especially he likes that sweep shot. Just that variation of sweep, not the regulation sweep. Just the paddle. Couple of comfortable runs. Yeah, it's a good way because when things are favoring you, you can really take some chances. Been trying to pave new ways, scoring runs. And I think so it's a good time for the batters. That we did know that yesterday at the same level the pitch was good enough. And Balochistan batters, they were having a good time. So I think that these two,
like Fawad and Saud, they have already been in a good form. Fawad Alam scoring 268 runs. And Saud is almost 300 runs. So both of these two batters, they're enjoying this trophy. Nice bowling, bhaiya. Really, I don't understand why this long on is back, because at least you want the batters to take a chance once and hit you over the top. Kashif Bhatti is happy to give single to these two down the ground and onside, and then they'll milk you if you bowl two straight. These two are good players of spin, so runs coming at a steady flow. 4 of the over, 148 for 3. हाँ बस उसको पीछे कर दो तू शॉट मिड विकेट आ जा भाई वो खुरम बाहर गया हुआ है खेला हाँ bowling round over. Well, this is surprising. Asad Shafiq Bowling change. being seen two left-handers in the middle. He's going to try to roll his arm over. 14 wickets at this level. 3 for 85 is his best. We've seen him bowl regularly in the white ball format for Balochistan. Well, when I say regularly, not that regularly, but more frequently compared to the first class game. 6 fielders on the offside. Just a little gamble from the Balochistan skipper. Yes, I think that he was thinking that might be change of pace may work for them. But over here, like looking on to the Saud Shakil, he's on 46, 2 centuries already. So he has got a good conversion rate, like 250s already. Convert into the 3 figures. So if he will be batting here for 50, might be he's looking for another 3 figures. He's Saud Shakil. 2 times he's crossed 50. And on both occasions, he went on to score 100, 158 at Faisalabad, and then 100 in the previous round here. Little bit of turn there for Asad Shafiq. We haven't seen much turn for the finger spinners here at Pindi this season. Yes, exactly. And even into the first day, might be it's the second day. We will be getting something on a 3rd and 4th. Slowly deteriorating, and might be spinners can enjoy. But overall, would it see that Abrar, the man who picked up the leading wicket taker, 23 wickets, really enjoying his presence here at this very venue. Really successful bowler. They're offering easy run down the ground. For the off spinner, they have the long off back, and for the left arm spinner from the other end, they have the long on back. Not tempting the batters to go over the top. Asad Shafiq. Another quiet over, 3 of it. 151 for 3. Yesterday we were talking about some interesting history of this Pindi Cricket Stadium. Nice. The stadium was built in 1991, and the first ever game that was played, the international game, was between Pakistan and Sri Lanka. There were some crazy scenes from that game. After a long time, Pindi was hosting an international game, because previously international cricket used to be played
at the Pindi Club ground. But those days, those games were few and far between. Excellent bowling, Kashif bhai. The last ODI before that played in Rawalpindi was during the World Cup in 1987 at the old Pindi Club ground. Oh, nice. So the interest level, Ejaz, for that Pakistan-Sri Lanka game just before the 92 World Cup was immense. I don't know if you remember any scenes from that game. Well, not that game, but just going through. A couple of more runs here. He's settling for 2. But I did remember 87 World Cup game. West Indies was here, I think, at Pindi Club. And that was the game that we were just waiting to get inside because lots of crowd was there. Couldn't go through. But good times now. Pakistan was no-go area for 10 years. Pakistan Cricket Board, the forces, they have done a great job bringing cricket back here. So it's a continuity, not even at domestic but international level. So everyone has been welcomed. Come on, boys. Yeah, I remember there was almost a riot broke out here on that game that I was talking about, the Pakistan-Sri Lanka game. Because the ground was jam-packed and as many people were outside, they wanting to get in. Excellent bowling, Kashif bhai. And obviously they had to be dispersed because there was no more room in that ground on that day. Times have since changed. The iconic venue is bracing to host some more fantastic international cricket. More on that after this over. 153 for 3. Well, this is one of the beautiful test venue, Rawalpindi. Having great memories. Remember the Gary Kristen, who played in 1996 World Cup, 187 or 89 runs, 88. Beautiful way when you and Shoaib Akhtar, the Rawalpindi Express, the home ground. I remember him sprinting here. What a time. You remind me that game, 1996, the World Cup, UAE and South Africa. You remember the innings from Gary Kirsten? I remember an instance from that game where the UAE skipper, Sultan Zarwani, walked in without a helmet to play the fastest bowler of that era, Alan Donald. No mercy from Alan Donald. The first ball, he struck him on the head. That's nicely played. Just creamed away. Saud Shakil is a very, very good driver of a cricket ball. Pace or spin, moves to 49. And the funny thing is that Sultan Zarwani just dusted himself off and carried on playing. No concussion test those days. Brave man. And a very rich man as well. That's 50 for Saud Shakil. Once again, a very, very polished knock from the Sindh skipper. Not as flamboyant as he normally is, but his driving has been superb once again. Wristy flicks through the onside. Yet another important knock. Well played, Saud Shakil. India's 85 deliveries, 6 boundaries. Wonderful. Captain's knock. Still a long way to go. It's a second day. But he must be looking to go more stronger. But the time will come as he has got the ability, skills, what he has been showing here. Slip and short leg for Asad Shafiq. He's looking to slide an odd delivery with the arm to catch that inside edge onto the pad and that short leg. Or maybe trap Fawad in front. Not much zip from the pitch there for the part-time spinner. That is wide, asking for trouble. Will come back for the second run. Fawad Alam reaches his 50 now.
Mr. Consistent keeps churning on those runs in first-class cricket year after year. This year has been no different. Yes, exactly. Already 150, 1 century in his credit in this Quaid-e-Azam trophy. The second one in a 50 column. Will surely have the caliber of converting this 50 into 3 figures. Because he spends his time and enjoys his cricket. With his 38 gone, 158 for 3. Approaching the tea break on day 2. There were plenty of wickets in the first session. Nice, nice, Kashif bhai. Just the one in this second session. That was Faraz Ali. Excellent, Kashif bhai. But since then, the partnership of 97 between these two. And Sindh is just trailing by 111 now. Nice. Yeah, this is where you need to have really a strong middle order. If top order is not performing, you will be looking towards middle order. And if you got Saud Shakil and Fawad being a captain and one of the senior pro, Nice, nice. the team or playing 11 has been on to the satisfied side because they know that our batters in the middle order, they are performing, they are scoring runs, and they can defend any sort of bowling. Nice, nice, man. You beauty. Kashif Bhatti has bowled economically. Nothing much for him from the wicket. Pulling over the wicket to these left-handers. Nice, man. He's bowling wicket to wicket. Simple plan. He hasn't tried anything fancy. He's just content to stop the flow of runs and wait for the batters to make a mistake. Maiden, 158 for 3. Yes, bhai sahab. 158 for 3. Since skipper Saud Shakil. Some magnificent cover drives every time Saud Shakil plays. And he's also very strong off his pads. This was probably the best of the lot. Had a little bit of luck along the way. But he's prepared to take his time and look set for a big one. Yes, exactly. He's a kind of player who is looking further. That when he's been approaching to one mark, stepping up slowly but surely, and this might be his day. Looking for another 30, 40 more runs. Quick run, quick run! Could have been a chance. But things are happening here. Fawad had a rush to the danger end, though he survived, but maybe some sort of hurt. There's no need for it. Asad Shafiq got in the way of the throw and then collided with Fawad Alam. Asad wasn't ready. He wasn't in position. Quick work. The throw was at the non-striker end. Was it going to be a direct hit? Asad Shafiq, who hurt himself in the process as well. All happening. Could have been a disaster for Sindh. All is well that ends well, as they say. Well, things are happening so quickly that there was some sort of hesitation. Things are from the non-striking end. There you go, Fawad stopped, and then he picked up
took off. And look at Asad Shafiq. I think the ball would have gone directly onto the stumps. Behind the stumps, so might be leave it and let it go onto the stumps to take a 50-50 chance. Asad Shafiq wasn't expecting the throw to come to his end, because the fielder, it came to the left of the fielder and he just turned around and threw it the non-striker in. Asad wasn't ready for that. Full toss, a top edge. Oh, what a soft dismissal this is. A terrible delivery, but even bad shot. Asad Shafiq cannot believe it. A bit embarrassed, a bit sheepish about it, but he will take the wicket because it's Fawad Alam. Well, goodness me. Sometimes bad deliveries can earn you wickets. Look at that. Full toss. And he just chipped it over. And look up into the sky. Anyone? Come and catch it. Thank you very much. Big wicket. He could have hit it anywhere. Gone for 51. 160 for 4. And it's also time for tea break on this day 2. What an incredible day this has been. The end of the first session, we saw a freak dismissal. And at the end of the second session, an even freakish dismissal. And on this occasion, it was Fawad Alam. Both the set batters, Saim Ayub and Fawad Alam. Wow, what a bonus for Balochistan. Well, this has been a wonderful. Asad Shafiq was quite surprised on that delivery, which was not a good one, but he has earned a wicket. Got a breakthrough. The partnership of 99 runs been broken here. Looked good, but they're all smiling that what he have taken here, really a gift. Have a look. Like I said, he could have hit it anywhere, but I think he was playing for tea, and it happens when in that kind of mindset, you just miss out. And this time it's even worse because he's lost his wicket. Starts for plenty of batters other than Faraz Ali, but that last wicket of Fawad Alam, a big one in the context of the match, gone for 51. Skipper Saud is looking good at 51, not out, 160 for 4. Well, 3 wickets each. Najibullah, Akif Javed and Asad Shafiq. Really a gifted wicket for him. It's 160 for 4. Sindh is trailing by 109 runs. You see the session highlights. Faraz Ali very loose. Very loose, you have to say. So early in his innings. Nothing loose about Saud Shakil. He played those strokes, he was in. So he could afford to do that. In partnership with Fawad Alam, they've almost batted through the session. Fawad was proactive. Saud was sublime and lucky at times. Fawad has his own method of scoring and accumulating. First Asad Shafiq, Saud Shakil rather, brought up his 50. Then Fawad Alam, but not soon after that. An absolute gift. Faraz Ali could not believe his luck. 269 plays 160 for 4. This game is very nicely poised. Remember, Sindh has a long tail and they're trailing by 109 runs. Skipper Saud Shakil will resume on 51 after the tea break. Players are taking tea. We'll take a short breather as well, and we'll be back with the last session of the day in just about 15 minutes.
We're back again here at Rawalpindi Cricket Stadium. This is round 5, game day 2 between Balochistan and Sindh. This is Sindh in their first inning. Umair bin Yusuf scoring 90 runs. Saim Ayub looked good for his 30, ran himself out. Faraz Ali won without scoring, and right at that brink of that break, Quaid-e-Azam lost his wicket to Asad Shafiq. Saud Shakil, the captain, still there on 51. This was the last delivery. Look at that. A casual shot. He would be so angry at himself for playing that shot, for not concentrating enough and giving his wicket to his friend, rather, Asad Shafiq. It was a surprised wicket. That's the bowling card for Balochistan. A wicket each for Najibullah, Akif Javed and Asad Shafiq. 160 for 4. Sindh trailing by 109 runs. This is going to be such an exciting session because they just lost a wicket of Quaid-e-Azam. Saud Shakil still there on 51. Yeah, he stood tall. Saud Shakil is limping a little, maybe not 100% fit. That hamstring is just looking worried, not 100%. He will be joined by another youngster, Saad Khan. It is such an important partnership in the context of the game. They trail by 109 runs. Saad Khan is the man who will join Saud Shakil because Quaid-e-Azam lost in a very casual way. I've been joined by Kundumal. Asif, how are you? Good afternoon. Yes, doing very well. Thank you very much. Good afternoon. Ladies and gentlemen, Saad Khan played 23 matches, averaging 41.57. Got 300s as well. Rightly said that it will be a really important partnership in the point of view if you talk about Sindh. Right before the tee, we have some very disappointment shot from Quaid-e-Azam. Seems to have a problem with his hamstring. Saud Shakil. Not a happy place to be. If you got that hamstring going, it gets so difficult. We were talking about him earlier, that how important he is for Sindh cricket. He's done a fantastic job as a captain. This is not a good scene to see if you're a Sindh fan. The captain was looking so good on 51. A bit of work to be done. Sindh have lost 4 wickets since morning session. This one was the first one. Umair bin Yusuf, a beautiful delivery and a very good catch by Haris. This was very unfortunate. Schoolboy error by young Saim Ayub, resulting in his wicket. Faraz, bad shot, loose shot, casual shot. This again, a very casual shot. Not concentrating hard enough, losing his wicket. Simple catch to Bhatti. Now it's up to Saad Khan. Saad will face to Asad Shafiq. The good thing is that Saud Shakil feeling well. Cuts handsomely well. Beautiful. There is protection. Saud wanted to. Why? I don't know. Because it's not 100%. He's limping. There's a problem with hamstring. You got to be careful. He has started confidently off the mark with this couple.
With one, I beg your pardon. I would love to. Lots of oohs and ahs around the batter. End of a successful over from Asad Shafiq. It's 161 for 4. Asif Mahmood there still to come. A very handy batter. We've spoken about him a lot. And Umar also, right towards his right. Scored a 50 already in this tournament. Big hitter. Both can use that long handle and can hit big sixes. Kashif Bhatti has just been used for 6 overs. Because Sindh are just full of left-handers. What's wrong? Where are the right-handers? There's a fast to come. Right-hander. But this is a formidable batting side. Excellent cricketers. Yes, they had a fantastic season so far. And especially if we talk about the previous match against KP. An exciting match. Play towards onside, looking for 2, comfortably taken. Ali, you asked several questions about me. Let me ask you that. Do you take some tips and help in your commentary with the legendary Waqar Yunus? To be very honest, no. We hardly meet. He's hardly home. We hardly get to talk. He's always traveling. And yeah, definitely I do get some words of encouragement from him. That's a lot. And we definitely have a lot of discussion going. We never agree on some things though. On most of the things we never agree. Different mindsets. He's got his own mindset. And a brilliant one. I'm much junior. He doesn't value my thing. Whatever I say, he doesn't care. It's cute. Yes, just amazing to have him as an elder brother. I've learned so much. Just from his disagreement also, I learned so much. 165 for 4. So Kunmal, when are we going to see tigers? The friendly tigers you were talking about. When are you taking us there? See, when you talk about the history of Trail 5, Trail 4, and whenever we talk about panthers and tigers, there is no any chance, no incident that they have ever attacked to the citizens or the travelers there. Are we sure we're not talking about any zoo? Are they free? Yes, it's a wild park. And I used to go even on the daily basis sometimes. And I love the place, a beautiful. And that's why I've showed you a couple of videos yesterday that if you could make your mind, but I think you're lazy. No, you're asking me to go after the match. We can't go. We get too tired. We talk so much. And we got this another person sitting in MCR. Mr. Adnan Malik. He can't go. He hates to walk.
He's so lazy all the time. All he does is he enjoys Shah Faisal's company because they like eating out, eating ice cream. But if you tell him about the Panthers, he will like it. Definitely. Because he's an adventurous person. But I wish if you couldn't see them, couldn't meet them, so they would remain friendly. I'm going on your risk. It's a good ball. If talking about Panthers and Tigers, there's a club, very famous club in Lahore named PNT Gymkhana. It's Panthers and Tigers. Azhar Zaidi Saab, the manager of Central Punjab, he owns that club. We'll talk about it. It's 166 for 4. Panthers and Tigers. Nice bowling. Top class bowling, भैया. Excellent bowling, Kashif bhai. That's it. Wanted to go big. Wanted to go fancy over that mid-wicket area. And he's down. I don't know if this was a sensible shot to play. If you're already struggling with that hamstring, then yeah, you shouldn't be playing that shot. He's struggling, is down, is in pain. Saud Shakil is such an important member of this team, not just as a captain but as a batter. But why would you try to fetch it right in front of you? Why would you stretch your leg this much? Oh, he's not happy. This is not a good situation. I can feel the pain because it's never easy. This hamstring can be very, very painful. Yes. He was playing nicely, and if you talk about his 50, started well with this elegant cover drive. Again, almost like a... And look at this on drive towards mid-wicket. What a player he is, especially towards cover, nudging over the slips, and it was the moment which he enjoyed a lot. Yeah, fantastic player. No doubt about that. It's a good view to watch Saud Shakil bat from there. That's the batting card. You see a lot of loose wickets going down. Saim Ayub, Faraz, Fawad Alam, all three batters just gifting away their wickets. Saud Shakil still there on 55. Saud Khan is on 2. If you talk about this Falcon, yesterday was looking after you. This is what Shah Faisal told us. Never believe what Shah Faisal says. Never. He has this habit of saying things about people. Never believe. Only believe in what he says in cricket. That's it. Yeah, this is my friend. See, this is my 5th game here in Rawalpindi Cricket Stadium. And every day at the same time, he or she is here. With a pair. They're not one, they're 2. Always traveling together. Wonderful. I just love them. But today, he or she was alone. I'm always alone. Always. Like this. On top, alone. That's what they say. If you want to be on top, do nothing. Nothing at all. That's me. Just be on top. So it's your 5th week here at Rawalpindi. So are you enjoying the food and the rest of the environment of Rawalpindi? Or are you still boring? Oh no, I just love these twin cities. Absolutely love them.
If it was in my hands, I would shift it. Is that the place that green stayed in the background with tigers, the friendly tigers? We Yes, can go and have shake hands, as you say. You said that yesterday, that you can have shake hands with them. Yes, this is what I was telling you. Yeah, these are the mountains where you could go with me, and you could meet anywhere, and they're just friendly. Why I'm saying this? Because since 20, 30 years, nothing happened there. And people love to go there. They enjoy their walk. They enjoy their hike. Sat Shakil is fine and happy and back as he milks one towards onside for one. I still cannot believe it, Kunumal, that they are friendly. You can have shake hands with them. Look, I'm just motivating you. I'm just. See, what I'm telling you is that just concentrate and just love with the natural beauty. And why you're not getting my words, and why you're not getting ready to go there? Because your words don't make sense to me. And you can't believe that, yeah? No. No, not at all. Kunumal, no. Because you're asking me to go with you at a place where there are panthers, cheetahs, and they will be loving you without any protection around, and they'll come to me and say hello to me. They'll have a shake hand with me. No, I'm not going. Well, this is called motivation. This is called, It's scaring me. It's not motivation. Stop it. It's 168 for 4. Trailing by 101 run, Sindh at the moment. They would look to go till the end without losing any more wickets. This will set up tomorrow's day very nicely. That's going down. That's going down. Asad Shafiq. Asad Shafiq, it was going down the leg side. A very easy decision for the umpire. But shout was pretty much loud. Saad Khan also in search of some runs for himself. We've seen him in National T20. He scored quick 30s, 40s, little cameos. But this is different. He needs a big one. Needs to get 100 in his career here. Because these may look easy conditions, but trust me, these are not easy conditions to bat as well as bowl. You got to be really competitive enough, very skillful, very talented to be successful on pitches like these, because it has everything for everyone other than us two. Oh, that's close. That's close. Mighty close. Yes, he's given him out. That is what he was searching for. Asad Shafiq with his second wicket. That is a wonderful, wonderful delivery. The ball came in with an arm, and that's what deceived Saad Khan. And another failure for Saad. A very good delivery from Asad Shafiq. Oh, there's a huge difference between bat and pad, and it was an easy decision for the umpire. Was there an inside edge? Was there? That is what Saad Khan was suggesting. We'll have a look at it again as he walks back after scoring 3 runs. LBW Asad Shafiq. It's 168 for 5. I don't know. Maybe inside edge. Maybe. I will tell you after watching the replay. Okay, sir. I have my doubts. Okay, sir. I have my doubts. Stay here. Stay here. I need a conclusive. Stay here. I'll tell you. I'll tell you. Stay here. Okay. Stay here. Okay. Okay. Okay.
Super Sarfaraz walks in. Fantastic player, fantastic team man. He's got a job to do, he's got a responsibility now because Sindh has just made a mess of it. They've lost some easy wickets, couple of wickets going to Asad Shafiq, the irregular bowler. Now they're in trouble, now they're in bother. Saad Khan, I'm not sure because he's not happy. We'll have a look at it again, the LBW decision given out. Umpire Afridi, or was it Imran Javed, had no issues giving him LBW. Well, with naked eyes, it did look out. It did, but still the way Saad Khan reacted after that, it suggests that he might have got that nick, that inside edge. New man in, Sarfaraz Ahmed, plenty of experience, more than 150 games. The best is 213, everything really nice. 1200s in his first class career. Yeah, they would know each other. Sarfaraz and Asad Shafiq, they've been playing together since childhood. And this is what he will do straight away, using his feet. Sarfaraz Ahmed is always a busy cricketer. As we look at it again, the wicket of Saad Khan, it came in with an angle after pitching. Look at that movement. Oh, you can't tell. You can't tell. You can't tell from here. But that action from Saad Khan suggests that he might have got. Look at that. He's just showing the bat to the umpire. Just maybe. Runs. Couple. If they run well, 3. But considering that South Shakil is struggling with that hamstring, they will just stick to 2. Leg was given. 171 for 5. See why I'm saying that. When it's a huge gap. Simply if you say that. Huge gap? Yes. Okay, fine. Mighty close. For me it was out. Interesting, Asad Shafiq getting a couple of wickets. The latest one being Saad Khan, LBW. He was not happy with the decision somehow. He showed that the ball might have snaked the inside edge of the ball. But it's done. We're moving on. Sarfaraz is out there facing Kashif Bhatti. With that injury of South Shakil, that hamstring problem, definitely it will affect Sarfaraz Ahmed also, because we know that he likes those close singles, those short singles. He likes sweeping. He believes in taking 1s and 2s. And with South Shakil, who's not 100%, it is definitely going to affect him too. So it's not a good time for Sindh. They've lost some easy wickets, some casual wickets that they shouldn't have lost. The last one being Saad Khan. Let's have a look at it real time. What happened? No, it's a replay. Just after pitching it came in. We can't be 100% sure, but we got to give it to the umpire that yes, it was out. Although he was suggesting that there was an inside edge, but we can't be sure. But I'm pretty sure about this, that because there's a gap between pad and bat, so I'm quite sure there wasn't any edge, there wasn't any neck, and umpire was quite sure. So I think I'm with the umpire. And I'm with you, Kunamal. Because you're the one who greets tigers, who shake hands with tigers. I have to agree with you. I know, because you like tigers, you like lion. I do like them, but not that much that I'll go shake hand with you. No. Not a chance. You aren't ready at all. I'm telling you anything friendly, but you're sticking towards your plans.
No. Still no to you. This guy called Shah Faisal. You can always take him. He's always looking for tigers to have conversation with them about cricket. Very interesting things about Trail 5, Trail 3, Trail 4. I'll get to you to. I want you to go to Trail 4 as well. helmet. 173 for 5. Well, when I'm talking about tigers, yes, you can see cats there. And eagerly. Najibullah then is ready. Najibullah is ready to take you on. Me? Why me? What have I done to him? I'm not even facing him. I don't want to. He's just stretching, loosening it up. Akif Javed into his 9th over, 39. He's taken 1 wicket, the first one. Umair bin Yusuf. There you go, 1 maiden. The economy is on the higher side. Well, now the Saud Shakil is on 57. Struggling with his injury. He is okay, he's fine, but not absolutely perfect. It's not been easy. Sometimes you got to keep yourself hydrated all the time. They've had a fielding all day yesterday, and he's been on crease since morning. And he's looked very solid. I just love the way he plays. He's got that elegance about him. He's got that flair also at times. A bit of mix. And he's got the temperament. He's a very, very good character of the game. And since that he's been made the captain of the Sindh side. He's done a really good job as a captain too. It's never easy being given the added responsibility. But he's done a good job. He's made Sindh the national T20 champion. There's a chance. No. Quickly said no by Sarfraz. Yes, Sarfraz understands that Saud is not 100% fit. So there is no need to take any risk. Because Balochistan is very good with the direct hittings. And this is what happened with Saim Ayub. Abdul Wahid Bangalze is there. Fawad Alam must be dejected with his shot. Again, Sarfraz says no. And rightly so. Because we know that Saud is already struggling with that hamstring. There is no point taking those risky singles. Look like you're not taking any risk to go to the Trail 5 for Trail 4. There's a difference between getting run out and being eaten by a panther. There's a difference. There's a different risk. Beautiful. Straight to the fielder. I'll keep motivating you and I'll keep giving you this feedback again and again. And I'm quite sure that after this match, in next couple of days, you will be visiting that place with me. Yeah, take a Shafiq along with you.
He's been a busy man since morning as a captain, as a bowler. He's taken a couple of wickets, a surprised package. And that wicket of Quaid-e-Azam. Whoa. Oh, fetching him outside the off stump. Very casual. He's been superb since morning. This is probably the first time that I have seen him play a shot like that. Yeah, I think after is not feeling well and play away from the body. It was a very loose short selection. And 46 gone, 173 for 5. नहीं वो आपको रली का मेरा एजाज का वो सेम प्रोड्यूसर ने इनकार का होगी वही जो वो चाहेंगे अली का 173 5 खिलाड़ी आउट सिंध की टीम 96 रन पीछे अभी भी सोचा नहीं होगा सिंध की टीम ने कि इनकी जब 5 विकेटें गिरेंगी उनमें से 2 असद शफीक के नाम जाएंगी। एक हैरान कुन फैसला था कप्तान का खुद बॉलिंग करने का। नजीबुल्लाह ने एक खिलाड़ी को आउट किया 29 रन देकर, लेकिन जो बोनस की शक्ल में 3 विकेटें सिंध को बलोचिस्तान को मिल गई, 2 असद शफीक को और 1 साइम अयूब का रन आउट खेल में वापस आते हुए नजर आ रहे हैं। खूबसूरत स्ट्रोक सरफराज का, थोड़ी सी विथ मौजूद थी लेकिन ये सरफराज का फेवरेट शॉट है। 4 रन हासिल किए। जी हाँ, सरफराज बहुत ही कैलिबर के प्लेयर। देखिए उनका ट्रेडमार्क जिस्म से दूर था लेकिन परफेक्टली टाइम, उसके साथ साथ उन्होंने एग्जीक्यूशन भी ऐसा किया कि बिल्कुल ज़मीन के साथ साथ लुढ़कती हुई बॉल 4 रन पार कर गई। अपने प्राइम पे सरफराज इस शॉट में बहुत ही ज़्यादा महारत थी। दुनिया के तेज से तेज बॉलर्स के खिलाफ भी वो ऐसा कर पाते थे। जैसा आपने कहा कि पैर तो ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करते लेकिन हाथों का खूबसूरत इस्तेमाल और इसके साथ साथ जो वेट ट्रांसफ़र है, ये इंपॉर्टेंट पार्टनरशिप है सिंध के लिए। काफी आगे आगे थे क्रीज से, कोई खतरा नहीं एलबीडब्ल्यू का। जी और सिंध की टीम सरफराज और साउथ पे ट्रस्ट कर सकती है कि वॉक इन किया, अपनी क्रीज से बाहर थे जिसकी वजह से क्लियरली नॉट आउट। तो ये दोनों जो प्लेयर हैं इन पे ट्रस्ट कर सकती है सिंध की टीम के। इवन अगर 5 भी आउट हैं तो ये ऐसे प्लेयर हैं जो बड़ी इनिंग खेलने का तजर्बा या अहलियत रखते हैं। यहाँ से अगर सरफराज भी 70-80 रन ऑलरेडी 250 हासिल कर चुके हैं इस ट्रॉफी में, तो 70-80 रन सरफराज और 50 प्लस यहाँ पर अगर साउथ बना जाते हैं तो यकीनी तौर पर ये जो इस वक्त मार्जिन है जो कि डेफिसिट है उसको कवर करने में कामयाब होगी सिंध की टीम। तो इतना ज़्यादा मेरा ख्याल से पैनिक बटन नहीं है। आपने बिल्कुल सही कहा, जो बोनस विकेट्स या गिफ्टेड विकेट्स थी उसकी वजह से प्रेशर ज़रूर है। जी बिल्कुल, दोनों में अहलियत है लेकिन पार्टनरशिप जब तक बिल्ड नहीं होती, नए बैट्समैन को हमने देखा इस विकेट पे यही वो वक्त होता है जब उन्हें जल्दी भेजा जा सकता है। ये एक अच्छी ऑप्शन हो सकती है। सरफराज जब नए क्रीज पर आते हैं तो आप देख रहे हैं उनकी जो मूवमेंट्स हैं वो काफ़ी फिजिटी हैं, काफ़ी हलचल में नज़र आते हैं। जब सेट हो जाते हैं तो इत्मीनान से खेलते हैं। खुरम शहजाद की बात हो रही थी, वो एक अच्छा ऑप्शन हो सकते हैं इस टीम में। बलोचिस्तान की टीम में उनकी सबसे ज़्यादा रफ्तार है, स्किडी बॉलर हैं और सरफराज को वो तंग कर सकते हैं इनिंग्स के आगाज़ में। जी एग्जैक्टली, टारगेट करें पैट को, जिस तरीके से आप बात कर रहे थे कि थोड़ा सा शफल करते हैं क्रीज में अर्लियर ऑन इन हिज इनिंग।
लेकिन जैसे ही आप वक्त देंगे सरफराज को, इनिंग बिल्टअप होगी, स्ट्राइक रेट इम्प्रूव होगा, तो उनकी विकेट लेना फिर काफ़ी मुश्किल हो जाएगा। और ऑलरेडी हमने देखा कि आज दूसरा दिन है, सुबह के सेशन में कहीं ना कहीं बॉलर्स के लिए ज़्यादा मदद है, उसके बाद फिर एफर्ट डिलीवरीज है, और उसके बाद जो तीसरा सेशन है दिन का, उसमें बैटर इंजॉय करते हैं, इवन बाउंस के साथ अपनी टर्म्स को डिक्टेट करते हैं। नो बॉल एक मरतबा फिर नजीबुल्लाह की जानिब से, थोड़ी सी बॉल नीचे रही। सरफराज हैरान हुए इस बॉल के बाउंस को देखकर। 7वीं नो बॉल थी इनिंग्स की। नजीब का प्रॉब्लम रहा है, ये हमने पिछले साल भी देखा था, काफ़ी ज़्यादा नो बॉलें ये कराते हैं। क्लियरली ओवर हैं। ये देखें लास्ट जो डिलीवरी स्ट्राइड है, और ये देखें काफ़ी जो अपनी हाइट है वो उसका पूरा इस्तेमाल नहीं करते। जब आपका ये फ्रंट घुटना जब बेंड होता है, इसका मतलब है कि आप अपनी मैक्सिमम हाइट यूज़ नहीं कर रहे। शायद कहीं ना कहीं ये डिलीवरी स्ट्राइड ज़्यादा बड़ी है, कोचेस को देखना होगा ये। इसके साथ ओवर का हुआ इख्तिताम। 47 ओवर, 178 पे 5। जो इनिंग्स का रन रेट था एक मौके पर वो 4.25 से ज़्यादा का था, अब 3.25 के आसपास आ गया है। बॉलिंग में जो असद शफीक की 2 विकेटें हैं ये बोनस हैं, और आप देखें कि जो सीमर हैं उन्होंने ज़्यादा बॉलिंग की नहीं, क्योंकि यहाँ पर अब दिन के आखिरी हिस्से में एक बड़ी एफर्ट अगर करें तो सिंध की टीम को धकेल सकते हैं पीछे की तरफ। लाजवाब स्ट्रोक है, इससे बेहतर ऑन ड्राइव आपको देखने को नहीं मिल सकता। सऊद शकील बहुत आला, एक्सीलेंट। और इससे पहले भी बात की कि सऊद के पास ही एबिलिटी है कि वो लंबा बैट करें, और आज उनका जो इंटेंशन है वो भी बता रहा है। ये देखिए फुल फेस ऑफ द बैट, सिर्फ उन्होंने इसको पुश किया, हल्का सा टाइम किया, और बाकी का काम जो बल्ले की टाइमिंग थी उसने किया। बहुत खूबसूरत। अंदर आता हुआ बॉल, डिस्कम्फर्ट में ज़रूर हैं अपनी जो इंजरी हुई है इन्हें, लेकिन आप पिछले ड्राइव की अगर बात करें तो जो आपने टाइमिंग की बात की, एजाज बिल्कुल सीधा बल्ला उन्होंने प्रेजेंट किया, लेकिन आप देखिए बिल्कुल कोई फ्लरिश नहीं है, फॉलो थ्रू नहीं है, जस्ट एक पंच किया उन्होंने। और बॉल की स्पीड आप देखें, यही टाइमिंग का गिफ्ट है जो बहुत ही कम प्लेयरों के पास होता है, और सऊद शकील माला माल हैं इस गिफ्ट से। आकिफ क्या हिकमत अमली अपनाते हैं सरफराज के खिलाफ, भी तवील हैं। अच्छा बाउंस हासिल किया आकिफ ने भी आज। पहला स्पेल तो अच्छा था, लेकिन बाद में ज़्यादा महंगे साबित हुए। सरफराज बिजी क्रिकेटर हैं, कलाइयों की मदद से गैप्स का इस्तेमाल अच्छा करते हैं और स्कोरबोर्ड को मुतहर्रिक रखते हैं। एक ही रन मिला इस दफ़ा। आकिफ की आपने बात की, तो मेरे ख्याल से जो अभी बॉल पड़ा वो बेहतर था, अच्छी लाइन में था, पैड और ऑफ स्टंप के बड़ा करीब था। जिस अंदाज से सरफराज खेलेंगे, थोड़ा सा पेस अप हो डिलीवरी, तो माइट भी कहीं ना कहीं कोई चांस निकल पाए इनके लिए लेग बिफोर का। लेकिन दूसरे एंड पे सऊद बहुत ही ज़बरदस्त अंदाज अपनाए हुए। फिर बैट का फेस ओपन करते हुए और सऊद को जल्दी पर मजबूर किया, क्योंकि उन्हें अंदाज़ा है बलोचिस्तान की टीम को कि सऊद ज़्यादा तेज़ी से भागने की कोशिश नहीं कर रहे, अपनी इंजरी को प्रोटेक्ट कर रहे हैं। जो फैसल कल हम बात कर रहे थे कि ये कोका बोरा का जो बॉल है कहीं ना कहीं कुछ सेशन में जाकर लगभग 50-55 के करीब हल्का फुल्का हिलता है 3-4 या 5 ओवर के लिए, उसके बाद से फिर नॉर्मल उसका जो स्पीड है या फिर जो मूवमेंट है वो रहती है।
लगभग कोई 48वां ओवर है, फिलहाल कोई उस तरह का मूवमेंट हमें देखने को नहीं मिला अब तक। जी रिवर्स के लिए एक तो लेंथ इंपॉर्टेंट है और दूसरा जो आपकी कलाई की पोजीशन है देखनी होती है। जो सिंध के बॉलर्स थे उनके एक्शन और जो रिस्ट पोजीशन थी वो ऐसी थी जो किसी हद तक रिवर्स स्विंग के लिए मौजू थी। आगे भी हिट द डेक बॉलर हैं, इनकी नेचुरल लेंथ आगे नहीं है। जब भी उन्होंने आगे बॉल की कोशिश की हाफ वॉली कर दी। अच्छी हवा चल रही है, इस्तेमाल कर सकते हैं इसको अपनी फेवर में। इस लेंथ से तो कोई मूवमेंट नहीं मिलेगी बल्कि रन आएंगे। एक ही रन और फिर सरफराज ने मना किया। सऊद को मुड़ने में ज्यादा प्रॉब्लम होती है जब उन्हें तेजी से भागते हुए नो की कॉल सुननी पड़ी। 8 रन आए इस ओवर में 186 पर 5। वेल वैराइटीज 5 ओवर, 10 ओवर, 15 ओवर। इसमें से ये जो बॉल आपकी स्क्रीन के लेफ्ट पर है ये कुछ ज़्यादा नया लग रहा है और ये कोकापुरा बॉल लग रहा है। आप देख सकते हैं कि इसकी सिलाई जो है वो काफ़ी बारीक है, जल्दी अंदर को धंस जाती है। जो मिडल में भी बॉल 3 बॉलों 4 बॉलों के दरमियान फंसा हुआ है, बल्कि 5 बॉलों के दरमियान, उसकी भी सिलाई काफ़ी बारीक और धसी हुई सिलाई है। ज़माने में बॉलर्स पसंद नहीं करते थे कोकापुरा को, लेकिन अब तो उनके पास चॉइस ही नहीं है क्योंकि सारी क्रिकेट पाकिस्तान की डोमेस्टिक और इंटरनेशनल कोकापुरा पे हो रही है, तो उन्हें इसी से ही गुजारा करना पड़ेगा। जी हाँ, यूटिलाइजेशन स्किल्स और क्लाइमेट या फिर एटमॉस्फेयर का जो इस्तेमाल है वो इस बॉल के लिए चाहिए। फ्रंट फुट पे अच्छा शॉट। और अब सरफराज की जो हम बात कर रहे थे अर्लियर ऑन, थोड़ा शेकी, लेकिन अब आहिस्ता आहिस्ता उनका बल्ला अच्छा मिडल करना शुरू हो गया। जो वक्त गुजारेंगे आई इन होती जाती है, पैर चलना शुरू करते हैं। इसमें अच्छा बैलेंस था, आप देखें कि कितना बॉल को करीब से उन्होंने देखा, उनका सर जो है वो बिल्कुल लाइन में था, तो बॉल को आखिरी वक्त तक बल्ले पे लगता हुआ देखते रहे। कोकापुरा की बात हो रही थी, एक और भी चीज़ चाहिए होती है बॉलर्स को, दमखम हो बॉलर में, तो तभी कोकापुरा से वो कुछ फ़ायदा उठा सकते हैं। एक ज़माना था कि पाकिस्तान की डोमेस्टिक क्रिकेट में बहुत ज़्यादा मीडियम पेसर्स छा गए थे क्योंकि ग्रीन टॉप पिचेस होती थी और लोकल बॉल होता था, जो कि बहुत ज़्यादा बॉलर्स के फेवर में जाता था। और हमने देखा काफ़ी बॉलर्स के जो स्टैट्स हैं बहुत ज़्यादा मुतासिर कुन थे, लेकिन जब बड़े लेवल पर वो गए तो वो एक्सपोज हुए। लेकिन अच्छी बात यह कि पाकिस्तान क्रिकेट में वो जो फास्ट बॉलर्स का दौर था, जो जेन्युइन पेस बॉलर्स थे 140, 145 एंड अबव, वो दौर अब वापस आ गया है। और अब आपको बॉलर्स, तेज़ रफ्तार के बॉलर्स मिलते हैं पाकिस्तान के सर्किट में। ये लाइन ठीक नहीं होगी नजीबुल्लाह की, आसान है बैटर्स के लिए यहाँ से रन्स कलेक्ट करना। एग्जैक्टली आपने सही कहा। और एक इंटरव्यू में मैंने पढ़ा जिस वक्त ये वसीम अकरम, वकार यूनुस का ईरा था पेसर्स का, कि इवन अभी जैसे हम देखते हैं कि बाउंस जो है वो माइट भी कभी कभार एक आध बॉल उठता है, तो सीने से बॉल नीचे नहीं उतरता था वसीम अकरम का, इवन इस तर्ज के लॉन्गर फॉर्मेट में भी। तो वो जो दम की आपने बात की, एग्जैक्टली किस दौर की बात कर दी इजाज़ आपने। 90s में जिन्होंने क्रिकेट पाकिस्तान की देखी वो कभी भूल नहीं सकते वो दौर। अच्छा गैप हासिल किया इन दोनों बैटर्स ने, एक मुसलसल स्ट्राइक रोटेशन दर्द सर का बायस बनी हुई है असद शफीक के लिए और नजीबुल्लाह के लिए भी।
जो 90s की आपने फास्ट बॉलिंग के दौर की बात की, वसीम वकार तो थे ही, मोहम्मद जाहिद थे, फिर शोएब अख्तर आ गए, मोहम्मद अकरम, इस दौरान नाम लें तो बॉलर्स की एक लंबी फहरिस्त थी। कई तो ऐसे थे जो पाकिस्तान की नुमाइंदगी ठीक से कर भी नहीं सके, इतना मुकाबला था फास्ट बॉलिंग में। यहाँ बहुत ज़रख़ेज़ ज़मीन है पाकिस्तान की इन टर्म्स ऑफ एवरीथिंग, स्पोर्ट्स या किसी भी फील्ड की आप बात करें। इसी दौरान रन्स हासिल किए, ये वो फ्लो है जो रुक नहीं पा रहा, जिसकी फैसल अभी बात कर रहे थे। और क्योंकि बॉल की रफ्तार आहिस्ता हुई जिसकी वजह से बाउंड्री पार ना हो पाई, लेकिन स्लोली बट श्योरली 3 रन यहाँ पर हासिल किए और रन फ्लो चलता जा रहा है। ये सरफराज का प्रॉफिटेबल एरिया है बिहाइंड स्क्वायर ऑफ साइड पर। पहले उन्होंने बैक फुट पे यहाँ रन हासिल किया, फ्रंट फुट पर अच्छा लंबा कदम निकाला, गेंद के बिल्कुल ऊपर आ गए, बंगलजई गेंद तक पहुंचे। और एजाज हैरत की बात यह कि इस पूरे खित्ते में फास्ट बॉलर्स की सरजमीन सिर्फ ये खित्ता ही है पाकिस्तान। भारत में हमने इक्का दुक्का तेज़ रफ्तार बॉलर ज़रूर देखे हैं, फास्ट बॉलिंग का कल्चर ना होने की वजह से वो ज़्यादा पनप नहीं सके। बांग्लादेश और श्रीलंका में तो खैर उतना भी नहीं देखने को मिला, लेकिन पाकिस्तान में एक के बाद फास्ट बॉलर्स की आमद की जो है वो आमद का सिलसिला जारी रहता है। फास्ट बॉलर्स की फैक्ट्री कहा जाता है पाकिस्तान को। 191 पर 5। ऊपर है पॉइंट, ऊपर है पॉइंट, ऊपर है। शोएब अख्तर, रावलपिंडी एक्सप्रेस। और अगर आज इनका नाम यहाँ पर मौजूद है तो ये 22 यार्ड है या फिर ये वेन्यू है जहाँ पर उन्होंने पाकिस्तान को रिप्रेजेंट किया। और स्टार जब लगता है सीने पे तो आप हकीकत में स्टार बनते हैं। रावलपिंडी शहर का नाम रोशन किया पूरी दुनिया में शोएब अख्तर ने। 2 मज़ीद फास्ट बॉलर्स के इनक्लोजर्स भी हैं यहाँ पर। आप शोएब अख्तर जितने एक्सप्रेस तो नहीं कह सकते थे, लेकिन बहुत अच्छी और लंबी क्रिकेट उन्होंने खेली। अपने शहर का नाम उन्होंने भी रोशन किया। यहाँ पे सुहेल तनवीर इनक्लोजर है। T20 की क्रिकेट के साथ ही उनकी आमद हुई। अजहर महमूद बेहतरीन ऑलराउंडर थे, यहीं पर उन्होंने अपना डेब्यू किया, सेंचुरी बनाई साउथ अफ्रीका के खिलाफ। सुहेल तनवीर T20 मैचों में अभी हमें नज़र आते हैं। और हमारे बाएं जानिब यासिर अरफात इनक्लोजर भी है। काफ़ी ज़्यादा क्रिकेट उन्होंने खेली। और यहाँ तो फास्ट बॉलिंग का जो मुकाम है वो उन्होंने सर किया। इमरान खान इनक्लोजर तमाम ही फास्ट बॉलरों के लिए मशाल राह साबित हुए। और इस खित्ते में जो फास्ट बॉलिंग की जो हिस्ट्री थी, जो फजल महमूद, खान मोहम्मद से शुरू हुई, उसको उरूज बख्शा इमरान खान ने, और उसके बाद ये सिलसिला रुका नहीं। एग्जैक्टली यासिर अरफात T20 में एक वक्त था कि वो टॉप विकेट टेकर थे, और कोई शक नहीं उन तमाम पेसर्स की अहलियत में, कैलिबर में, और रहती दुनिया तक ये नाम रहेंगे जब तक क्रिकेट खेली जाएगी। यहाँ पे अच्छी विकेट कीपिंग हसीब की, मिस डायरेक्टेड डिलीवरी थी। आकिब की ज़्यादा जोर लगाया, लेकिन आइडिया अच्छा था, कोई हर्ज नहीं सरफराज को शॉर्ट पिच डिलीवरी पे टेस्ट करने का, लेकिन लाइन सही नहीं थी। जी हाँ, इसमें कोई शक नहीं कि आपने हमेशा बैटर को टेस्ट करते रहना है, लेकिन इतना ज़्यादा विवट नहीं होना चाहिए कि आप उसको आसान कर दें उसके लिए बैटिंग। क्योंकि जब हमने देखा कि अगर स्कोरिंग एरियाज़ ब्लॉक किए जाएं तो यकीनी तौर पर बैटर नए एरियाज़ को तलाश करता है, तो माइट भी कहीं ना कहीं आपको चांस दे, लेकिन उससे पहले आपको वो रन्स रोकने होंगे जो कि इस वक्त लीक हो रहे हैं या फिर बढ़ते जा रहे हैं। और पहले भी हम बात कर चुके हैं फैसल के जो ये दोनों बैटर हैं, इनका कैलिबर ऐसा है कि ये 100
बल्कि 150 रन की भी पार्टनरशिप ले जाएं। जी बिल्कुल, अहलियत तो है, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन क्रिकेट में कहते हैं कि हर दिन नया दिन होता है। आपने जो काम बरसा बरस मुसलसल किया है, अच्छा टाइम किया सरफराज ने, ज़्यादा कुवत सर्फ नहीं की, 2 ही रन मिलेंगे। कहते हैं कि जो काम आपने बरसा बरस किया है उसकी इतनी कदर कीमत नहीं होती जो कि लेटेस्ट इनिंग्स की होती है। इस वक्त जो खेल रहे हैं इसकी अहमियत ज़्यादा होगी, और आज करके दिखाएंगे तो आज के मैच पे उसका असर होगा। 193 पे 5। इस वक्त एक तरह से सरफराज और उनके साथ सऊद की जोड़ी जो है वो कोशिश में है कि मज़ीद रन आज के दिन में भी बटोर सकें, और काफ़ी वॉचफुल है। अभी तक कोई उन्होंने चांस क्रिएट नहीं दिया नहीं इनफैक्ट बॉलिंग डिपार्टमेंट को, क्योंकि दोनों ज़मीन पर खेल रहे हैं। फवाद का एक विकेट था जो कि गिफ्ट था एक तर्ज का, बुरे बॉल पे इनफैक्ट असद शफीक की। अच्छा गैप हासिल किया सऊद ने, बल्ले के बीचों बीच नहीं आई, इसलिए 4 रन नहीं हासिल कर पाएंगे। और ये अजीम घुमन देखेंगे दोबारा इसको ज़रूर, क्योंकि ये सही टेक्निक नहीं है, क्योंकि बहुत इंजरी आपको हो सकती है। और माजी में हमने कई खिलाड़ियों को घुटने की इंजरी होते हुए देखा इस तरह की स्लाइड से। देखिएगा एजाज, टाइम नहीं कर पाए। अच्छा चेस किया, काफी तेज रफ्तार, लेकिन यहां आप देखिए जिस तरह उछल के इन्होंने डाइव लगाई। कोचेज इस चीज की जो है वो आपको प्रैक्टिस की अप्रिशिएट नहीं करते। जी हाँ, बाजू का ट्विस्ट भी हो सकता है आपका घुटना, जिस वक्त आप एयरबॉर्न होकर इस तरह से लगाएं, स्टक हो जाए घास में। और ऑलरेडी रोमान रईस की हमें हिस्ट्री याद है कि जो स्टक किया घुटना उनका, उसके बाद हवा में एयरबॉर्न हुए। खुशकिस्मती से ही ये घुटना इनका लगा नहीं नीचे, और अपनी साइड पे इन्होंने स्लाइड कर गए, क्योंकि जिस तरह आपने इंजरीज की बात की कि अगर आप इस तरह उड़कर डाइव लगाएंगे और आपका घुटना ज़मीन पर लगेगा तो बहुत सख्त इंजरी हो सकती है। हमने ज़्यादा देखा है कि यूएई के जो ग्राउंड हैं जिनकी बेस रेतली होती है, वहाँ पे इस तरह के वाक़यात हमने देखे हैं। ऑस्ट्रेलिया में भी ग्राउंड्स की जो बेस होती है वो रेतली ही होती है। ब्रिस्बेन में साइमन जोन्स को ऐसी इंजरी हुई थी जो उनके कैरियर में काफ़ी थ्रेटनिंग साबित हुई। स्लाइड और डाइव आप ज़रूर करें, लेकिन सही टेक्निक के साथ। और आप मॉडर्न बात करें तो शाहीन को भी जो इंजरी हुई है वो बॉलिंग से नहीं हुई, उन्हें भी फील्डिंग में गलत डाइव लगाने से, गलत तरीके से डाइव लगाने से इंजरी हुई। जी वॉचफुल जिस अंदाज से इस वक्त ये दोनों बैट कर रहे हैं, इंटेंशंस भी यही है कि आज का दिन भी बाकी मानदा जो ओवर्स हैं वो खेल कर जाएं। विकेट कीपर रेडी नहीं थे जिस वक्त बॉल डिलीवर हुआ, देखिए वो अप थे। हसीब को हमने पहले भी देखा है यहाँ पे, उनकी कलेक्शन में जो है जो सफाई एक्सपेक्ट की जाती है। बिस्मिल्लाह खान बलूचिस्तान के पास मौजूद हैं विकेट कीपर के रोल के लिए, लेकिन इस दफ़ा फर्स्ट 11 में नहीं खेल रहे वो। ये भी आप देखें जो आखिरी बॉल पकड़ा हसीब ने, वो भी इतनी सफाई से नहीं पकड़ा, झटका सा ज़रूर लगा उन्हें। ये मॉडर्न डे टेक्निक है। यहाँ पुराने ज़माने में विकेट कीपर झुक कर खड़े होते थे और बॉल के साथ उठते थे, वो टेक्निक अब एक तरह से ख़त्म होती जा रही है। और मॉडर्न डे, 19 साल के हैं हसीब, तो वो मॉडर्न डे टेक्निक उन्होंने अपनाई है।
लेकिन बेसिक्स वही रहती हैं एजाज, आपकी कलेक्शन में जो सफाई है, चाहे आपका जो भी स्टांस हो वो मैटर नहीं करता, लेकिन कलेक्शन में सफाई होनी चाहिए। जी हाँ, और कोचेस मौजूद हैं वो तमाम तर गुर सिखाने के लिए। साइम अयूब यकीनी तौर पर नाखुश होंगे जो अनलकी रहे, या फिर एक कहना चाहिए कि प्रेजेंस ऑफ माइंड ना दिखा पाए, जंप कर गए। खुरम लगता है कि वार्म अप हो रहे हैं और ये अच्छा मूव होगा दिन के इस लम्हे में, जब हवा भी इस वक्त इतनी लिफ्ट नहीं है, स्लो है, लेकिन मूव होना चाहिए क्योंकि थिंकिंग कैप्टन बेहतर रहता है। डॉट बॉल टू फिनिश दी ओवर। 51 ओवर गए, सिंध 196 पे 5। सिंध की टीम अभी भी 73 रन पीछे है बलूचिस्तान की टीम से। बात कर रहे थे कुछ देर पहले कि जो सीमर्स हैं वो काफ़ी फ्रेश हैं अभी भी बलूचिस्तान के। आज के दिन में आकिफ ने 11 ओवर किए, खुरम शहजाद ने 10 ओवर्स किए और 10 ही ओवर नजीबुल्ला ने भी किए हैं। कोई इस तरह की कंसिस्टेंसी या प्लान्स में नज़र नहीं आई फास्ट बॉलर्स की। आकिफ ने पहला स्पेल अच्छा किया था, लेकिन इसके बाद बिल्कुल रेगुलेशन फील्ड है और कोशिश कर रहे हैं कि विकेट की एक साइड पे बॉल करें, एंगल चेंज करते रहें गाहे बगाहे। वेल, सरफराज का सेकंड डे का जो खेल है वो काफ़ी वॉचफुल है, और पहले भी हमने बात की कि यहाँ पर स्लाइड की, और शायद ये बेहतर स्लाइड थी क्योंकि ये स्क्वायर पर है, यहाँ गलती की गुंजाइश नहीं है, बहुत सख्त होता है। और बॉल लगता है कि फॉलो कर रहा है अजीम घुमन को। ये बॉल देखिए, हल्का सा जो यहाँ पे पफ ऑफ डस्ट नजर आया जहाँ पे बॉल लैंड हुई है। बॉलर्स फुटमार्क्स हैं यहाँ पर। अभी दूसरा दिन है, नज़र रखनी होगी, कुछ जो विकेट के बिहेवियर में तब्दीली हो सकती है। अगर इस तरह विकेट ड्राई होता रहा तो तीसरे और चौथे दिन जाकर कहीं बैटिंग मुश्किल हो सकती है। पुल किया लेकिन कंट्रोल नहीं कर सके, थोड़े सरप्राइज हुए सऊद शकील। जी, बैक ऑफ लाइन बॉल था, वक्त मिला था, लेकिन शायद उनकी टाइमिंग अच्छी नहीं थी। ट्विस्ट हल्का सा हुआ, बल्ला उनके हाथ से निकला, जिसकी वजह से टाइमिंग परफेक्ट नहीं हो पाई, और शायद उनकी एक्सपेक्टेशंस भी नहीं थी कि बॉल इतना तेज़ या ऊपर आएगा। लेकिन असद शायद यही कह रहे हैं कि ड्राइव पे रखो, कवर पे 2 फील्डर हैं, उसके साथ साथ गली पे एक स्लिप पे। मिड विकेट का फील्डर पीछे भेज दिया था इस शॉट के बाद। ये जो पुल शॉट था साउथ का, आपने अक्सर देखा होगा बाबर आजम को भी फ्रंट फुट से पुल शॉट मारते हैं मॉडर्न डे जो बैटर्स हैं। जो रिवायती तरीका हुआ करता था, बैक एंड अक्रॉस जाकर वेट बैक फुट पर पूरा ट्रांसफ़र करके, अब फ्रंट फुट पुल शॉट की ज़्यादा जो है एक तरह से फैशन कह लें। उसमें यह है कि रेंज भी होती है ज़्यादा, इन फ्रंट ऑफ स्क्वायर जाता है बॉल। बैटिंग की जो फन है वो भी वक्त के साथ साथ इवॉल्व होता रहता है, इसमें वेरिएशंस और चेंजेस वक्त के साथ साथ आती रहती हैं। जो अच्छे टॉप क्लास प्लेयर्स होते हैं वो इन तब्दीलियों के साथ खुद को हम आहंग करते रहते हैं वक्त के साथ साथ। जी हाँ, मॉडर्न डे क्रिकेट की जैसे आपने कीपिंग की टेक्निक की बात की, इसी तरीके से जो बाउंसर्स हैं जब एलिमिनेट हुए वनडे क्रिकेट से डेंजरस होकर, तो उस वक्त भी आप कह सकते हैं थोड़ा सा बैटर्स को ज़्यादा फ़ायदा हुआ।
साइम अयूब जो कि आपको इस स्क्रीन पर नज़र आ रहे हैं, इन्होंने ये भी नए शॉट्स इन्वेंट करने की अहलियत रखते हैं, उन्होंने खेले भी और काफ़ी पॉजिटिव फ्रेम ऑफ माइंड से एक अच्छा टॉप ऑर्डर का बैटर है प्रॉस्पेक्ट। और 5 फील्डर्स ऑन साइड पर चले गए हैं। जो मिड विकेट का फील्डर पहले पीछे चला गया था, एक और फील्डर ऑफ स्टंप से ऑफ साइड से लाकर ये गैप भी फिल किया है। हाफवे खड़े थे ये फील्डर, डायरेक्ट हिट, लेकिन सरफराज पहुंच गए। प्रिडिक्टेबल थी ये लेंथ, लेकिन जाहिर नेचुरल शॉट है, इंस्टिंक्टिव शॉट है, रोकना मुश्किल होता है। सऊद ने अच्छा कंट्रोल किया, कलाइयां का रुख जो है वो मोड़ा और गेंद बिल्कुल जमीन के साथ लगती हुई गई। डायरेक्ट हिट, करीबी मामला हो सकता था, शायद सरफराज तवक्को नहीं कर रहे थे। 52 के बाद 198 पर 5। जिस तरह का नजीब का एक्शन है वो अच्छा एंगल क्रिएट करते हैं लेफ्ट हैंडर के लिए। जिस तरह वो अपने डिलीवरी स्ट्राइड में अपने बाएं जानिब थोड़ा सा फॉल अवे करते हैं, वो एंगल अच्छा बनता है लेफ्ट हैंडेड बैटर के लिए। राइट हैंडेड बैटर के लिए तो जाहिर है वो टांग पे ज़्यादा स्ट्रे करेंगे तो इजी रन्स बन सकते हैं, लेकिन लेफ्ट हैंडर के लिए अच्छा एंगल बना रहे हैं और फील्ड भी सेट है। डीप पॉइंट पे एक फील्डर है, वहां पे उनको प्रोटेक्शन है, अगर ज़्यादा रूम उन्होंने दे दिया। 3 फील्डर इन फ्रंट ऑफ स्क्वायर हैं। एक्स्ट्रा कवर आप और मिड ऑफ आपको नजर आ रहे हैं। कवर का फील्डर भी थोड़ा सा पीछे है। इस वक्त हम देख सकते हैं कि जो शॉट है, ये जैसे फैसल बात कर रहे थे रनअप की, यहाँ इन्हें रनअप में मसला हुआ है, लेकिन ये अच्छा रिदम है अपनी रफ्तार बढ़ाते हुए। यहाँ पर ये देखिए, एक तो इनका घुटना बहुत बेंड होता है और दूसरा अपने बाएं जानिब थोड़ा सा गिर पड़ते हैं, जिसको कहते हैं क्रिकेट की जुबान में, जिससे उनको कंसिस्टेंसी हासिल करने में मुश्किल हो सकती है, लेकिन लेफ्ट हैंडर के लिए निस्बतन बेहतर एंगल बन जाता है। इन्होंने भी 2 फील्डर अब पीछे ले लिए ऑन साइड पर, शायद शॉर्ट पिच डिलीवरी करेंगे। अच्छा फैसल, जो स्ट्रोक मेकिंग है वो भी इतना फुल फ्लो में नहीं है। हमने देखा कि इवन इससे पिछले जो 2 बॉल थे जो ड्राइव करने गए, तो उसमें थोड़ा सा जो शॉट खेलने जा रहे हैं, कवर की जा रहे हैं, वो फुल फ्लो में नहीं है। ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं वो चेक कर रहे हैं अपने स्ट्रोक्स को। जी ऐसा लग रहा है, और साउथ की इनिंग्स का जो फ्लो है वो निस्बतन मुतासिर हुआ है जो उनकी इंजरी हुई है। 2-3 ओवर्स में हमने ये भी देखा है कि बॉल कदरे 2-3 बॉल कदरे नीचे भी रहे हैं। इस तरह का एक आधा बॉल भी बैट्समैन की जो माइंड में डाउट क्रिएट करने के लिए काफी होता है, और उसी डाउट की वजह से वो आपका फ्लो मुतासिर होता है। ये अच्छी लाइन और अच्छी लेंथ, इसी एंगल की मैं बात कर रहा था, ज्यादा मुश्किल क्रिएट करते हैं लेफ्ट हैंडर्स के लिए। महदूद वसाइल के साथ कप्तान असद शफीक ने अच्छा इस्तेमाल किया अपने बॉलर्स का। किस्मत ने भी कहेंगे साथ दिया उनका, जिस तरह उन्हें 1 विकेट मिली और 1 रन आउट की सूरत में। एग्जैक्टली क्योंकि अदर एंड पे उमैर बिन यूसुफ, सऊद शकील, साइम अयूब, फवाद आलम, ये ऐसे बैटर हैं कि जो इस तर्ज की विकेट पे 100 से कम पे बात नहीं करते। फिर बॉल नीचे रहा। कोई डाउट जिसकी मैं बात कर रहा था, जो बैटर्स के माइंड में जब क्रिएट हो जाता है, तो जिसको क्रिकेट की जुबान में कहते हैं कि खुले शॉट लगाने से पहले बैट्समैन एक दफ़ा सोचता ज़रूर है, जिससे रन रेट में भी फ़र्क पड़ता है। एक मौके पर सिंध की इनिंग्स का जो रन रेट था वो 4.3 के आसपास था, अब 3.75 का रह गया है।
इसलिए कि वो जो फ्लो है वो मुतासिर हुआ है, फिर विकेटें गिरने से भी रन बनाने की रफ्तार कम होती है। मिड इन ओवर 198, 5 खिलाड़ी आउट और पिंडी क्रिकेट स्टेडियम में पानी का वक्फा। So this is the story of Sindh's batting. Good 50 from Saud Shakil, still there, and disappointment from the Quaid-e-Azam and Saim Ayub, but surprises in good touch, supporting there. So 198 for 5. Saad Khan was departed after the tee. It was a very close call, and Asad Shafiq was a successful bowler at that time. Though Saad wasn't happy with that decision, but a good call from umpire. Asad Shafiq, the skipper, is the successful bowler so far. 5 overs, 13 runs, 2 wickets. Najibullah and Akif Javed taken 1 wicket. So this is the match summary. Balochistan 269 courtesy Hasibullah and Imran Bird's 50. Sindh responding them, and still they are 71 runs behind. Khurram Shehzad already bowled 10 overs, given 55 runs. The economy is 5.50. A bit surprising that he's on towards the expensive side, Khurram Shehzad, giving away 55 runs. Saim Ayub played him really well.
4 boundaries he took off him. Oh, very close, but I think, oh, good delivery from Khurram. He charged him. Used his feet. Have a look at that. That's the only reason that saved him. That is still there, Sarfraz Ahmed. Playing across the line is not advisable. But look how far he was from those stumps. That's the only thing that has saved him. Sarfraz Ahmed, he should know the importance of this wicket. They still trail by 71 runs. That's better. There's a fielder placed for it, Imran Butt. They've got their best man there at mid-wicket, Imran Butt. I like his fielding intentions, and he's a very good fielder. Always enjoys catching. There's a hint of a... There was chance. Imran Butt thought, had he thrown it, he waited, he waited, he waited. Still waiting, still waiting. Okay, that's enough. There was a missed field, and but the direct is so perfect from the fielders of Balochistan. Went right through Imran Butt and Asad Shafiq with his direct throws. Earlier he got the wicket of Saim Ayub solely. That will go to him. His presence of mind, he realized it. A bit of luck also involved. That's a good take. That's a good take. There's the shout. He's given it out. That is a beautiful take by Hasibullah behind the stump. Sarfraz cannot believe it. He cannot believe his luck. It was an easy delivery towards his leg side. Just tickled it. And a wonderful catch by the young Hasibullah. Superb cricket from Balochistan. Well, went for the flick shot, and beautifully taken by Hasibullah, this youngster. And Sarfraz Ahmed departs on 15, 198 for 6. Well, Kunubal, they say there's never a good time to lose a wicket, but this was really a bad time. Really a bad time to lose a wicket. Sarfraz Ahmed got just 45 minutes to get to the end of the play. He's looking so good. He needed to be there with South Shakil. Lost his wicket. And now comes another all-round cricketer. Asif Mahmood, the big hitter. Must be very disappointed. Sarfraz Ahmed just got the glove on his way towards the keeper, the ball, and a wonderful take by young Hasibullah. He's had his struggles behind the stump, but this one was a fantastic job. 56 runs, best of 31. Average will improve. Look at this. Wasn't an extraordinary delivery, but the catch was brilliant. Down the leg side, went for a flick shot, but nicely taken. And a good decision by the umpire also. Good take. He's improving day by day, Hasibullah, behind the stumps. There's a delay as we see South Shakil, I guess, again struggling with that hamstring. He's down again.
This is Asif Mahmood. Important inning for his career. We've seen him hit big. He hits those huge sixes. But this situation demands a different Asif Mahmood. The situation demands him to stay there, hang in there with Saud Shakil, who at the moment is not present in the ground. We just can see only one batter. He's probably gone to get some repair work done. Yes, chit chat is going on there. Azim Ghumman, Kashif, Imran Baj is there. Yeah, while they chit chat, let's have a look at the dismissals from Sindh side as Saud Shakil walks. Man, this one was the first one. Good delivery. And a very good catch. Saim Ayub. Oh, that's an unlucky way to go. Really unlucky. That's not what you expect. It was looking so good. And then a loose shot by Faraz. Lot is expected of him. Another loose one. You just count the numbers. The loose one, I say. This is the second one. Again, not concentrating enough. Not paying respect to Asad Shafiq. So Faraz Ahmed, again a loose wicket. So out of these 6 wickets, 4 at least have gone down to two loose shots. And 1 courtesy to some good presence of mind by Asad Shafiq to get rid of Saim Ayub. So it's been that sort of a inning from Sindh side. Down. Direct throws. They've been brilliant, Balochistan side, with those direct throws. Again, another one. Look at that, going down. Clearly, Saud Shakil knew that there was one available. It's 198 for 6. Middle. Didi. Najibullah continues. It's bowled well. It's a good run. Quick run! Direct throw was needed. Couldn't get it right this time. Is it the same man? Is it Asad Shafiq? Gently pushed towards onside and look at this effort. Oh, Azim Ghumman, I think there. Missed out. Picked it up nicely. Azim Ghumman. One flow, throw it up. Meanwhile, Sindh completes their 200 runs after losing 6 wickets. Ali, I do not understand that while you got a couple of run-outs there in your innings, still you're taking cheeky singles. I think that won't require anything. So is well settled there. You know, he's struggling with his hamstring as well. So I think just go for your, you know, natural cricket. There is no need to take any risk. So I'm not understanding that what's going on. See, they're losing wickets on regular intervals. And cheeky singles. Well, yes, I agree with you. Because Saud Shakil is not 100%. He's not feeling well. He's got that hamstring going. He's still running for those close ones. Yeah, you need to ask him in the morning tomorrow what happened there. Why? I'm not the right person to answer that.
But it's been really disappointing from Sindh side. They've not concentrated enough. Simple as that. If you look at the dismissals, the type of shots they've played, lack of concentration. Lazy shots. That's nicely timed for one. Yeah, if you look at those dismissals starting from Saim Ayub, Faraz also, Fawad, Saad Khan, Sarfraz, 5 of them, casual cricket. Not required at this level, no. There are youngsters involved, there are youngsters watching. You got to be setting an example. Bowler gets you out, it's fine. You don't give your wicket away. Don't throw it away cheaply. Simple. Again, he's looking for that one. Yeah, we talk about intent, but not at the cost of the health of your captain. No. And this is the flag of our pride. And whenever you talk about the intent, it's really important, your concentration and your approach actually. And then your behavior towards game knowledge, it's really important. Be careful, Asif Mahmood. He's in a hurry. Not good. 201 for 6. Yeah, you were talking about the intent earlier. See, when everyone, even the senior cricketers, even the test cricketers, all those analysts, pundits, when they talk about intent, it's not about coming and hitting away. It's not that. Please get that out of your mind. It's not that. Intent is you should be able to put away the bad deliveries on regular occasion, on every occasion. That's intent. That you're not looking to block those bad deliveries. The intent should be that the bad deliveries should always go to the boundary. You should be able to give respect to the good deliveries, but the bad ones should go to the boundaries. That's the intent. That's the positivity. It's not that you come and start hitting. It's not that. No. Your game knowledge and aptitude actually, it matters a lot. Your friend's still there, Ali? I have to go say hello to her. It's like a month or more than a month that I'm here in Rawalpindi for National T20, and now for this. She's a regular visitor. Touch of reverse swing for Khurram. As they look for 2. Saud Shakil is struggling. Was it Asif Mahmood? Had Imran Butt collected it, there might have been a different story at non-strikers, and yeah, that shows the disappointment on Saud Shakil, that there was clearly a chance had Imran Butt collected it clearly. Yes, Azim Ghumman was there, and throw was okay, and batter was away very far. It could have gone simply. That was a poor call. What has happened? Why are they in a hurry? That's the question. Saud Shakil, 70. Brilliant. Again, running, putting pressure on Asad Shafiq and completing a run. They're just running. Well, placed towards mid-off. Asad Shafiq missed this time. Yes. Asif is a very good and clean hitter as well. But I think that this time his team requires his efforts, that if he could spend some time with his skipper, coming up with a partnership around 40-50 runs, it could be a useful partnership for Sindh.
But not just for the team, but for himself also. Because he has shown potential as a batter. Needs to prove. This is the situation. Tailor-made. To prove his abilities. No, he's knocked him over. Khurram Shahzad has undone Asif Mahmood. A bit of a nothing shot. What was he trying to do? We have no idea. But that off stump is out of the ground. Wonderful wicket. Second for Khurram. Look at this delivery. Came in and poor stuff from Asif. Just went for a big hit. And this is what I was talking earlier, that he should have shown the responsibility. Asif Mahmood departs on 1, 204 for 7. And they aren't happy now. Obviously, they're in pressure as well. Mohammad Umar scored a 50 in the last game. It's got a job to do, a different one. And just as we were talking about Asif Mahmood's ability, he's played a wrong shot, zero game awareness. 10 matches, 90 runs, that best of 59 game this year, this ground. Oh, suddenly things are happening. It's happening for Khurram Manzoor. It's reversing. It's just been a wonderful comeback from Khurram. And this was what we were talking about. Came in. But still, there will be a lot of question marks on this shot selection of Asif Mahmood. Was there a need of it? There was captain well set. All he needed to do was just stay there with him. But he couldn't. I had a discussion yesterday with Shah Faisal that if you want to become a great batter, you should follow a great batter individually. And we had a discussion about Rahul Dravid, Jack Callis. The character they showed individually was phenomenal. Solid by Umar. It's 204 for 7, Sindh. You see the disappointment? But he cannot blame anyone but himself for that shot selection. Was there a need of it? And yes, as you were just talking about the character, well, you were talking about the greats of the game. There is no comparison. But still, he should be learning. If you're looking to build a career as an all-round cricketer, you got to be scoring runs at difficult times. That is a sorry card. If you look, more than half of these wickets, they've been gifted to Balochistan. They've not been taken, they've been gifted. And now Sindh struggling even to get to that total of Balochistan, because the trail by 65 runs at the moment. 204 is at the moment. Yes, Ali, when I agree that there's no comparison, but when I'm saying this, the character showed by the great of the games like Rahul Dravid or the Jack Callis, or if you talk about the recent players, even the Quaid-e-Azam, the class, and then Kane Williamson, Virat Kohli, why they're the great? Because they're the good finishers. This is what our youngsters should have learned. Yeah, you make a good point, but it's all up to the individuals, this level of talent, the level of skill. We were talking about Asif Mahmood at the moment, so we can compare him with an all-round cricketer. Somebody like Ben Stokes, somebody like Hardik Pandya. The all-rounders, the good all-rounders of the game, what they do, how they do it, when they do it. They score runs at important times.
It was in the air for a little while. We'll just walk it for one. So yes, if you have to make your name as an all-round cricketer, you should be following those cricketers. And what they did best for their team is score some crucial runs. Win the game for the team single-handedly. Do it for the team. Important runs. And he's not done that. It was very disappointing. You get out, that's fine, but the type of shot you played was disappointing. As he walked in, and I said that his team requires his efforts, and you said not only his team, but for himself, it's really important to spend some time there, score a 50, 60. But the only thing is that is the game awareness there. Umar also, I'm not saying anything about him. Because he's scored a 50, he's got that potential in him also. But that's what we said about Asif Mahmood. Not saying it again for anyone else, no. Umar's intentions and his bowls, the way he bowled today, and he got a wicket of Hasibullah, it was the ball of the match for me so far. Edged! Just falling short of the best in the best. Imran Butt, probably the best second slipper in all of the world. The safest of all. Even he couldn't get it. Look at that. Yeah, just falling short of it. Just was always dipping on him. This effort giving us an energy, isn't it? Trailing by 64 runs. They can be very long runs if they keep on losing wickets and they keep on playing shots like Asif Mahmood did. Very poor cricket. Very poor cricket. You're trying to build your name as an all-round cricketer. It's not going to happen like this. No. You have to be good in one department. You have failed it as a bowler. You got to score runs. And important runs they were. Had he stayed with the captain, at least till the day end, it hasn't happened. But he looks good, solid, 205 for 7. सिंध की बारी मुकम्मल लड़खड़ा गई। 160 पर 3 खिलाड़ी आउट थे और अब 204 पर 7 खिलाड़ी आउट। विकेट मिली सऊद शकील को, लेकिन ये एरिया काफ़ी प्रोटेक्ट किया हुआ है। काफ़ी रन बचाए हैं बलोचिस्तान ने यहाँ पर स्वीपर फील्डर रखकर। और एक ही दिन में अजीब व गरीब डिसमिसल देखने का शायद आज जो मुजाहरा कम ही देखने में आता है। पहले साइम अयूब, फिर फवाद आलम, सरफराज अहमद। आसिफ महमूद के शॉट की तो कोई जस्टिफिकेशन दे नहीं सकते आप। ऐसा स्लॉग तो आप नंबर 11 से भी एक्सपेक्ट नहीं करते 4 डे क्रिकेट में। उमर, इनकी ख्वाहिश है कि उन्हें बतौर ऑलराउंडर माना जाए। एक तेज़ रफ्तार निफ सेंचुरी बना चुके हैं। आज रोल कदर डिफरेंट है, लेकिन
सिंध की टीम जो अपना रास्ता खो बैठी है, लगता है थोड़ा सा कहीं उन्होंने जो है वो एक्सेलरेटर पे से पैर हटाया, अपनी कंसंट्रेशन जो है वो रिलैक्स की और ये मैच पलट गया आनन फानन। जी हाँ, क्रिकेट बाय चांस है। और यहाँ पर दूसरे एंड से बलूचिस्तान का जो कॉन्फिडेंस है वो बिल्टअप हुआ, जो कि बड़े बड़े प्लेयर हैं टेस्ट क्रिकेटर सिंध की साइड में, उनको आउट करना आसान नहीं था। और देखिए 7 विकेट अब तक ले चुके, जो इस वक्त एनर्जी है वो ज़्यादा है, टेल अप है। और जो अटैक है या जो रिदम है बॉलिंग में, उसकी आपको झलक नज़र आएगी कि जो कॉन्फिडेंस है। शाबाश शाबाश। जी, और जो पिछले स्पेल में हम हल्के फुल्के रिवर्स की बात कर रहे थे, आखिरी गेंद आप देखें खुरम शहजाद का, तो अंदर आया उमर के लिए, स्क्वायर लेग का फील्डर पीछे भेजा, एक बाउंसर किया जो उनकी ग्लव्स पर लगा। तो अब कोशिश करेंगे दोबारा बाउंसर करें, लेकिन असद शफीक को दाद देनी होगी। महदूद वसाइल के अंदर उन्होंने अच्छा इस्तेमाल किया, लेकिन आप ये भी कहिए कि किस्मत ने भी उनका साथ दिया। ये फवाद आलम का डिसमिसल था या जो साइम अयूब का डिसमिसल था, तो वो एक दिन में कम ही इस तरह के 2 डिसमिसल आपके हिस्से में आते हैं, लेकिन आज आए और इससे बलूचिस्तान की टीम आप देख सकते हैं कि शायद पहली इनिंग्स में बर्तरी भी हासिल कर ले, इस पोजीशन में आ गई है उनकी टीम। एग्जैक्टली 62 रन पीछे अभी भी। और अगर यहाँ पर जो शाम का वक्त है, चूँकि साए लंबे होते हैं, जो रोशनी है वो कम होती है, तो माइट भी अगर आप यहाँ पर 1-2 विकेट और निकालते हैं तो आखिरी विकेट लेना मुश्किल नहीं होगा, तो रैप अप कर सकें आज का दिन। दाद देनी होगी साउथ शकील की, ज़्यादा खुला नहीं खेले, उनके पास स्ट्रोक ज़्यादा हैं, लेकिन आज उन्होंने 1-2 शॉटों पर ही ज़्यादा रिलाई किया, बॉलर को मजबूर किया कि उनके एरिया में बॉल करें, उसी पर रन बनाए हैं उन्होंने। खूबसूरत ड्राइव, बहुत ही दिलकश प्लेयर हैं, स्टाइलिश। जी हाँ, बैलेंस बहुत अच्छा है। और जैसे आपने बात की कि जो इन विकेटों से जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो इस वक्त अप है, और मज़ीद थोड़ा सा हिम्मत दिखानी होगी यहाँ पर, थोड़ी पेस बढ़ा दें और कोशिश करें कि उमर को फायरिंग रेंज में रखें। कोशिश की उन्होंने कि बॉल को यॉक करें, लेकिन ऑफ टारगेट हुए, और इसके साथ ओवर का भी हुआ इख्तिताम 208 पे 7 सिंध 58 के बाद। तो ये है इस मैच का सूरत हाल अभी तक। 269 के जवाब में 208 पर 7 सिंध की जो स्टार स्टडेड बैटिंग लाइनअप थी, जो मच फैंसीड बैटिंग लाइनअप थी, वो आज लड़खड़ा गई। साउथ शकील 74 रन बनाकर खेल रहे हैं, फवाद आलम ने निस्फ सेंचुरी बनाई, उमैर, साइम, फराज, साउथ खान आज वो फेल हुए। आसिफ का भी नाम इस लिस्ट में इजाफा कीजिए, ऑलराउंडर हैं। जिस तरह जहाज ने जिक्र किया कि रोशनी काफ़ी जल्दी कम हो जाती है यहाँ आखिरी 15-20 मिनट के अंदर अंदर, तो शायद ज़्यादा वक्त का खेल बचा नहीं है। लेकिन हैरत होती है कि अगर देखें आज के दिन में 12 विकेटें गिरी, 5 बलूचिस्तान की, वहाँ तो अच्छी बॉलिंग को क्रेडिट ज़रूर जाएगा, सिंध के नए बॉल के बॉलर्स ने अच्छी बॉलिंग की, लेकिन ये 7 विकेटें जो बलूचिस्तान के लिए रिजल्ट आई हैं, एक बोनस से कम नहीं। बहुत बाहर ऑलरेडी आपकी टीम की टेल अप है, आप इस वक्त हावी हैं, ड्राइविंग सीट में हैं, उस प्रेशर को मेंटेन रखना होगा। कोई विकेट अब तक नहीं ले पाए, और इतना ज़्यादा जब पेस ना हो या इतनी ज़्यादा स्किल्स ना हो, तो विकेट टू विकेट इस वक्त बेहतर है कि आप कंटेन भी करें और बैटर को सोचने पे मजबूर रखें, इन टू माइंड्स। पहला जो स्पेल था इनका 6 ओवर्स का, यही लाइन उन्होंने अपनाई और रन स्कोरिंग को महदूद किया। बैट्समैन को ही आप थ्रो कर रहे हैं चैलेंज कि अगर आप में हिम्मत है तो आप खेलिए,
मैं तो यहीं पे बॉल बाहर ही कराऊंगा, यहीं पे मेरी फील्डिंग है। अगर आप यहाँ से चांस लेते हैं तो आप लीजिए, मुझे कोई ज़रूरत नहीं आपके एरिया में बॉल करने की। लिटरली यही मैसेज है हुसैन तलत का और असद शफीक का। और फैसल, इससे पहले हमने देखा सऊद में ये एबिलिटी है कि वो हल्का सा अपिश या फ्लैशी होते हैं बैकफुट पॉइंट या फिर पॉइंट की तरफ। ये देखें तीसरी गेंद पे ललचा गए सऊद शकील। एक बैटर सेट हो, एक दरमियानी पेस के बॉलर हो, वो बॉल कर रहे हो तो बैटर के लिए अपने आप को रोकना काफ़ी मुश्किल होता है। और ये देखिए काफ़ी दूर थी लेकिन फिर भी ललचाए। जी उन्होंने ये सोचा कि शायद इस बॉल पे ड्राइव करके कुछ रन्स हासिल किए जाएं, लेकिन जो बल्ला था सही टाइम भी नहीं हुआ और उस तरह से स्ट्रोक में आए नहीं, जो कि एक फुल ड्राइव होती है। खेलने गए, तसलसल इसको कहते हैं जो हुसैन तलत ने अब तक अपनाया इस ओवर में। और वैसे ही तसलसल कुछ सऊद शकील की तरफ से था। और ऑलरेडी हम बात कर चुके हैं कि असद शफीक काफ़ी लकी कैप्टन, उनकी जो लॉट है उसने मेहनत भी की, तसलसल भी रखा अपनी बॉलिंग में, और कहीं ना कहीं बहादुरी ने उनका जो स्किल्स थी उसकी बदौलत विकेट भी हासिल हुए। तो कर्टसी इसी वजह से अब विकेट कॉलम काफ़ी डिस्टर्ब है सिंध का। लगता है क्रॉस सीम बॉल पकड़ी है, शायद शॉर्ट पिच बॉल करें। नहीं, वही लेंथ वही लाइन, थोड़ी सी मिसफील्ड ने अलाउ किया सऊद को 1 रन के लिए। ज्यादा प्लान्स के अंदर ज्यादा सोच विचार की नहीं असद शफीक ने, सिंपल प्लान रखा। ये देखिए फिर भी दूर खेले और मिसफील्ड की वजह से रन बना। एक ही प्लान है कि रन्स की रफ्तार को रोक दिया जाए, बैट्समैनों को फ्रस्ट्रेट किया जाए और उसी में उनसे गलती करवाई जाए, और ये प्लान कामयाब हुआ आज के दिन। जी हाँ, फील्ड पोजीशंस को मुसलसल तब्दील करते रहे, अच्छा होमवर्क था। स्लिप का फील्डर ऑफ किया और इस वक्त स्क्वायर पे जो फील्डर है उसको लेकर रखा है। 4 फील्डर इस वक्त दायरे के करीब करीब। शायद यही वजह थी कि वो थोड़ा पिच खिलवाने जा रहे थे पैड से। इसके साथ डॉट बॉल हुआ। 59 ओवर गए, सिंध 209 पे 7। सिंध का डगआउट इस सोच विचार में ज़रूर मशगूल होगा कि क्या से क्या हो गया। कुछ ही देर में एक डोमिनेंट पोजीशन थी, 160 रन पर 3 खिलाड़ी आउट थे, 2 बैटर सेट थे, वहाँ से एक मिनी कोलैप्स हुआ और सिर्फ 44 रन के अंदर 4 खिलाड़ी आउट हो गए ऊपर नीचे। अच्छा खिलाड़ियों का इस्तेमाल किया। सऊद को 1 रन देने में गनीमत जान रही है इस वक्त बलोचिस्तान की टीम। जी हाँ, लेकिन सऊद को मैक्सिमम जो वक्त है वो गुजारना होगा खुद से क्रीज पे, क्योंकि उम्र पे इतना ज़्यादा माइट भी रिलाई ना करें कि अगर कोई अच्छा थोड़ा सा रेगुलर पेस से बढ़कर अगर बॉल करवाता है बॉलर बिटवीन द विकेट पैड के सामने आकर लगे बॉल, तो माइट भी उन्हें कामयाबी मिल पाए, क्योंकि शायद मैसेज उनको दे चुके उमर को कि आपने हवा में नहीं खेलना। जब तक उमर पे है तब तक तो शायद सऊद नॉर्मल खेलें, अगर उमर आउट होते हैं तो फिर सऊद स्ट्राइक खुद रिटेन करना चाहेंगे। और ये हवा में उमर ज्यादा सब्र कर नहीं सके, बड़ी शॉट खेलना चाहते थे। खुरम शहजाद ने उन्हें जतलाया कि मैं भी एक फास्ट बॉलर हूं, आप मुझसे बच के रहिए। और शायद छोड़ नहीं पाए, बॉल एकदम से उन पे आया और डग भी नहीं कर पाए, जिसकी वजह से जो बॉल की रफ्तार थी वो बेहतर थी। देखिए ऑन साइड पे खेलने गए थे लेकिन पेस इतनी नहीं थी, शायद लगा यही कि बल्ले के अच्छे पार्ट पे नहीं लगा। लगता है ऐसा है कि बॉल बल्ले से लग के ग्लव से लग के हेलमेट पे लगा, इसलिए कंकशन प्रोटोकॉल तो होगा, मजीद वक्त इसमें लगेगा। सिंध की टीम इस वक्त माइंड नहीं करेगी।
हालांकि जिस तरह एजाज ने कहा कि जो सुबह का सेशन होता है वो बैटर्स के लिए मुश्किल होता है, यहाँ जितना भी टाइम बचा आप इसको यूटिलाइज करें। ये सूरज अभी तो खासी आबोताब से चमक रहा है, लेकिन जब ये यहाँ से नीचे काफ़ी तेज़ी से जाता है और काफ़ी जल्दी लाइट फेड हो जाती है। अगले 20-25 मिनट में इसका खासा इम्कान है, लेकिन आज खेल में काफ़ी होल्ड अप्स हुई। ओवर रेट काफ़ी मुतासिर हुआ इससे आज। ओवर रेट की फिगर्स हैं जी एग्जैक्टली, सेशन टू सेशन ओवर्स जो हुए। और जो सबसे इम्पोर्टेंट है कि वो जो तसलसल कह लें आप बैटिंग का, कि माइट भी इस वजह से जो बॉलर का तसलसल है वो भी टूटता है। इवनिंग वॉक, एक्सरसाइज बेहतर है फैसल सेहत के लिए। जी आप मुझे कह रहे हैं? विकेटें मुसलसल गिरती रही हैं आज। चाय के वक्फे के बाद जो विकेटें गिरी, असद शफीक, साद खान खुश नहीं थे फैसले से, बॉल उन्हें लगा सामने, और ये अच्छा कैच हसीब का जो स्ट्रगल कर रहे थे, लेकिन इस शॉट के बारे में जितना कम कहिए उतना बेहतर। आसिफ जब ये रिप्ले देखेंगे तो ज़रूर अपने आप को कोसेंगे, मजीद किसी और को उन्हें कुछ कहने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये ऐसा लग रहा था जैसे बेसबॉल किसी अंदाज में खेला उन्होंने ये शॉट। उमर ने कोशिश की कि इस गेंद को स्टेडियम के बाहर जो डबल रोड है उसके परली तरफ जो पार्क है उसमें फेंका जाए, के इरादे जरूर थे, लेकिन जब मुड़ के देखा तो बॉल हसीब के पास ही। सभी ने एंजॉय किया इसको। जी हाँ, ये वो लम्हात हैं जो बड़े क्लोज होते हैं मार्जिन ऑफ एरर के बैटर के लिए, कि एज हो जाए, टॉप एज, या फिर कहीं बॉल हवा में खड़ा रहे। इसकी वजह से जो कप्तान है असद शफीक वो भी सरप्राइज हुए कि यहाँ पर इस वक्त किस्मत जो है वो सिंध के बैटर उमर के साथ रही, और इस दफ़ा वॉचफुल खेले, अच्छा दिफा किया, क्योंकि इससे पहले हमने देखा जो बैक ऑफ लाइन या शॉर्ट पे डिलीवरी थी उसमें उमर कंफर्टेबल नहीं थे और बॉल हवा में भी गया था। जहाँ जो यहाँ उन्होंने निफ्ट सेंचुरी बनाई थी 2 राउंड पहले, तो उसमें काफ़ी बड़े बड़े छक्के उन्होंने मारे थे शॉर्ट पिच बॉलिंग पे, लेकिन टेल एंडर हैं जाहिर है, तो उन्हें इनिंग्स बिल्ड करनी, शॉट सिलेक्शन का उस तरह आइडिया नहीं है, पिक एंड चूज नहीं कर सकते, एक ही गियर में खेल सकते हैं लगता है, या तो ब्लॉक और या फिर स्मैश। दरमियान में कोई गेम होती तो ये ज़्यादा ऊपर के नंबरों पे बैटिंग करते। इस मरतबा एक रन मौजूद था, लेकिन सऊद शकील ने वो रन हासिल नहीं किया। 210 पे 7। एक गेंद अभी भी बाकी है। सऊद शकील ओवर के आगाज में खुद खेलना चाहते हैं। जी, और बेहतर हिकमत अमली होगी कि वो ज़्यादा टाइम खुद स्पेंड करें और फेस करें बॉलर्स को। अच्छा दिफा कर गए, बॉल काफ़ी करीब गिरा, 60 ओवर गए सिंध 210 पे 7। शाम के साए फैलते जा रहे हैं इस खूबसूरत आउटफील्ड पर। और सिंध की बैटिंग लाइनअप तवक्को कर रही थी कि शायद वो आज लीड लेंगे और डोमिनेट करेंगे, यकीनन खुर्रम मंजूर की कमी उन्हें महसूस हुई। फैसल हमीद, प्रोडक्शन का क्रू जो है वो भी इस वक्त इस इंतज़ार में है कि खेल का मुकर्रर वक्त ख़त्म हो तो अपनी जो इख्तितामी लम्हात के फ़राइज़ हैं उनसे सुबुकदोश हों। लगता है फिर असद शफीक का मन ललचा रहा है बॉलिंग करने के लिए।
जी हाँ, बाज़ औक़ात जब बॉलिंग कप्तान जो है वो ऊपर नीचे विकेटें उन्हें मिल रही हों, तो जो तब्दीलियाँ हैं वो करना चाहते हैं कि माइट बी कि कुछ तब्दीली हो तो वक्त उनकी फेवर में चला जाए। बड़ा अजीब सा स्टांस था यहाँ पर सऊद का, फवाद के करीब करीब लग रहा था जिस तरह से फवाद आलम खड़े होते हैं। और यहाँ पे अंपायर बात कर रहे हैं क्योंकि सऊद डेंजर एरिया पे आ रहे थे। बॉलर्स को तो डेंजर एरिया पे आने से अंपायर रोकते हैं, लेकिन आजकल ये ट्रेंड भी हुआ है कि आप बैटर्स को नहीं आने देते। ये देखिए, आप गलतफहमी में ना रहिए, ये फवाद आलम नहीं थे। जो मुसलसल ऑफ स्टंप से बाहर बॉल कर रहे हैं हुसैन तलत, थोड़ा सा अपनी फ्रस्ट्रेशन का इजहार किया सऊद शकील ने। उस पे हुसैन तलत ने उन्हें कहा कि अगर आप खेलना चाहें तो ऑन साइड पे पूरी फील्ड खाली है, खेलिए, लेकिन बॉल मैं आपको ऑफ स्टंप से बाहर ही करूंगा। और सऊद शकील ने भी तोड़ यही निकाला है कि ये हुसैन तलत को बिल्कुल एक इर्रेगुलर बॉलर की तरह खेलें। वेल, क्रिकेट में ऐसा होता है बाज़ औक़ात के जब आप रेगुलेशन से हट जाएं, और ये बड़े मेमोरेबल लम्हात होते हैं कि आप अपने जो नॉर्मल इंटेंसिटी है या फिर जो कैलिबर है, स्किल्स हैं, उनकर हट कर डिस्प्ले करें। इस बार हल्का सा वॉक ज़रूर किया था ऑफ स्टंप की तरफ सऊद ने, ये स्ट्रोक खेलते हुए। ये थोड़ी सी यहाँ पे जो है वो कशमकश है दोनों बॉलर्स और बैटर्स के दरमियान। यहाँ कोई आसानी उस तरह नहीं है कि जब सऊद खेल रहे हैं तो हुसैन तलत उन्हें बाहर बॉल कर रहे हैं, और सऊद ने जब 2 गेंदें खेली तो उन्होंने भी वापस हुसैन तलत पे प्रेशर डाला कि मैं आपको बिल्कुल भी एक आम मामूली से बॉलर की तरह खेल सकता हूं बगैर पैर हिलाए, स्टांस चेंज करके। तो एक दूसरे को गुस्सा दिलाने की कोशिश कर रहे हैं कि कौन अपने प्लान्स में से चूक जाए। यहां रूम मिला और लेट खेले, एक ही रन मिलेगा। जी, और काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा यहाँ पर हुसैन गो के ऑफ स्टंप से काफ़ी बाहर बॉल को पिच कर रहे हैं उमर सऊद को, लेकिन उमर के लिए उनकी हिकमत अमली क्या होती है? कोई एक्स्ट्रा फील्डर्स करीब आते हैं, नहीं आते? ये लगता है ये एक रेगुलेशंस के साथ ही जा रहे हैं। क्या वेट करेंगे या फ्लैशी होंगे? अच्छा, बहुत अच्छा, कप्तान की जो बात है उसको माना उन्होंने, बॉल को नीचे रखा, 61 ओवर गए, सिंध 211 पे 7। कल जब मैच ख़त्म किया गया था यहाँ पर तो 5:03 का वक्त था। अभी भी जो स्केड्यूल क्लोज है वो 5 बजे का, उसमें अभी 8 मिनट ही बचे, तो यह 3 ओवर का खेल मुमकिन हो सकेगा ऐसा लगता है। खेल की रफ्तार क्या होगी इन 3 ओवर्स में देखना होगा। शॉर्ट पिच बॉल थी, सऊद थोड़ा सा क्रैम्प हो गए स्पेस के लिए, और बॉल लगा है लगता है उन्हें। ये लगता है थाई से थोड़ा सा ऊपर था ये बॉल, हाथ पे लगा इनफैक्ट, और तकलीफ ज़रूर है उन्हें इस बॉल को खेलते हुए। लेकिन जैसे आपने बात की कि बाकी मानदा ओवर 2 या माइट भी 3 ओवर, उसमें जो पेशेंस है वो यकीनी तौर पर टेस्ट होगा दोनों बैटर्स का। जी बिल्कुल, सऊद शकील जब से इन्हें इंजरी हुई है, आपको याद होगा, तेज रन लेते हुए, इनफैक्ट एक स्वीप शॉट खेलते हुए जो उन्हें इंजरी हुई थी,
उसके बाद से उनकी इनिंग्स का फ्लो टूटा, फिर ऊपर नीचे विकेटें गिरी। लगता है कि अभी भी सर्वाइवल मोड में हैं, खेल के इख्तिताम तक खेलना चाहते हैं ताकि कुछ आराम करें, रात को मसाज लें और उसके बाद सुबह जब आएं तो ज़्यादा फुल फिटनेस में हो। 3 फील्डर ऑन साइड पर हैं जिसमें से 2 बाउंड्री पर हैं। फाइन लेग और स्क्वायर लेग बाउंड्री लाइन से कम 15 कदम अंदर हैं। यही बेहतर है हिकमत अमली इस वक्त कि आप बल्ले को जितना ज़्यादा सीधा रख सकें, क्योंकि कुछ देर पहले हमने देखा कि ऑन साइड पे बल्ले को क्रॉस किया था, लेकिन ये बावर रखा कि बॉल नीचे रहे। ताज वली ये लेफ्ट स्क्रीन, और मुझे याद है कि इनके 5 बॉलों पे 5 लगातार विकेट थे इस फर्स्ट क्लास क्रिकेट में। खूबसूरत ड्राइव है, लेकिन ये फील्डर जो पीछे रखा हुआ है ये इसी शॉट के लिए रखा है। और यहाँ क्योंकि शॉट जो पूरा शॉट है वहीं इतनी दूर जाता है, इसलिए 1 रन का भी चांस नहीं होता। जो इससे हल्का शॉट होता है उसके लिए करीब में फील्डर मौजूद है। ये असद शफीक ने कैसा जो है दाव खेला है, जिसकी वजह से सऊद की जो रन स्कोरिंग है उन्होंने काफ़ी हद तक महदूद कर दिया ऑफ साइड पे। जी हाँ, सोच बेहतर है असद शफीक की, लेकिन फिलहाल रिप्लाई भी बेहतर है सऊद शकील की जानिब से कि वो ज़्यादा से ज़्यादा वक्त खुद गुजारना पसंद कर रहे हैं। एक बॉल अभी बाकी है इस ओवर की और उसको सरवाइव करना होगा यहाँ उमर को। और फिलहाल 17 बॉलें वो खेल चुके हैं, लगभग 3 ओवर के करीब तो टाइम उन्होंने स्पेंड किया। और मेरे ख्याल से कि जो इस वक्त पेस है खुरम का या विकेट का बिहेवियर, इतना प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए उमर को ये बॉल फेस करने में। लगता है असद शफीक जा रहे हैं लेग गली में, वही शॉर्ट पिच का प्लॉय इस्तेमाल करेंगे। स्क्वायर लेग का फील्डर भी अगर अंपायर वहाँ होते तो उससे कोई 10-1 कदम पीछे थे। मिड विकेट भी है। अच्छा तगड़ा बाउंसर आएगा शायद। एक ही बॉल है, एक ही मौका है खुरम के पास। जोरदार अपील हुई लेकिन नॉट आउट का इशारा और ओवर का इख्तिताम। 62 ओवर गए 212 पर 7। जब बॉल बल्ले के करीब से गुजरा तो शायद कहीं बल्ला जो है वो माइट भी कहीं बूट पे या ज़मीन पे या पैड के करीब लगा, जिसका माइट भी नॉइस था कि विकेट कीपर थोड़ा अपील करने गए। 62 ओवर गए 212 पे 7। जी बिल्कुल ऐसा ही हुआ, बल्ला ज़मीन को टकराया। इमरान जावेद की जजमेंट आज एक मरतबा फिर बहुत अच्छी रही तमाम दिन। पहले भी जब इन्होंने यहाँ मैच किया था 3रे राउंड का, बहुत ही अच्छी एम्पायरिंग की थी। अब क्योंकि शाम का वक्त हुआ चाहता है तो स्पिनर को बॉल दे दी असद शफीक ने। शायद दूसरे एंड से वो खुद बॉलिंग करने आए। कोशिश करेंगे जितना इस मैच को ड्रैग कर सकें, क्योंकि बैटर्स जो हैं इस वक्त इस मूड में कि जल्दी से ये मैच ख़त्म हो और वो वापस जाएं। उनके सब्र का मज़ीद इम्तहान लेना चाहते हैं असद शफीक। फिर 1 रन रिफ्यूज़ किया। और काशिफ भट्टी जो फील्डिंग है वो देखिए बिल्कुल बाउंड्री पे पेट्रोल कर रही है। ऑन साइड पे 3 फील्डर, 2 सर्कल के अंदर ऑन साइड पे। बहुत आसान वक्त है इस वक्त बैटिंग के लिए। और काशिफ नॉर्मली हमने पहले भी देखा इनके जो 9 ओवर थे इससे पहले के, ज़्यादातर बॉल उन्होंने फ्लाइट किया, छोड़ा हवा में, और इतना ज़्यादा स्पिन नहीं है उनके लिए। ये एक तरह से अगर आप देखा जाए दोनों कप्तानों का जो मैचअप है, सऊद शकील सिंध और असद शफीक बलोचिस्तान के, ज़ाहिर है सिंध के लिए काफ़ी क्रिकेट खेले हैं। असद शफीक तो जो एक मास्टर और अप्रेंटिस का इनका किरदार रहा है माजी में, तो असद शफीक ने आज जतलाया है
सऊद शकील को कि मैं अभी भी उस्ताद हूँ और आप शागिर्द हैं। ज़्यादा वसाइल ना होने के बावजूद जिस तरह उन्होंने सिंध की इनिंग्स को स्ट्रैंगल किया, तो काफ़ी खुश होंगे असद शफीक अपनी आज की कारकर्दगी से। एग्जैक्टली, मास्टर क्लास और तजर्बे का हकीकत में कोई नैमुल बदल नहीं। लेकिन दूसरी जानिब सऊद भी अपना तजर्बा अच्छे अंदाज में इस्तेमाल कर रहे हैं। गो के ये वो वक्त होता है किसी भी बैटर के लिए जब वो 100 के करीब हो तो उसकी कोशिश होती है कि वॉचफुली जल्द जो है वो उन 3 फिगर्स को कंप्लीट कर पाए। लेकिन यहाँ पर वक्त का तकाजा है कि वो क्रीज पर रहें, इस टाइम को स्पेंड करें जो लगभग अगले 5 से 6 मिनट में माइट भी स्टंप्स की कॉल हो। शॉर्ट कवर कैचिंग, 2 गेंदें बची हैं उमर के पास और 2 ही मौके होंगे काशिफ भट्टी के पास। आर्मर किया, कोशिश किया कि पैडों पे मारें बॉल और एलबीडब्ल्यू लें, लेकिन उमर तवील कामद हैं, नहीं बल्ले को पैडों से आगे ले आए। इस मर्तबा स्लोअर बॉल थी, फ्लाइट में ऑलमोस्ट डिफीट कर गए थे। ये देखिए पेस का अच्छी वेरिएशन है, ऑलमोस्ट जल्दी खेल गए थे उमर। अच्छी बॉलिंग काशिफ भट्टी की, 63 के बाद 213 पे 7। सिंध अभी भी 56 रन पीछे है, सिर्फ 3 विकेटें बची हैं। ऐसा अंदाज़ा नहीं था जब बलोचिस्तान की टीम 269 पर आउट हुई सिंध की बैटिंग लाइनअप को देखते हुए, और ना ही ये अंदाज़ा था कि असद शफीक जो हैं सबसे कामयाब बॉलर होंगे। 13 रन देकर 2 खिलाड़ी आउट किए। ये सूरज अब तो स्कोरबोर्ड से भी नीचे चला गया, किसी भी वक्त ये स्टैंड के नीचे चला जाएगा और खेल के इख्तिताम का वक्त ज़्यादा दूर नहीं है। असद शफीक बॉलिंग क्रीज पर आ गए हैं, एक आखिरी कोशिश करेंगे सऊद को भी आउट करने की। फैसल, मुझे लगता है कि ये मे बी के आखिरी ओवर हो आज के इस दिन के खेल का, इसीलिए सऊद ने पहली गेंद पर सिंगल लिया। उनका ख्याल है कि अगर यहाँ बुमर आउट भी हो जाते हैं तो खेल ख़त्म हो जाएगा, तो उनकी विकेट महफूज रहेगी आज शाम तक। दूसरे एंड पे उमर को भी वॉचफुल होना पड़ेगा। एक बॉल जो उन्होंने खेला था अपना फ्रंट फुट प्लांट करके, बल्ला लकी रहे कि वहां पर सामने आया और ये बेहतर है। यहाँ फील्ड बुला सकते हैं करीब असद शफीक, क्योंकि उन्होंने शॉट मारनी नहीं, और अगर वो शॉट खेलते हैं तब भी आउट होने का खतरा है। 3-4 गेंदें हैं, ज़्यादा कोई रनों का नुकसान भी नहीं हो सकता। मिड विकेट के फील्डर को थोड़ा सा सीधा किया उन्होंने। लालच पूरी देंगे असद शफीक, जो फील्ड है कोई हर्ज भी नहीं है इसमें। एग्जैक्टली, तमाम ऑप्शंस इस वक्त खुले हैं असद शफीक के लिए, और यहाँ पर स्पिन भी नहीं है जो कि नॉर्मल बॉल सीधा रह रहा है। और हर बॉल पे इस वक्त सऊद जो है वो एडवाइस करते जा रहे हैं उमर को। ये भी ललचाने की कोशिश की उमर को, लेकिन जो टेल एंडर है वो बॉल पसंद नहीं करते जो कि उनकी आईलाइन से ऊपर हो लेकिन सीधा हो। मायर का बॉल आसानी से छोड़ दिया, फुल टॉस को भी डेड बल्ले से रोक दिया। असद शफीक कोशिश कर रहे हैं ओवर एक और करने की, लेकिन मुझे लगता है कि अंपायर शायद रीडिंग नोट कर रहे हैं। फार एंड पे इमरान जावेद, कल तकरीबन यही वक्त था जब खेल इख्तिताम पजीर हुआ था। तो फैसल, दोनों अंपायर्स अपनी अपनी पोजीशंस पे जा चुके हैं
क्योंकि सूरज जो है वो स्टैंड्स के पीछे बिल्कुल कुछ ही देर में जाने वाला है। लगता यही था कि पिछले ओवर में ये काफ़ी हद तक अपनी रोशनी खो देगा, लेकिन जल्दी ओवर ख़त्म हुआ। वेल यहाँ पर भी जो फील्डर्स हैं अब भी पीछे हैं सऊद शकील के लिए भी, और इसी इंतज़ार में कि डे ऑफ हो। जिस तरह का दिन गुजरा है ज़्यादा बैद नहीं होगा अगर कोई और अजीबो गरीब डिसमिसल हमें देखने को मिले। जिस तरह के माइंडसेट से सऊद शकील बैटिंग कर रहे हैं, हमने देखा है कि काफ़ी दफ़ा जब बैटर्स इस माइंडसेट में हों तो क्लोज ऑफ प्ले के करीब विकेट गिरती है। मशहूर ज़माना बासित अली का डिसमिसल आपको याद होगा शेन वॉन के खिलाफ। तकरीबन आधा पौना घंटा वो मुसलसल पैडिंग करते रहे शेन वॉन को। बिल्कुल मैच की आखिरी गेंद पर शेन वॉन उन्हें चकमा देने में कामयाब हो गए थे। जिस तरह आज लंच से पहले साइम आउट हुए और टी से पहले फवाद आलम, तो जिगर थाम के बैठिए, कुछ भी हो सकता है। जी हाँ, लंबे स्ट्राइड, और अब देखना ये है कि कितनी ज़्यादा टांग बाहर निकालेंगे, बल्ला करीब रखेंगे या फिर बैकफुट पे ही खड़े खड़े खेलेंगे। शॉर्ट एक्स्ट्रा ऑन साइड पे शॉर्ट लेग और उसके साथ साथ स्लिप। इंटरेस्टिंग हो सकता है, लेकिन अच्छा दिफा। आखिरी बॉल इनको इस तरह तेज करना चाहिए था, थोड़ा सा ललचाएं पहले उमर को फ्लाइटेड डिलीवरी के साथ। 3 बॉलें थी, 1 बॉल जाया गई। अब गली में भी फील्डर आ गए हैं। थोड़ा सा आई लाइन से ऊपर बॉल फेंके तो देखिए उमर का क्या रिएक्शन होता है। बहरी किनारा जरूर लगा, लेकिन अब देखिए बिल्कुल घेरा तंग कर दिया उमर के सामने। उमर गुस्से में आकर कोई शॉट खेलेंगे तेज, देखते हैं। क्योंकि जब लोअर ऑर्डर बैटर हैं उनका माइंड जो है वो डिफरेंट तरीके से सोचता है टॉप ऑर्डर बैटर्स की निस्बत। लेकिन उमर का दिफा मजबूत साबित हुआ। अब शायद अंपायर करीब आ जाएं। 215 पर 7। साजिद आफरीदी सब देख रहे हैं कि माइट भी ऑफर किया जाए या कंटिन्यू किया जाए। गुफ्तो शनीद, आर यू सेटिस्फाइड? Here we go. Stumps. दूसरे दिन के खेल के खत्म करने का ऐलान किया साजिद आफरीदी ने। उमर सरवाइव कर गए अपने कप्तान के साथ। कोशिश अच्छी की बलोचिस्तान ने, अच्छा मुकाबला किया। ओवर रेट आज के दिन में काफी मायूस कुन रहा। पहले सेशन में 10.4, फिर 12.5 और 12.3। अंपायर्स को इस चीज़ पर नज़र रखनी होगी। काफ़ी ज़्यादा गैर ज़रूरी डिलेज भी हुई, कुछ इंजरी की वजह से भी डिलेज हुई, लेकिन ये बिल्कुल भी काबिल कबूल नहीं है कि इतने ओवर ज़ाया हों पूरे दिन के खेल में। सऊद शकील अपनी टीम की बारी को संभाले हुए हैं। 81 रन पर नॉट आउट गए हैं आज की शाम, और उमर ने 1 रन बनाया है। लेकिन ये गेम बिल्कुल वाइड ओपन है दोनों टीमों के लिए। अच्छा कमबैक किया बलोचिस्तान ने अपनी बॉलिंग के दौरान। जा, और दूसरी जानिब आप देखेंगे कि 2 50s, 81 सऊद शकील जो कि नॉट आउट है, और 51 फवाद आलम। और दाद देना होगी आपको यहाँ पर मोहम्मद उमर को, जिन्होंने 28 बॉलें खेली 1 रन के एवज, और 215 पे 7 इख्तिताम हुआ यहाँ पर सिंध की टीम का। 2 विकेटें खुर्रम शहजाद की और 2 ही असद शफीक की। सरप्राइज पैकेज आज साबित हुए। आकिफ ने पहली विकेट हासिल की, नजीबुल्लाह ने भी एक बैट्समैन को चलता किया, और साइम अयूब रन आउट हुए। 65 ओवर्स ही मुमकिन हो सके सिंध की इनिंग्स में। पहले घंटे में आज का खेल इनकी बारी आ गई थी, कम ओवर्स हुए आज। तीसरे सेशन का खेल
साद खान की विकेट गिरी, खुश नहीं थे अंपायर के फैसले से। सरफराज और सऊद की पार्टनरशिप, सऊद का स्ट्रोक प्ले बहुत ही लाजवाब था और ये लाजवाब कैच था हसीबुल्लाह का। सरफराज को चलता किया। आसिफ महमूद का जो डिसमिसल है उन्हें आज की रात शायद चैन से सोने नहीं दे। 269 पर मुकाबला 215 और सिंध अभी भी 54 रन पीछे। जी हाँ, 54 रन पीछे है और इसी के साथ आज के दिन का होता है इख्तिताम। कल तीसरा दिन होगा। सुबह 10 बजे आपकी खिदमत में एक बार फिर हाजिर होंगे। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।